In official panel, Sheikh Malali is the squad leg umpire and Shakir Upala is the main umpire. Now Dejabu Kashargod and KFC Kumbala, welcome back Aliaka from Achan Upala. So again here we are waiting for the match. The first innings for the second match of SACLA Trophy 2022. So Manoj is a striker. And the non-striker Kiran. So this time the lovely one for Biran is a bowler. And first of all, that's a dot ball for the SACLA Trophy 2022. One of the most historical tournament. This time, lovely one, wonderful shot. No field is there. That's the deep mid wicket side. And finally, that is the boundary. The brilliant shot for the deep mid wicket. And first of all, this started to his batting performance. That's a boundary runs. And scoreboard directly jumping to 4 on the board and started to their count. And 4 is the total for 2 balls. To after the completion of 0.2 balls, now 10 spell of the over. Look at that ball. That's the cross for the off stamp and white calling for the umpire. And first mistakes of that bowler. So after the completion of 0.2 balls. So this time the lovely one, very good shot. And so the 6 is the total. So this time lovely one and very good shot once again. So after the completion of first 4 balls of the first over, the second match of SACLA Trophy 2022 day 1 at Mananguri Mini Stadium. And the match is between KFC Kumbala and Tejabu Kashargod. The finest very good match in above 40. Oh, lovely one, very good gap shot and just for single runs. So after the completion of the first 5 balls of the first over, and scoreboard showing on just for 8 runs. 8 is the total. 8 is the total after the completion of 5 balls. The final delivery of the over. Look at that ball. Oh, that's a lollipop delivery. Ball behind the keeper. That's directly in that position for the Clans. And over number 1 completed. First over completed here. And 9 is the total and lots of 0 wickets. A really good fun for the first match. Second match for SACLA Trophy 2022. BSC BEKUR and Baba Brothers presenting one of the historical cricket festival of UNDERARM cricket in Managuri Stadium. The new bowler, I think, from KFC Kumbala. Kumar is a bowler. The first delivery of the second over. Wait and see. The batsman waiting for the ball. A very good left-hand batsman. The Kiran is a batsman. Oh, look at that ball. And little mistakes. The ball in the leg stump area and white calling for the umpire. So after the completion of one over. Oh, this is a lovely one. Very good shot. The little mistakes for Biran. The top trio.
The ball in that position for the deep backward. And after the completion of a first ball of the second over, and scoreboard showing on directly 12 on the board. 12 is the total. Oh, this time lovely one, very good shot. The ball at the high for that. Mistake from that fielder. And that is a boundary. Rajendra Hasangari dropped the ball. That's why it crossed the line for the boundary and 4 runs added to the scoreboard. And after the completion of first 2 balls of the second over, the scoreboard showing on just for 16 runs. 16 is the total. Look at that, very good shot there. The ball in the long continuation. And after the completion of first 2 balls, 16 is the total. Now 10th spell of the over. The bowler Kumar and Kiran is a batsman. Kiran and the Manoj is a partnership from Dejavu Kasaragod. So after the completion of only 2 balls. Look at that kind of the reverse, but not connected with bat and ball. And that's a dot ball calling for the umpire. Sheikh Malali is an official panel for the main umpire. And Saki Rupala is a leg umpire. Look at that ball, look at that ball. The mistakes of that batsman Kiran. The ball touched his right leg and no any scoreboard. 2 balls, back-to-back dot balls. Ball in the slip side for the silly side in the middle of deep mid wicket. Oh, look at that, very good shot and very good gap shot there. And wonderful shot like in the long off religion. They completed 2 runs. The good running between the wicket. The wonderful running between the wicket. And after the completion of first 5 balls and scoreboard directly jumping to 18 on the board. And after the completion of 1.5 balls and loss of 0 wickets. Look at that shot. The ball in the deep square leg relation and single runs added to the scoreboard. And over number over number 2 completed in the first innings. And 19 is a total. 9.5 is the current run rate and lots of 0 wickets. In previous match also in the first innings. And same score in 19 runs for MCC Uppala in previous match. And 9.5 current run rate in previous match also, and this match also same run rate 9.5 because 19 is the total after the completion of 2 overs. This is the second match for SACLA Trophy 2022. Now Moitu is a bowler. Look at that shot. They tried for the reverse sweep and a single runs added to the scoreboard. Now Kiran is a non-striker and Manoj is a striker batsman. One of right-hand batsman and another one is a left-hand batsman. Now Moitu to Manoj. Look at that in the fielding position. Long on, long off, deep square leg and deep mid wicket. And a deep cover, a deep extra cover. So look at that. A wonderful running between the wicket direction and in the position, and finally the appeal and run out. The first wicket from Dejavu Kasaragod. Manoj walking back to the pavilion. The brilliant wicket of the innings number 1 for the second match of SACLA Trophy 2022. ഈ മത്സരത്തിന് ശേഷം അടുത്ത മത്സരം കളിക്കേണ്ട ടീമുകൾ ദയവ് ചെയ്ത് ഒരുങ്ങി നിൽക്കേണ്ടതാണെന്ന് അറിയിക്കുന്നു. സെനപ്പിന് വേണ്ടി ദയവ് ചെയ്ത് അടുത്ത ടീമിന്റെ മത്സരാർത്ഥികൾ
Danu is a batsman. The very good right-hand batsman, Mr. Danu from Dejavu. He is a one-done player. King Cobra Kumbla and Ashok Blasters Kasaragod for the next match. I'm requesting both team players, please come here for the sign-up. Oh, the Sam lovely one, wonderful performance and right calling for the umpire. Saki, welcome back, Mr. Upendra Kasaragod. After the completion of first two balls, now they're waiting for the ball. The very good right-hand batsman from Danu. Oh, look at that ball! Look at that ball! Absolutely brilliant! The outstanding performance. The wicket again. The absolutely brilliant bowling piece of the new bowler, Mr. Moidu. The magical bowling, Mr. Moidu. So after the completion of first three balls for the second match for the first innings, the match is between KFC Kumbala and Dejavu Kasaragod. Now already 3 balls completed and 3 balls remaining for the tied over. അടുത്ത മത്സരത്തിന്റെ സൈഡപ്പിന് വേണ്ടി ഇരു ടീമുകളും ദയവ് ചെയ്ത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് കമന്ററി ബോക്സിന്റെ തൊട്ടടുത്തേക്ക് എത്തിച്ചേരണമെന്ന് അറിയിക്കുന്നു. ഒരു കാരണവശാലും അനാവശ്യമായ സമയം ഉപയോഗപ്പെടുത്തരുത്. മത്സരം ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പായി തന്നെ ഗ്രൗണ്ടിന്റെ പുറത്തായി റൗണ്ട് അപ്പ് നടത്തിയതിന് ശേഷം ഈ മത്സരം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ഇരു ടീമുകളും മൈതാനത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങേണ്ടതാണെന്ന് വളരെ സ്നേഹത്തോടെ അറിയിക്കുന്നു. കാരണം സമയം വളരെ കുറവുള്ളത് കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ സഹകരണം പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ്. Oh, this time Laliman! That's a brilliant shot! The ball in the half with a magnificent maximum. Absolutely brilliant performance. A very good performance. Omar is a batsman. Omar is hard hitting here from Dejavu Kasaragod. It might his ball. And after the completion of first 4 balls of the tied over, look at that shot for Omar again. Once again, there's a brilliant shot in high, and again the second time, once again that for the boundary. And first of all 6, and after that boundary. First of all in the long off, in deep long on relation. After that is the long off relation. 1 of maximum, and another one is a boundary. And 2 ball 10 runs. Wonderful performance for that batsman, Mr. Umar. So after the completion of 5 balls from Moidu total gave 12 runs and got 1 wicket. Some lovely one, very good bowling pace, and over number 3 completed for Moidu. And score showing on this for 32 is a total in 3 overs. 32 is a total in 3 overs, like a 10.75 is a current run rate, and lots of 3 wickets. That's it in the first innings. Ashok Blasters അതുപോലെ തന്നെ കിങ് കോബ്ര കുംബ്ലാം ഇരു ടീമിന്റെ പ്ലെയർമാർ എത്രയും പെട്ടെന്ന് സൈൻ അപ്പ് നടത്തേണ്ടതാണെന്ന് അറിയിക്കുന്നു. മത്സരത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ ഇന്നിംഗ്സിലെ രണ്ടാമത്തെ ഓവർ അവസാനിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ സൈൻ അപ്പ് ബുക്ക് അടക്കുന്നതാണ്. അതിനുശേഷം ഒരു കാരണവശാലും ഇവിടെ സൈൻ അപ്പിന് അനുമതി ഉണ്ടാകുന്നതല്ല. ദയവ് ചെയ്ത് പ്രിയപ്പെട്ട മത്സരാർത്ഥികൾ സഹകരിക്കണമെന്ന് വളരെ സ്നേഹത്തോടെ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. Oh, brilliant shot for the river sheep. The good piece of that ball, good piece of that batsman for the leg gully for the river sheep in the backward shot leg relation, and boundary calling for the umpire, and 4 runs added to the scoreboard. Look at that performance. Absolutely brilliant for that batsman. The Kuran is the left-hand batsman, the opener from Dejavu Kasaragod, and Ravi is a bowler. You try to take for the one for river sheep, no fielders there, and once again they completed 2 runs. The wonderful running between the wicket, the 2 runs completed. So after the completion of the first 2 balls of the 4th over,
Ravi is a bowler. And Kiran is a batsman once again. Kiran and Umar is a partnership. It is still progressing here. The last 4 balls remaining. This time a very good one for the deep strike-like relation and a single run added to the scoreboard. Wonderful running between the wicket and slowly running between the wicket. And after the completion of first 3 balls of the 4th over, now the batsman Umar in previous over, he got a brilliant maximum and boundary. The high-hitting, that's Umar. Look at that shot. Look at that shot. The ball in the very good shot. The brilliant performance. That's a gap shot. Gap shot like Virendra Sehwag. That kind of the batsman, Mr. Umar. And 4 runs added to the scoreboard. And after the completion of first 4 balls in this over, Ravi gave it 2 boundaries. He gave it a total 11 runs in 4 balls. That's the biggest mistakes of Ravi, because he gave it 2 boundaries and 1 double and 1 single. That's a big loss of the team. And after the completion of first 4 balls and scoreboard directly jumping to 43 on the board. 43 is the total. Oh, once again, Umar! That is high! The brilliant shot again and again in deep white arm contribution. The brilliant performance for Umar. 6 runs added to the scoreboard. Absolutely brilliant performance. That is a magnificent shot. This is the 2nd maximum in individual of Mr. Umar and 1 boundary also. Look at that ball. Sorry, 2 boundaries and 2 maximums Umar. Umar is hard hitting now. The very good batsman, and over number 4 completed. 4 overs exactly completed here, and scoreboard directly jumping to 50 on the board. Half century is the total. Half century of the Jabu Kasaragod. So I requesting Mr. Abdul Rahman Bekur for the next commentary box, and thank you so much. थैंक यू मिस्टर नासिर कन्याना। अब तक आंखों की हाल सुना रहे थे, आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। और इस प्रतियोगिता की दूसरी मैच आ रही है, वो 40 अंडरआर्म क्रिकेट प्रतियोगिता बीएससी बेकुर और बाबा ब्रदर्स ने जो जोड़कर पेश किया गया इस प्रतियोगिता। और बॉलर बिरान यानी कि कप्तान है जो केएफसी कुंबला के बहुत खूबसूरत लेफ्ट आर्म बॉलर, बहुत उल्टा जो फुल टॉस कहते हैं। और इसी के साथ जो हार्ड हिटर ऑफ देजावा की हार्ड हिटर आउट हो चुके हैं, और इसी के साथ तीसरी विकेट पतन हो चुके हैं। किंग कोब्रा ടീമിന്റെ ആൾക്കാർ जो സൈനപ്പ് ചെയ്യാൻ അവശേഷിക്കുന്നവർ എത്രയും പെട്ടെന്ന് വന്ന് സൈനപ്പ് ചെയ്യുക। കിങ് കോബ്രാസിന്റെ 4ഓളം ആൾക്കാർ സൈനപ്പ് ചെയ്യാൻ ബാക്കിയുണ്ട്, എത്രയും പെട്ടെന്ന് വന്ന് സൈനപ്പ് ചെയ്യണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു। ഇവിടെ മത്സരം പുരോഗമിക്കുകയാണ്। അപ്പോൾ 40 അണ്ടർആർം ക്രിക്കറ്റ് ടൂർണമെന്റിന്റെ ആദ്യ ദിവസം 2ാമത്തെ മത്സരം കെഎഫ്സി കുമ്പള അതേപോലെ തേജാവ കാസർഗോഡ് തമ്മിലുള്ള മത്സരമാണ്। വാശിയേറിയ മത്സരത്തിന്റെ ആദ്യ ഇന്നിംഗ്സ് പുരോഗമിക്കുമ്പോൾ ആദ്യ ഇന്നിംഗ്സിൽ 50 റൺസ് പൂർത്തീകരിച്ചിരിക്കുന്നു। 3 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ മികച്ച വിക്കറ്റ് കീപ്പിംഗ് പ്രകടനത്തോടുകൂടി വൈഡാണെന്ന് തീരുമാനിക്കപ്പെടുന്നു അമ്പയർ ഷക്കീർ। അഞ്ചാമത്തെ ഓവറിന്റെ മറ്റൊരു പന്തിൽ ആരംഭ ബാറ്റ്സ്മാൻ അതായത് തുടക്കക്കാരനായ ഓപ്പണർ ഔട്ടായി തിരിച്ചു പോകുന്നു കിരൺ। ക്യാപ്റ്റൻ ദേജാബയുടെ ക്യാപ്റ്റൻ മികച്ച ഇന്നിംഗ്സ് കാഴ്ചവെച്ചുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം മടങ്ങിയതെങ്കിൽ ഇവിടെ അദ്ദേഹം നേടിയത് 2 ബൗണ്ടറികൾ, മികച്ച 3 ഡബിൾസ്, 4ഓളം സിംഗിളുകൾ, മികച്ച ഇന്നിംഗ്സ് കാഴ്ചവെച്ചുകൊണ്ട് കിരൺ മടങ്ങുമ്പോൾ രാജേഷ് കഴിഞ്ഞ മിയപ്പതാവിൽ നടന്ന മൊറത്തന പ്രീമിയർ ലീഗിൽ BSC ബേക്കൂറിന് വേണ്ടി ജേഴ്സി അണിഞ്ഞ താരമായിരുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന മുഴുവൻ കായിക സ്നേഹികളെയും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്.
BSC BEKUR അതുപോലെ ബാബ ബ്രദേഴ്സ് സംയുക്തമായി അവതരിപ്പിക്കുന്ന അബോവ് 40 അണ്ടർആം ക്രിക്കറ്റ് പ്രീമിയർ ലീഗിന്റെ ആദ്യ ദിവസം രണ്ടാമത്തെ മത്സരം ആദ്യ ഇന്നിംഗ്സിന്റെ അവസാന ഓവർ പുരോഗമിക്കുമ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ പന്തുമായി ബീരാൻ വീണ്ടും തയ്യാറാണ്. മികച്ച പന്ത് ഉയർത്തിയടിക്കുന്നു, ഫീൽഡറുടെ കൈകളിലേക്ക് വീണ്ടും ഒരു വിക്കറ്റ്. ബീരാൻ തുരുതുര വിക്കറ്റ് നേടിക്കൊണ്ട് തന്റെ ഹാട്രിക് പൂർത്തീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഈ ടൂർണമെന്റിന്റെ ആദ്യ ഹാട്രിക്കിനുടമ ബീരാൻ എന്ന KFC കുമ്പളയുടെ വെറ്ററൻ താരം ഓൾറൗണ്ടർ. അദ്ദേഹം നേടുന്ന തുടർച്ചയായ മൂന്നാമത്തെ വിക്കറ്റ്. ഖാദർ ഉളിയത്തടുക്ക ഔട്ടായി തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ പകരക്കാരനായി രാജേഷ് ഔട്ടായി പുറത്തു പോകുമ്പോൾ ഖാദർ ഉളിയത്തടുക്ക പുതിയ ബാറ്റ്സ്മാൻ സ്ട്രൈക്കിലാണ്. മറ്റൊരു ബാറ്റ്സ്മാൻ അതുപോലെ മത്സരാർത്ഥികൾക്ക് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന ഡെക്കൌട്ടിൽ വന്നിരിക്കേണ്ടതാണ്. മികച്ച ഷോട്ട്, ഫൈൻ ലെഗിലൂടെ മനോഹരമായ ഷോട്ട് എതിർത്തുകൊണ്ട് തന്റെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് രണ്ടാമത്തെ റൺസ് കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെടുകയാണ് ഖാദർ ഉളിയത്തടുക്ക. വൺ ഷോട്ട് എന്ന അമ്പയർ വിധിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ഒരൊറ്റ റൺസ് മാത്രം നേടാനേ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. നോ സ്ട്രൈക്ക് ബാറ്റ്സ്മാൻ, ഷോ യുവർ ജേഴ്സി നമ്പർ 08 തേജാവ. ശ്രീജിത്ത് ലോങ് ഓഫിൽ മറ്റൊരവസരം. അങ്ങനെ ഓവറിൽ 4 വിക്കറ്റ് നേടിക്കൊണ്ട് ബീരാൻ മികച്ച തന്റെ പ്രദർശനത്തോടുകൂടി തന്റെ കരിയറിലെ ഏറ്റവും നല്ല പ്രകടനത്തോടുകൂടി അദ്ദേഹം ഈ ഓവർ അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ സ്കോർ 52-53 വേണം ഇവിടെ മത്സരം വിജയിക്കുവാൻ. എത്രയും പെട്ടെന്ന് രണ്ടാമത്തെ ഇന്നിംഗ്സിന് ഇറങ്ങേണ്ടതുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബാറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇവിടെ ഇതുവരെ ബാറ്റ് ചെയ്തവർ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഫീൽഡിലേക്ക് ഇറങ്ങണം, എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇറങ്ങണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. ഇന്ത്യ പെസോട്ട് എവിടെയുണ്ടെങ്കിലും വേദിയിലേക്ക് എത്തണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. കിങ് കോബ്ര ടീമിന്റെ ഇനിയും 3 ആൾക്കാർ സൈനപ്പ് ചെയ്യാൻ ബാക്കിയുണ്ട്. 2 ഓവറുകൾ മാത്രമാണ് അവസരമുള്ളത് ഇവിടെ. ഇനി 2 ഓവറുകൾ മാത്രം. ജേഴ്സി അണിഞ്ഞുകൊണ്ട് വേണം ഇവിടെ സൈനപ്പിനെത്തുവാൻ. അതേപോലെ മത്സരാർത്ഥികൾക്ക് ഈ മൈക്ക് പോയിന്റിന്റെ വലതുവശത്തും ഇടതുവശത്തും ഒരുക്കിയ ഡെക്കൌട്ടിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇരിക്കാനുള്ള സൗകര്യം. മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് പോയി ഇരിക്കരുത്. ദയവ് ചെയ്ത് കമ്മിറ്റിയുമായി സഹകരിക്കുക. ക്രിക്കറ്റിന്റെ അഴക്, ക്രിക്കറ്റിന് കയ്യൊപ്പ് ചാർത്തണമെങ്കിൽ അതിന് അഴക് വേണ്ടിവരും. ആ അഴക് പൂർത്തീകരിക്കാൻ ഇവിടെ കമ്മിറ്റി ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾ ഇരിക്കണം. ഏർപ്പെടുത്തിയ സ്ഥലത്ത് ഒരുക്കിയിട്ടുള്ള ഡെക്കൌട്ടിൽ ഇരിക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. അസീസ് ബേക്കൂർ എവിടെയാണ്? അശോക് ബ്ലാസ്റ്ററിന്റെയും അതേപോലെ കിങ് കോബ്രാസിന്റെയും, കിങ് കോബ്രാസിന്റെ 2 ആൾക്കാർ, അശോക് ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ 1 ആൾ സൈൻ ചെയ്യാൻ ബാക്കിയുണ്ട്. 2 ഓവറുകൾ മാത്രമാണ് അവസരം. 2 ഓവർ കഴിഞ്ഞാൽ യാതൊരു കാരണവശാലും സൈനപ്പ് ചെയ്യുവാൻ അനുവദിക്കുന്നതല്ല. അതുകൊണ്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് സൈനപ്പിന് വേണ്ടി എത്തിച്ചേരണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.
महमूद दोस्तों फिर एक बार स्वागत करना चाहता हूं दूसरी मैच के दूसरी इनिंग्स के लिए जो कप्तान शुरुआती करना चाहता है गेंदबाजी में और इसी तरह बल्लेबाजी में भी कप्तान आए हुए हैं। नो स्ट्राइक पर खड़े हैं। स्ट्राइक पर रतन कुमार क्लासिकल बल्लेबाज जाना जाती है इनको, जो बहुत बढ़िया जो लंबे सफर है इनके भी अंडरआर्म क्रिकेट में। लपटाम और विकेट, बहुत खूबसूरत गेंद तेज और रचनात्मक तरीके के साथ शुरुआत की, एक रन तेजी के साथ उठकर पूरा किया, दूसरी के लिए कोई मौका नहीं। बहुत अच्छे फील्डिंग राजेश ने आकर इस गेंद को बहुत तेजी के साथ उठाए। जो विकेट कीपर में खड़े हुए थे इन्होंने जो फाइन लेग शॉट लेग की तरफ इन्होंने आकर इस गेंद को उठाए। फिर एक बार किंग कोब्रा രണ്ടാൾക്കാർ സൈൻ ചെയ്യാൻ ബാക്കിയുണ്ട്. അതേപോലെ അശോക് ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ ഒരാൾ സൈൻ ചെയ്യാൻ ബാക്കിയുണ്ട്. എത്രയും പെട്ടെന്ന് വന്ന് സൈനപ്പ് ചെയ്യുക. അടുത്ത ഓവർ അവസാന അവസരമാണ്. അവസാന അവസരത്തിന് നിൽക്കരുത്, അതിനു മുമ്പ് സൈൻ ചെയ്തിട്ട് ടോസിംഗ് നടത്തേണ്ടതാണ്. റൗണ്ട് അപ്പ് ഒക്കെ പുറത്ത് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അവശേഷിക്കുന്ന ഓവറിൽ വേണം റൗണ്ട് അപ്പും ടീം മീറ്റിംഗും നടത്താൻ. കഴിഞ്ഞ മത്സരം ക്ഷമിക്കുക, അടുത്ത മത്സരത്തിന് വേണ്ടി തയ്യാറെടുപ്പ് നടത്തുക. സർക്കിളിനകത്ത് 6, സർക്കിളിന് പുറത്ത് 5 എന്നിങ്ങനെയാണ് ഫീൽഡർമാരെ നിർത്തേണ്ടത്. കിങ് കോബ്രാസ് അശോക് ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് അടുത്ത മത്സരത്തിന് വേണ്ടി തയ്യാറെടുപ്പ് നടത്തുക. അത് കഴിഞ്ഞ് ഫ്രണ്ട്സ് ബായ്ക്കട്ട, മാസ്റ്റേഴ്സ് ഓർക്കാടി ടീമുകൾ തയ്യാറെടുപ്പ് നടത്തുക. किरण अपनी ओवर की दूसरी गेंद लेकर तैयार है. स्टंप के बिल्कुल बाहर थे. शकीर ने घूम कर देख रही है. जी हाँ, वाइड के इशारा दिए, दोनों हाथ हवा पर फैलाकर दिखा रहा है कि वाइड. इस वाइड की मदद से संख्या बढ़ते हुए 2 रन. एक गेंद फेंक चुके हैं. 53 इज द विक्ट्री टारगेट, यानी कि 53 रन. और रचनात्मक तरीके के साथ शुरुआत की है. बीरान ने अपने खाता खोलना चाहते हैं. इन्होंने खाता खोल चुके हैं देरी के जो धीमी गति के साथ. जो दखल कर जो मिड विकेट पॉइंट की दिशा पे फील्डर थे, इन्होंने गेंद को तेजी के साथ उड़ाया. तब तक 1 रन और इस 1 रन की मदद से संख्या बढ़ते हुए 3 रन 2 गेंदों में. जो फील्डर खड़े की हैं 6 खिलाड़ी इस दायरे के अंदर है. फिर एक बार किरण लेफ्ट आर्म होता विकेट. और बहुत खूबसूरत शॉट. फील्डिंग बहुत अच्छी थी लेकिन 1 रन से रोक नहीं पाए और इस 1 रन की मदद से संख्या बढ़ते हुए 4 रन 3 गेंदे में. किरण कप्तान है, जो कप्तान के लिए फिर एक बार गेंदबाजी करने के लिए तैयार है. बीरान काफी खतरनाक बल्लेबाज है, काफी जो क्लासिकल बल्लेबाजी भी करते हैं. किरण के लिए, किरण के सामने ओ बहुत अच्छी गेंद ऑफ स्टंप के बिल्कुल बाहर थे. गेंद सीधा विकेट कीपर को भी वंचित करते हुए गेंद आ रही है. एक रन तेजी के साथ दौड़कर पूरा किए. अंपायर के इशारा बैट. देखिए बीरान के बल्ले के बारी हिस्सा लगकर गेंद गए और इस वजह से 1 ही रन मिल पाए. दूसरे के लिए कोई मौका नहीं दिया. 4 गेंदे फेंक चुके हैं. 4 गेंद में से 5 रन. നൗഷാദ് ബുറാഖ് ഈ പരിസരത്തുണ്ടെങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് വേദിയിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. लेफ्ट आर्म ऑन द विकेट. ऑफ स्टंप के बाहर थे. अंपायर ने वाइड के करार दिया गया और इस वाइड की मदद से संख्या बढ़ते हुए 6 रन. किरण 4 गेंदे फेंक चुके हैं. फिर एक बार लेफ्ट आर्म ऑन द विकेट. और बहुत अच्छे गेंदे जो स्लिम मिड ऑफ में इन्होंने जो दखल दिए. फिर एक बार 1 रन अपने खाते पर जोड़ा गया और इस 1 रन की मदद से संख्या बढ़ते हुए 5 गेंद में 7 रन. 7 ऑन द बोर्ड. किरण लेफ्ट आर्म ऑन द विकेट. बीरान के लिए गेंदबाजी करना चाहते हैं. बीरान भी तैयार हुए हैं
ओ अच्छी गेंद फ्लिक की है गेंद को फाइन लेग पर फील्डर जिन्होंने कोई जो मिसफील्ड की वहां पर गेंद को सीमारे के करीब से गेंद को उठाए जब तक 2 रन के लिए अवसर भी मिले हैं और इस 2 रन की मदद से संख्या बढ़ते हुए 9 रन। ओवर की समाप्ति पहली ओवर की समाप्ति पर 9 रन बहुत खूबसूरत जो शुरुआती दिया गया है बिना किसी नुकसान के साथ जो शुरुआत करते हैं जो आने वाले बल्लेबाजों के लिए आत्मविश्वास बढ़ जाते हैं। तो क्रिकेट के जो मामूली बात है यानी कि 5 ओवर के 6 ओवर की जो लंबे ओवर की मैच है अगर जो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन को जो भी यहां पर जो आत्मविश्वास बढ़ जाती है। फिर एक बार 9 रन पहली ओवर की समाप्ति पर സൈനപ്പിന് അവസാന അവസരമാണ് കിങ് കോബ്രാസ് അതേപോലെ അശോക് ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് കാസർഗോഡ് രണ്ട് ടീമിലുമായി 3 ആൾക്കാർ സൈൻ ചെയ്യാൻ ബാക്കിയുണ്ട്. കാസർഗോഡിൽ ഒരാൾ, കിങ് കോബ്രാസിൽ 2 ആൾ. फाइन लेग में बहुत खूबसूरती के साथ स्वीप की है रतन ने एक रन तेजी के साथ उड़कर पूरा किया दूसरे रन के लिए दौड़ा जा रही है. बहुत अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, खूबसूरत रनिंग बिटवीन द विकेट और इसी के साथ 2 रन के सारे के साथ रन संख्या कुल मिलाकर 11 रन. 11 ऑन द बोर्ड. बॉलर उमर बल्लेबाजी में काफी अच्छी बल्लेबाजी किया गए थे, जो स्फोटक बल्लेबाजी किया गए थे उमर ने. मरसीतांगोली बहुत अच्छी भी जो लंबे सफर है इनके भी जो अंडरआर्म क्रिकेट में बहुत खूबसूरत जो योगदान दिए थे अंडरआर्म क्रिकेट के लिए. फिर एक बार राइट आर्म ऑफ द विकेट अराउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए उमर टू रतन बहुत खूबसूरती के साथ जो ड्राइव की है खिलाड़ी के इस्तेमाल की है बहुत अच्छी जो ड्राइव. एक रन मिल पाए लेकिन भी जो बहुत अच्छे लगते हैं जो ऑफ साइड में काफी अच्छे खेलते हैं भी है दोनों बल्लेबाज. जो बीरान मेरे ख्याल में तो ज्यादा से ज्यादा ऑन साइड ज्यादा पसंद करते हैं, बहुत अच्छे बल्लेबाज हैं. अगर सेट हो जाए इन दोनों बल्लेबाज जो केएफसी के लिए बहुत बड़े उम्मीद को बढ़ा सकते हैं. अच्छी जो बल्लेबाज है दोनों. ओहो बढ़िया अपील लेकिन एलबीडब्ल्यू के करार नहीं दिया जाती यहाँ पर. और जो अपील किया गया है ये तो अब 40 में मामूली जो ज्यादा से ज्यादा टूर्नामेंटों में जो प्रतियोगिताओं में जो एलबीडब्ल्यू के रूप में आउट नहीं दिया जाता है और इस प्रतियोगिता में भी वही फॉलोअप कर रही है. अब 3 गेंद चौथी गेंद लेकर तैयार. बहुत खूबसूरत गेंद थे. उमर ने गेंद के ऊपर नहीं गए, जो फील्ड विकेट कीपर ने आकर गेंद को उठाए राजेश ने. और तब तक 1 रन और इस 1 रन की मदद से संख्या बढ़ते हुए 14 रन. 5 रन 4 गेंदों में से उमर. फिर एक बार बीरान के लिए बीरान भी तैयार है उमर के सामना करते हुए. लक्ष्मण गेंद हो बढ़िया गेंद लेकिन अंपायर ने हाथ तो फूल के जैसे खुल रही है मैदान के बीचों बीच में से शकीर के हाथ खुल गए तो वाइड के इशारा और इस वाइड की मदद से संख्या बढ़ते हुए 15 ऑन द बोर्ड यानी कि 15 रन. दूसरी ओवर की छालती पर है और इस ओवर के बाद 3 ओवर बचे हैं. बीरान मौजूद है. अच्छी गेंद और बहुत खूबसूरत गेंद और इसी के साथ डॉट बॉल. आखिरी गेंद बचे हैं. बल्लेबाज को पूरी तरह वंचित किए. पड़ने के बाद जो उछाल के साथ विकेट कीपर की तरफ गए थे. विकेट कीपर तो जो ओवरआर्म क्रिकेट के जैसे बिल्कुल पीछे हटकर खड़े हैं यानी कि 2-3 मीटर हटकर खड़े हैं इन्होंने. और अच्छी गेंद विकेट कीपर ने जो छोड़ दिया गया है और इसी के साथ 1 रन दौड़कर पूरा किए. जो अंपायरों के बीचों बीच में बातचीत जा रही है. 1 रन
16 2 ओवर की समाप्ति पर 16 रन। फिर एक बार नए गेंदबाज है लक्ष्मण गेंदबाज, ओ बहुत अच्छी गेंद उठा करके ला है गेंद को, गेंद जो बुलेट की तरह गेंद जाकर गिरे है सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए। 22 ऑन द बोर्ड। बीरान अपनी जो फॉर्म पर लौट चुके हैं, जो अब तक खामोश थे। पहली 2 ओवर जो सिंगल डबल के साथ इन्होंने साझेदारी दी और इस ओवर की शुरुआत ही में इन्होंने सोचा है कि छक्के की बिल्कुल जरूरत है, बिल्कुल सही समय पर छक्के लगाए। अच्छी गेंद उठा के गया है, एक बार फील्डर की वंचित करते हुए गेंद सीधा गया सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। बीरान वाह भाई वाह, जो गियर बदली किए इन्होंने। 2 ओवर तक इन्होंने सावधान सी जा रही थी, 2 ओवर के बाद इन्होंने पूरी तरह गियर को बदल दिया गया है और गाड़ी चलते रही जो 80-90% घंटे में। बिल्कुल बीरान के बल्ले जोर से बोलने लगे, छक्के चौके लगा दिया गया है पहली सामना के 2 गेंदों पर। रवि बल्लेबाजी में काफी अच्छे बल्लेबाजी किया गया था रवि, इन्होंने गेंदबाजी में अब तो खराबी शुरुआत आने की बीरान के सामने गेंदबाजी कर रही है। रवि फिर एक बार ओवर द विकेट गेंदबाजी करना चाहते हैं, तीसरी गेंद अपनी ओवर की बीरान के लिए। बीरान इस गेंद को भी उठा कर खेलना चाहा लेकिन अंपायर ने कोई असर नहीं किया, डॉट बॉल। रतन तो अपील तो की है लेकिन कोई मौका नहीं। शकीर जो अनुभवी सालों से जो अंडरआर्म क्रिकेट के साथ जो अंपायर के रूप में जो खड़े होते हैं अलग अलग मैदानों में, बड़े बड़े क्रिकेट प्रतियोगिताओं में। फिर एक बार ओवर द विकेट अंपायर को क्रॉस करते हुए तैयार है बीरान के लिए। अच्छी गेंद उठा रही है बीरान, बीरान बीरान के बल्ले से इस ओवर के दूसरी छक्का। केएफसी की कप्तान, इनके बल्ले तो बहुत बड़े बोलने लगे हैं इस ओवर में। 4 गेंद में से इन्होंने 16 रन बटोर लिया गया है इस ओवर में। 32 ऑन द बोर्ड, 21 रिक्वायर्ड, 14 डिलीवरी। ओ हो लक्ष्मण के बाहर थे। बीरान ने कह रहे हैं कि स्ट्राइक मेरे पास रखने दे, क्योंकि जो 2 छक्के तो लगा दिया गया है, 1 चौके लगा दिया गया है, 1 वाइड तो मिल चुका है। अब तो इस ओवर में स्ट्राइक तो मेरे पास रखना चाहिए, एक कोशिश में इन्होंने मना किए रतन को। फिर एक बार ओवर द विकेट अंपायर को क्रॉस करते हुए बीरान, ओ हो अच्छी गेंद। 2 डॉट बॉल इस ओवर में, 2 छक्के 1 चौके, बिल्कुल चमत्कारी बनाए हैं इस ओवर को बीरान ने। फिर एक बार रवि टू बीरान, फिर भी 1 छक्के के लिए कोशिश कर रही है, हर गेंद में उठा करके ला चाहते हैं। ओहो बढ़िया गेंद, 3 गेंद डॉट बॉल, 3 तो बाउंड्री के बाहर गए हैं। 17 रन के लंबे ओवर रवि के तोहफा, यानी कि 3 ओवर की समाप्ति पर रन संख्या कुल मिलाकर 21 रिक्वायर्ड, 20 रिक्वायर्ड, क्षमा कीजिए 20 रिक्वायर्ड आउट ऑफ 12 डिलीवरी। नेक्स्ट मैच के टॉस के लिए आ जाए कप्तान अरविंद शेट्टी और दिनाकर शेट्टी और अरविंद शेट्टी, 2 शेट्टियों के बीच में लड़ाई जाएंगे। और इस मैच के लिए जो टॉस के लिए जो अंपायर 12 to go, 20 run to get. उमर बहुत अच्छे के साथ जो रतन ने सोचा है कि बहुत अच्छी सोच है इनके, जो बल्लेबाजी जो अच्छे कर रही है, साथी खिलाड़ी कप्तान अच्छी कर रही है, तो इन्होंने सोचा है कि इनको स्ट्राइक रोटेट करूं। रतन के लिए यही बात है, क्योंकि जो फॉर्म पर बल्लेबाजी कर रही है कप्तान, इनके लिए जो मौका दिया जा रही है। ओ अच्छी गेंद, अपील 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 अपील, और इसी के साथ बीरान आउट, बीरान के विकेट पतन।
King Cobra on the toss. Decided. Sport to be decided multiple. King Cobra on the toss selected to Dinakar Shetty. Feeling. Elected to field first. അതേപോലെ മത്സരിക്കുന്ന ടീമുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, നിങ്ങളുടെ റൗണ്ട് ഓഫ് പുറത്താണ് അവസരം, അകത്ത് റൗണ്ട് ഓപ്പിനുള്ള അവസരമില്ല. ക്യാപ്റ്റൻ ശ്രദ്ധിക്കുക, 2 ക്യാപ്റ്റന്മാർ പുറത്ത് റൗണ്ട് ഓഫ് ചെയ്യുക, ടീം മീറ്റിംഗ് നടത്തുക, നേരെ മത്സരത്തിലേക്ക് വരിക. राजेंद्र और राजेंद्र उठा करके लाए, वाह भाई वाह, राजेंद्र वसंगारी। इनके नाम तो हमेशा जो 10-15 साल पहले ये जो सिक्सर राजेंद्र रखते हैं इनको, ये तो राजेंद्र है। और एमआरसी मंजेश्वर के जो एक मूसा थे, एक राजा थे, और सुनील मंजेश्वर थे जो छक्के लगाने वाले। इनके इस दो बल्लेबाजों की शौक है छक्के लगाने, बहुत बड़े बड़े शॉट लगाते हैं। आते ही पहली गेंद को इन्होंने जो बड़े दबाव को हटा दिया गया, 8 to go 13 रन टू गेट, 13 വേണം। फिर एक बार उमर अराउंड द विकेट अंपायर को क्रॉस करते हुए राजेंद्र के लिए, राजेंद्र उठा करके ला है हवा पर गेंद, गेंद तो सीधा मारेगा के बाहर 6 रन के लिए। वाह भाई वाह, राजेंद्र हार्दिक पांड्या ऑफ इंडिया। तो हार्दिक पांड्या तो हमेशा देख रही है दोस्तों, जो आते ही मिडिल ऑर्डर में जो जबरदस्त धुआंधारी बल्लेबाजी करते हैं। एक समय पर जो यूसुफ पठान थे भारत की, जो पाकिस्तान के अब जो प्रसन्न आसिफ रिजवान, फिर एक बार और इस बार भी उठा करके ला है। राजेंद्र तो जल्दी समाप्त करना चाहते हैं और बहुत खूबसूरत जो बल्लेबाजी की मजारा की, और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। सिर्फ 3 रन की जरूरत है मैच को जीतने के लिए। रतन कुमार नो स्ट्राइक पर खड़े हैं, स्ट्राइक पर राजेंद्र। जो किसी भी ओनर के जो किंग कोबरा से फोटो रेडी आगो। वेलकम मिस्टर नौशाद बुराक। इस प्रतियोगिता की ऑफिशियल कमेंटेटर नौशाद बुराक, ഈ ടൂർണമെന്റിന്റെ ഒഫീഷ്യൽ കമന്റേറ്റർ ആയ നൗഷാദ് ബുറാഖ് ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തെ സ്നേഹത്തോടെ സന്തോഷത്തോടെ ഈ ടൂർണമെന്റിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. और इस गेंद को रिसीव करना चाहते थे किंग कोबरा दिनाकर शेट्टी, प्लीज गो। ഈ മത്സരം മത്സരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർ മത്സരം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ഫോട്ടോക്ക് വേണ്ടി വരേണ്ടതാണ്. KFC കുമ്പള ഒന്ന് ഫോട്ടോ എടുക്കണം. വൈറ്റ് और इस गेंद को स्वीप करना चाहते थे, पूरी तरह पराजित हुए हैं। और इसी के साथ रतन कुमार आउट।
हॉल मुश्ताक एमसीसी आउट। नए बल्लेबाज के रूप में गए थे, जो ज्यादा रन की जरूरत नहीं है यहाँ पर, सिर्फ तीन गेंद में 2 रन की जरूरत है मैच को जीतने के लिए। जहां 6 गेंद में 3 रन की जरूरत है, तब न्यू बैट्समैन मुरली जा रही हैं, जो काफी अनुभवी खिलाड़ी हैं। मुश्ताक तो जो दुआदारी बल्लेबाज है, इनको भेजा गया थे। जो राजेंद्र ने कितने दूर थे, लंबे थे मैच, इस लंबे से अपने करीब लाया गया, अपने ख्वाबों में लाकर रखे हैं, जो चौकट पर लाकर रखे हैं मैच को। फिर भी 3 गेंद में 2 रन की जरूरत है मैच को जीतने के लिए। फिर एक बार मुरली के सामने बॉलर कादर उलियतका, इस बार गलती किए हैं कादर, वाइड फेंक चुके हैं। अब तो 3 गेंद में सिर्फ 1 रन, मैच विल बी टाइड अप। कादर राइट अपर ऑफ द विकेट पर को क्रॉस करते हुए तैयार है, और इस गेंद हवा पर और इसी के साथ आउट। 2 to go 1 to get। 2 गेंद में 1 रन की जरूरत है मैच को जीतने के लिए। दो गेंद में 1 रन की जरूरत है। कादर काफी अच्छी जो अनुभवी खिलाड़ी है, बढ़िया सीप, और इसी के साथ मैच जीत चुके हैं केएफसी कुंबला ने पहली मैच, और अगले मैच के लिए तैयार हो जाएं सीधा मैदान पर। तो राउंड अप तो हो चुके हैं मेरे ख्याल में, और इस मैच में कुछ शकीर को विश्राम देना चाहिए, क्योंकि जो शेख मलाली अंपायर के रूप में चले जाएंगे, शकीर तो मैदान से बाहर आएंगे, और इसी तरह आगे बढ़ेंगे टूर्नामेंट। और पहली बार वॉइस ऑफ उपला यानी कि उपला की आवाज नौशाद बुराक आपके सामने पेश किया जाएंगे। आंखों की हाल अंग्रेजी कमेंटेटर नौशाद जी, धन्यवाद और स्वागत करना चाहता हूं। और अगले मैच के लिए मैन ऑफ द मैच की तरफ जाना चाहिए। Man of the match goes to Biran, captain of KFC Kumbala. Man of the match award നൽകുന്നതിന് വേണ്ടി So thank you, Abdurrahman, BSC BEKUR. Another fabulous tournament we are witnessing here in the Mananguzi Stadium. I would like to welcome Mr. Anif Umanga, the chairman of Mananguzi Premier League. Please be here on the presentation area.
And here Abdurrahman BSC BEKUR is endeavoring the man of the match award, which is sponsored by Good Luck Pasuta. So, well played Mr. Viran, and thank you Mr. Rahman BEKUR for presenting the man of the match award. So back to the game. Third match going on here in the day number 1. Ashok Blasters takes on King Cobra after spinning the coin. Captain from side of King Cobra won the toss and they elected to field first. In the opening pair, we can see Shamir Baba and Ashok Shetty. In the bowling mark, we have Ashok. So here comes the very first ball from the side of King Cobra. And Mr. Ashok over the wicket. Slower delivery and towards the wide region. So that's not a good start from the bowling side. So playing the first game in the 40 above cricket tournament here in the Bandanguji Stadium. So Ashoka. And this time something pitching from the bowler. Batsman just clicks into the onside region and getting off the mark. So two well-known openers we can see for side of Ashok Blasters. Shamir Baba, one of the experienced underarm cricketer, having lots of experience playing the same ground. And in the non-strike region we can see Ashok Shetty now. Ashok started with a wide and single. And nicely played towards the mid-on region and they're running for the single. Nicely collected by the fielder in the deep. Meanwhile, batsman completing the couple of runs. So that's really a good way from the batsman Shamir Baba to open the account. So Ashok ready to deliver the third one. Slower delivery this time. Connection was not perfect. So really, we are witnessing the very beautiful picture of underarm cricketer. The players above 40 years are battling here in the Bandanguji Stadium. So there's real interesting experienced underarm cricketers are gathered for each and every teams. So that second extra coming from the bowler. 3 balls completed here. 5 runs on the board. It's a good start from the batting side. Ashok Blasters and slower delivery this time. Connection was not perfect from the batsman Shamir Baba. Maybe having the big gap playing the underarm cricket, joining in the 40 above matches, playing for Ashok Blasters, coming as opener. Here comes Ashoka. And that was a loosey delivery. Batsman was not able to get it. 5 balls completed here. So really good start from the bowler. Ashok for side of King Cobra. Here comes the final one. And Lucy delivers the big one up in the air and into the deep region. Munna is running, but ball running towards the boundary rope. So that is the welcome boundary for the batsman. Over number 1 comes to an and scorecard remains 9 runs without loss of wicket. Master Sir Cardiodella play on photo session event.
മാസ്റ്റേഴ്സ് ഏർക്കാടി അടുത്ത മത്സരം മത്സരിക്കേണ്ട ടീമാണ്. ഫോട്ടോ സെഷന് വേണ്ടി തയ്യാറായി നിൽക്കുക. So captain brings Shivaram into the attack to bowl the second over. So start with a beautiful boundary from the batsman Ashwin Shetty. So both the batsmen got a boundary. Yeah, looks like a big shot up and over this time into the crowd. So that's very much closer to the field, I think. So that is a beautiful sixer from the player Ashwin Shetty. Shivaram may be not happy. 2 boundaries in the first 2 balls. 4 came from the very first ball, 6 in the second delivery. So the openers are really trying to attack the bowlers. Here comes Shivaram Cobra over the wicket. And nicely played. Good thinking by the batsman. Got 10 runs from first 2 ball. Just rotating the strike, sending the partner Shamir Baba into the strike region. Singamo Aris Kokad is moving to 20 runs on the board. So good partnership between the openers. Here comes Shivarama. Rolling one. This time nicely delivered. Nicely delivered. Shamir was trying to flick towards the outside region. There was no connection. So we've seen so many fabulous, entertaining innings from the player like Shamir Baba in the regular UNDERARM tournaments. And nicely played this time towards outside region. Fielder running and it goes all the way into the boundary. Let's wait for the decision. Whether no, it's gone all over. Outside the ground. So that is number 1 from Shamir Baba. 6 number 2 for the batting side. The scorecard is jumping here. It goes to 26 runs on the board. So Shivaram, the expensive over so far, is ready to deliver the final one. And slower delivery this time. Nice way to end the over number 2. 26 runs without loss of wicket. So really good start from the batting side. Shamir Baba, Ashwin Shetty. They have well set on the crease. So limited 5 overs match is going on here. So we can see the crowds are coming into the Mannaruji Stadium for witnessing above 40 years tournament. So really age is just a number in the cricket. The experience make so they can perform well. We are waiting for lots and lots of entertaining, fabulous performance from each and every players. So 2 overs completed. Now King Cobra captain may be under pressure. 26 runs from first 2 overs. He brings the bowler Hali to bowl the over number 3. Still the opponents are playing for Ashok Blasters. A slight change in the field position we can see from side of King Cobras. Here comes Ali over the wicket. And nicely delivered this time. Started with a dot ball here. Good start from the new bowler. They have to do a great comeback by bowling the perfect ones. First 2 bowlers was very much expensive for Cobras. Looking for the across. So really beauty from the new bowler. So that's what the captain from side of King Cobra needed here. 26 runs came from first 2 overs. Limited 5 over matches going on here. So they have to bowl the perfect overs. So 2 complete dot balls from the new bowler. Ali is ready to deliver the third one over the wicket. And clicks the ball up in the air. This time fielder was just trying to collect after bouncing the ground. Meanwhile batsman just rotates the strike. Really good partnership going between Ashwin and Shamir Baba. Here comes Ali. And that was a loosey delivery going towards the short fine leg region. Keeper was not able to get it. Umpire widens. So that will be the 2 extra runs gifted by the bowler. So far he is bowling perfectly. Ball 2 dot deliveries. And consider a single now. Wide +1. 3 runs considered by the bowler from first 3 balls. Here comes Ali. And this time into the pads I think. Dot ball there. Third over in progress. We've seen 2 maximum so far. 1 from Ashwin, 1 from Shamir Baba. 2-3 boundaries so far in the innings of Ashok Blasters. Looks for the big shot. Miles up in the air. Oh, will get it. Munna Bapai 30 underneath it and gets it. Wicket number 1 down. Ashwin Shetty departs for side of Ashok Blasters. So finally Hali breaks the partnership here. Great catch taken from the deep. Munna Bapai 30. It's not an easier job under the sunlight. Really focusing on the cricket ball. 1 more to go.
and putting the balls inside the safe hands. So Munna was standing in the long on region, gets a wicket, gets the catch. So Ali breaks the partnership here. Wicket number 1 down for Ashok Blasters. And here comes Ali again. That was legal delivery. Dot ball considered there. Over completed. Over number 3 comes to an end here. Scorecard remains 29 runs for the loss of 1 wicket. So really great comeback done by the bowler Ali. Bowling the 3rd over, considered 3 runs. Got a wicket of Ashwin Shetty, the opener. So discussion going between the players from side of King Cobras, who will take the responsibility to bowl the 4th over. We seen 2 expensive over started the innings from Ashoka and Shivarama, that considered 26 in the first 2 overs. Then captain brings some changes in the bowling line. They brings Ali into the attack. He done his job perfectly by considering 3 runs. And here captain brings Apu into the attack around the wicket. And slower delivery. Batsman was not able to connect it perfectly. Just clicking into the answer region, running for a single, and the new player Shabir gets off the mark. So Shamir Baba had a great partner, Ashwin Shetty, at one side, but he departed in the previous over. So Shabir joining Shamir. The full toss delivery. That is a lollipop. Missed it. So many dot balls we can see in the innings of Shamir Baba. Having a big gap in the UNDERARM cricket, joining for the team like Ashok Blasters in the above 40 years cricket tournament. Now Lucy ball looks a big shot, miles up in the air. Munna Babai 30 and puts the hands on it. We have to wait, and they are running for the single. Just a single. Can I believe this ball was miles up in the air? But Shabir was not interested for running between the wicket. Just a single got from the batsman. What a job done by the fielder. I think the man was standing at the long off reach and puts the hands on it. So Munna Bapai 30, another fielder tried and finally saves the boundary there. Still discussion going. Umpire have to clear the. Umpires have to clear whether the fielder was crossing. We have the live telecast here of this great tournament conducted by SACLA BEKUR, playing above 40 years. So still discussion going there. Players, please don't make any arguments. Officials will do the final decision. I think Rafiq Aliyaka standing in the line region. So whether the fielder was crossing the boundary line while the ball heading the ends, that was checking done there by the official umpires. We are having the quality umpiring panel. So that will be just a single for the batsman. So what the batsmen were doing, ball was miles up in the fielder was trying to push the ball inside the ground. Shamir Baba and Shabir just happy with getting the singles. Here comes the ball right now. Slow Lucy this time towards the square leg region, and it goes slowly, and that's we can see the slow outfield. We are in the Mannanguji Stadium, second part of Mannanguji Stadium. So 5 balls completed. 4 balls completed. Scorecard remains on 33. 2 more to go. Up. Right hand around the wicket to Shabir. And slower again. This time looks a big shot up in the fielder rushing and gets the wicket number 2. Shabir was not able to connect it perfectly. The power was not enough from the player. The wicket number 2 down for the batting side. Ashok Blasters. What a comeback we can see from the bowlers. Mr. Ali, Mr. Apu doing the great job. They are doing a great comeback with the ball. The captain from side of King Cobra may be very much happy. So after losing the wicket of Shabir, here comes the new player Prasad.
Now 5 balls completed. Here comes up. Lucy delivery. Nicely played. Up in the air. Munna Babai 30 running. And there is the fielder. Puts down. Meanwhile, batsman completes a couple of runs. Over number 4 comes to an India. Scorecard remains 35 runs for the loss of 2 wickets. So 4 overs completed. 35 runs for the loss of 2 wickets. That is the batting condition of the team like Ashok Blasters. They lost the toss, opted to bat first, came with the openers like Shamir Baba and Ashish Shetty had a good start. And he brings the bowler again, Ali, into the attack to bowl the second over of his spell. Over the wicket, nicely delivered. Good one from the bowler. Good start from the 5th over. So Prasad was not able to contact with the bat there. Here comes Ali. And into the middle stick. Another wicket for Mr. Ali. Wicket number 2 in his quarter. Mr. Prasad departed in a golden duck without scoring a single run for his team. So really great comeback done by King Cobras. 26 runs without loss of the wicket in the first 2 overs. That was the condition of the batting side. Big change we can see. The captain brings Ali into the attack. Happu bowls the perfect 4th over and Ali again bowls the final over. That makes big damage for the batting side. Scorecard still remains 35 runs on the board. Just 9 runs came from the last 2.2 overs. That's really a great comeback done by the bowling side. Captain from side of King Cobra may be very much happy with the comeback done by the bowlers. Here comes the new player, Sharif. Here comes Ali. And this time a little edge from the bat, I think. There was something sound. No, it hit the pads of the batsman. Just rotating the strike in the form of leg byes. So 3 balls completed. Here comes Ali. And this time towards the right region. So that will be the first extra from the final over. 3 balls completed. Ali ready to deliver the 4th one over the wicket to Shamira. And nicely played. Collects the ball. This time it goes into the hands of Munna Babai 30. The tall man standing in the long on region, not allowing the ball to cross the boundary rope. So the opener Shamir Baba departs finally for Ashok Blasters. So really a great catch taken in the deep region. I was mentioning it's not an easier job for the fielders under the sunlight, especially in the noon session here in the Mannanguji Stadium. Okay, thank you, Mr. Naushad Burak. Then I'm starting for the second innings for the third match of this particular SACLA Trophy 2022. Of Dinakar City, the captain of King Cobra, and Nathavan Roy, the non-striker batsman. Now matches between King Cobra, Kumbala, as well as Ashok Blasters Kasaragod. Cricket മാമാങ്കമാണ് ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇന്നത്തെ ആദ്യ ദിവസത്തിലെ 2 മത്സരങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ മൂന്നാമത്തെ മത്സരമാണ് ഇവിടെ. ഒരു വശത്ത് കിങ് കോബ്ര കുമ്പളയാണെങ്കിൽ മറുവശത്ത് അശോക് ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് കാസർഗോഡ്. 30 പന്തിൽ 42 റൺസിന്റെ ലക്ഷ്യമാണ് മത്സരം വിജയിക്കാൻ. സ്ട്രൈക്കിംഗ് വിഭാഗത്തിൽ ദിനകർ ഷെട്ടി എന്ന ക്യാപ്റ്റൻ, മറുവശത്ത് റോയ് എന്ന അതിസമർത്ഥനായ നോൺ സ്ട്രൈക്കർ. അമ്പയറിംഗ് പാനലിൽ ഇവിടെ ഷെയ്ഖ് മലയാളിയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ആദ്യ ഓവറിലെ ആദ്യ പന്ത് സതീഷിൽ നിന്ന് നീക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ 1 റൺസുകൾ ചേർത്തിരിക്കുന്ന അക്കൗണ്ട് തുറന്ന് പ്രവർത്തിക്കുകയാണ്. അശോക് ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സും അതുപോലെ തന്നെ കിങ് കോബ്ര തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടുന്ന രണ്ടാമത്തെ ഇന്നിംഗ്സ് 42 റൺസിന് വേണ്ടിയുള്ള പൊരിഞ്ഞ പോരാട്ടമാണ് ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ദിനകർ ഷെട്ടി നോൺ സ്ട്രൈക്കിലാണെങ്കിൽ ഇവിടെ സ്ട്രൈക്കിംഗ് വിഭാഗത്തിൽ റോയ് എന്ന അതിസമർത്ഥനായ ബാറ്റ്സ്മാൻ. രണ്ടാമത്തെ പന്ത്
ഉയർത്തിയടിക്കുന്ന ശ്രമം, പക്ഷേ ആ പന്തിന്റെ നീക്കത്തിലൂടെ ഒരു രീതിയിലും ഇവിടെ നേടാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. ആദ്യത്തെ 2 പന്ത് പിന്നിടവേ സ്കോർ നിലയിൽ 2 റൺസുകൾ കാണപ്പെടുകയാണ്. മൂന്നാമത്തെ പന്തുമായി വീണ്ടും ഇവിടെ ബോളിംഗ് വിഭാഗത്തിൽ സതീഷ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മൂന്നാമത്തെ പന്ത് ക്യാപ്റ്റൻ ദിനകർ ഷെട്ടിയിലേക്ക്. അടുത്ത മത്സരത്തിന്റെ ടോസിംഗിന് വേണ്ടി ഇരു ടീമിന്റെ ക്യാപ്റ്റന്മാർ ദയവച്ചത് എത്തിച്ചേർന്ന് മികച്ച രീതിയിൽ ഇന്നിംഗ്സിന്റെ ആദ്യത്തെ സിക്സർ ഉയർത്തിയടിക്കുന്ന ശ്രമമാണ് ക്യാപ്റ്റൻ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ഇവിടെ വളരെ ഭംഗിയായി തന്നെ അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നു. ദിനകർ ഷെട്ടി ഉയർത്തിയടിച്ച ഡീപ് മിഡ് വിക്കറ്റിലൂടെ 6 എന്ന രീതിയിൽ ആദ്യത്തെ സിക്സർ നീങ്ങുകയാണ്. ആദ്യത്തെ 3 പന്ത് അവസാനിക്കുമ്പോൾ സ്കോർ നിലയിൽ മികച്ച മാറ്റമുണ്ടാകുന്നു. 42 റൺസിന്റെ ലക്ഷ്യം, അതായത് 30 പന്തിൽ 42 റൺസിന്റെ ലക്ഷ്യമിട്ടുകൊണ്ട് മത്സരം ആരംഭിച്ചപ്പോൾ ഇവിടെ 3 പന്ത് അവസാനിക്കുമ്പോൾ 4ാമത്തെ പന്തുമായി വീണ്ടും ഉയർത്തെടുക്കുന്ന ശ്രമമാണ്. പക്ഷേ ഡീപ് സ്ക്വയർ ലെഗിലൂടെ മികച്ച ബൗണ്ടറിയുടെ അരികിലേക്ക് പന്തെത്തിയാലും 4 സെന്റിമീറ്ററിന്റെ ഗ്യാപ്പിലൂടെ നിന്ന പന്തിൽ ഇവിടെ 2 റൺസുകൾ നേടിയെടുക്കാൻ മാത്രമേ സാധിച്ചു. ഇതോടൊപ്പം അവസാനത്തെ 4 പന്ത് അവസാനിക്കുമ്പോൾ സ്കോർ നിലയിൽ ഡബിൾ ഡിജിറ്റ് ആരംഭിക്കുകയാണ്. 10 എന്ന നിലയിൽ ഇനിയുള്ള ഏകദേശം 26 പന്തിൽ ആവശ്യമുള്ളത് 26 പന്തിൽ ഏകദേശം 32. ആദ്യത്തെ 5 പന്ത് അവസാനിക്കുമ്പോൾ 5 പന്ത് അവസാനിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ അവസാനത്തെ പന്ത് വൈഡ് എന്ന സൂചന അമ്പയർ നൽകുന്നു. സ്കോർ നിലയിൽ മാറ്റമുണ്ടാക്കുമ്പോൾ 11 റൺസും. ആദ്യ ഓവറിലെ 5 പന്ത് പിന്നിടുകയാണ്. സ്കോർ നിലയിൽ 11. 42 റൺസിന്റെ ലക്ഷ്യമിരിക്കവേ 31 റൺസിന്റെ ആവശ്യമാണ് ഇവിടെയുള്ളത്. ഏകദേശം 25 പന്തിൽ അവസാനത്തെ പന്തമായി വീണ്ടും ഇവിടെ ലോലിപോപ്പ് പന്തായിരുന്ന പന്ത് നേരെ മിഡ് വിക്കറ്റിലൂടെ നീങ്ങുന്നു. 1 റൺസ് പൂർത്തിയാക്കുന്ന 2 കൂട്ടുകെട്ടുകൾ ഇവിടെ ആദ്യ ഓവർ അവസാനിക്കുമ്പോൾ സ്കോർ നിലയിൽ മാറ്റമുണ്ടാകുന്നു. 12. ഇനിയുള്ള 24 പന്തിൽ 30 റൺസിന്റെ ലക്ഷ്യമാണ് ഇവിടെ മത്സരം വിജയിക്കാനുള്ളത്. ഏകദേശം 7.5 എന്ന നിലക്ക് റിക്വയർഡ് റൺ റേറ്റിലൂടെ ഇവിടെ നീങ്ങിയാൽ മാത്രമേ ഈ മത്സരം സ്വന്തമാക്കാനുള്ള സുവർണ അവസരം ഉണ്ടാകും കിങ് കോബ്രയിലേക്ക്. 24 പന്തിൽ 30 റൺസിന്റെ ലക്ഷ്യമാണ് ഇവിടെ മത്സരം വിജയിക്കാനുള്ളത്. The last 24 balls they need 30 runs, and the next match is between Friends Baikate as well as Masters Wakadi, and I think Friends Baikate won the toss and choose selected by so the match will be starting for the second innings, second over. The new bowler from the side of Ashok Blasters. The Shashidara is a bowler, and after the completion of first ball of the second over, the first ball dot ball. Now the batsman waiting for the ball. The very good right hand batsman, Mr. Dinakar Shetty, is the captain of King Cobra. Now started his second ball. Oh, lovely ball! Look at that ball! Look at that ball! And what a fielding there! The brilliant wicket. The captain Dinakar Shetty walking back to the pavilion. There's a big loss of King Cobra. The first wicket left in the crease. To covering to his place, jersey number 08 from King Cobra. The new batsman also arriving for the striking area. I think that is Ashok. Ashok is a batsman, and Ashok and Roy is a partnership. So after the completion of first 2 balls, in 2 balls 0 runs and 1 wicket. That's a brilliant bowling phase, Mr. Shashida.
A very good bowling piece of Shashidhar. And after the completion of first 2 balls in the second over of the second innings, 42 is a victory target. Now 10 is a total. 12 is a total, and 30 run needed to victory for 22 balls. The starting to his ball, the very good right-hand batsman waiting for the ball for Ashok, the striker batsman. Shashidhar to Ashok, very good shot in the deep square leg relation and single runs. Good running between the wicket and rotating the style for that partners. And 1 run added to the scoreboard, directly jumping to 13 on the board. This is the first run of this particular over. He gave only 1 run in 3 balls and got big wicket. That's a wicket, a very important wicket of King Cobra, Dinakar Shetty. Now he watching for this match in his record. So this time lovely one, very good bowling. No connected with bat and ball. The good comeback. 0 wicket, 1-0 in this over. The previous last 4 balls, he gave only 1 run and 2 dot balls and 1 wicket. The really unbelievable performance for that bowler Shashidhar. Shashidhar doing well. So the team like Ashok Blasters Kasaragod, one of the green jersey and sky blue jersey. So that kind of the bowling and very good keeping also Upendra Kasaragod, one of the most senior player in more than 30 years experience in cricket. Upendra Kasaragod in keeping position, and after the completion of first 4 balls, and very good bowling piece of Mr. Shashidhar, 5th spell of the over. Look at that ball, and same mistake, the ball in the leg stump area, and wide calling for the umpire again and again, 2 wides back to back. The same mistakes of that bowler Shashidhar. Also very fielding set, also long on, long off, deep mid wicket, deep square leg and long leg and fine leg, and inside of the 30 yard also square leg relation and keeping and gully side and mid on. That kind of the fielding set like Ashok Blasters. And after the completion of first 5 balls, look at that bowling piece, 0 wicket, 1-0-0, including 2 extra runs and 1 wicket. That's a bowling piece of Mr. Shashidhar. The final delivery of the Shashidhar. Shashidhar to Roy. Roy waiting for the ball, the very good right-hand batsman. And opener, they strip the ball behind the keeper, and Upendra walking behind the ball. And again just for single runs, and over number 2 completed. 2 overs completed and 16 is the total. An exact 8.00 is the current run rate, and lots of 1 wicket. The last and the last 3 overs remaining here. ಕೊನೆಗೆ 3 ಓವರ್ಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ. ಇದೀಗಾಗಲೇ ಜಮೆಯಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಕೇವಲ 16 ಓಟಗಳು, 8.0 ಸರಾಸರಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದಾದರೆ ಆರಂಭಿಕವಾಗಿ 2 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 16 ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನ ಇದೀಗಾಗಲೇ ಸ್ವಂತವಾಗಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ಕಿಂಗ್ ಕೋಬ್ರಾ ತಂಡ ಇನ್ನಿರುವ 18 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗ 42ರ ಗುರಿಯನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದ್ವಿ. ಅದರ ಕೂಡ ಇದೀಗ ನೂತನ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಶೋಕ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ಸ್ ತಂಡದ 3ಯ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಆರಂಭಿಕವಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಶೋಕ್ ರವರ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 3 ಆರಂಭಗೊಂಡ್ರೆ ಆರಂಭಿಕ 1 ಚೆಂಡು ಮಾತ್ರವೇ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ಅಶೋಕ್ ರವರ ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಯ ಚೆಂಡಿನ ಪ್ರಯೋಗ ಸುಂದರ ಗತಿಗೆ ತಂಡಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟಿರುವ ಎಲ್ಲಿ ಅಗಲ ಎಸೆತ ಎಂಬ ನಿಶಾನೆ ಶೈಖ್ ಮಲಳಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಫ್ ಸ್ಟಂಪಿನಿಂದ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿದೆ. ಚೆಂಡು ಎಂಬ ನಿರ್ಣಯದೊಂದಿಗೆ ಇದೀಗಾಗಲೇ ಆರಂಭಿಕವಾಗಿ 1 ಚೆಂಡುಗಳು ಮಾತ್ರವೇ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಿದಂತಹ ಅಶೋಕ್ ತನ್ಕೂಟದ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡಿನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಾಯ್ ಎಂಬ ಸಮರ್ಥನಾದ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ ಚೆಂಡಿ ಮೂಲಕ ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ಗಡಿಯನ್ನ ದಾಟಿಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬೌಂಡ್ರಿ ಸೊಗಸಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ತನ್ನಿನ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಇಟ್ಟು ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನ ಈ ಮೂಲಕ 4 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲಕರ ವೈಫಲ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಈ ಮೂಲಕ ಆರಂಭಿಕವಾಗಿ 2 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಜಮೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದೀಗಾಗಲೇ ಸರಿಸುಮಾರು 21 ಜಮೆಯಾದರೆ 21 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಇನ್ನಿರುವ ಸರಿಸುಮಾರು 16 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ. The last 16 balls, they needed 21 runs to victory. ಬಹಳಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ.
1990 ಕಾಲಘಟ್ಟದಿಂದ 2010 ಕಾಲಘಟ್ಟದವರೆಗೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ರಂಗದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಛಾಪನ್ನು ಮೂಡಿಸಿದಂತಹ ಆಟಗಾರರು. 40 ವರ್ಷಗಳ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ಇದು. ಈ ಮೂಲಕ ಸುಂದರ ಗತಿಗೆ ತನ್ನಡೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟರು. 1 ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಫಲತೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅಶೋಕ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಕಾಸರಗೋಡು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕಿಂಗ್ ಕೋಬ್ರಾ. ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆಯ 2 ತಂಡಗಳ ಜಿದ್ದಾಜಿದ್ದಿನ ಪೈಪೋಟಿ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಜಾವಗಲ್ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಆಡುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಂತಹ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಆಟಗಾರರು. ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಅಶೋಕ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ಸ್, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಕಿಂಗ್ ಕೋಬ್ರಾ. ಬಲವಾದ ವಂದನೆ, ಸೀಮಾರೇಖೆ ಗಡಿಯನ್ನು ದಾಟಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬೌಂಡ್ರಿ 4 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರ ಗತಿಯ ದಂಡಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಪಟ್ಟರು. ಡೀಪ್ ಕವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ತನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ಆಟಗಾರರು. ಆರಂಭಿಕವಾಗಿ 4 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ್ರೆ ಅಶೋಕ್ ರವರ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಎಡೋರ್ವ ದಂಡುಗಾರ ಅಶೋಕ್. ಈ ಮೂಲಕ ಬಲವಾದ ತಂಡನೆ ನೇರವಾಗಿ ಚೆಂಡು ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಸಾಗಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ 1 ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆರಂಭಿಕವಾಗಿ 5 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ್ರೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಜಮೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ 27. 42ರ ಗುರಿಯನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯನ್ನು ಆಡುವಾಗ 27 ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದಾದರೆ 15 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. They need 15 runs to victory in 13 balls. 13 ಚೆಂಡು 15 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೆ ನೇರವಾಗಿ ಗೂಟ ರಕ್ಷಕರ ಹಿಂಭಾಗಕ್ಕೆ ತೆರಳುತ್ತಿರುವಂತಹ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕವಾಗಿ 3 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 3 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದೊಂದಿಗೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಜಮೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ 28 in 3 overs. So after the completion of 3 overs, 28 is the total, and I think 7.34 is the current run rate, and 28 is the total in 2 overs remaining. Again 14 runs needed to victory, like 7.00 is the required run rate per over. In 2 overs they need 14 runs. One of the most historical cricket festival of UNDERARM cricket, above 40 SACLA trophy 2022. Baba Brothers BEKUR and BSC BEKUR conducted one of the historical cricket festival, and since 1990 to 2010 most senior players of UNDERARM cricket in many stadiums, many crickets and many places. They played in cricket in more than 20 to 30 years experience cricket players of UNDERARM cricket. Above 40 cricket tournament, SACLA trophy 2022 day 1. ദയവചെയ്ത പുതുതായി ബോൾ ഇടുന്ന ബൗളർ നിങ്ങളുടെ ജെർസി ഇവിടെ കമന്ററി ബോക്സിലേക്ക് കാണിക്കേണ്ടതാണ്. Because Sashida is a bowler. Now 5th spell of the over. Sashida is second over. Is individual second over progressing here. Look at that. Very good throw. Very good throw. Wonderful throw for that fielder. After the completion of first ball, now the batsman again, Mr. Ashok. Ashok is the right-hand batsman. Sorry, the very good right-hand batsman, Mr. Ashok. Look at that. Very good shot. There is a tight hit shot and backward of the 10-yard circle, and single run added to the scoreboard. Mini Stadium, Uppala Managuri. So after the completion of first 2 balls, now 10th spell of the over, Shashidhar. Look at the shot! A very good shot in the long on relation, and single run added to the scoreboard. Slowly running between the wicket. A very good running between the wicket and rotating the strike. And after the completion of first 3 balls, and scoreboard directly jumping to 31 on the board. And 42 is a victory target. Only 11 run needed to victory for 9 balls. 9 balls remaining and 11 run needed to victory. Ashok Blasters and King Cobra Kasaragod. Oh, look at the shot! The ball in the extra cover side and single runs again. Good comeback. Everyone will be afraid from the side of Ashok Blasters, because only 8 balls remaining and they need only 10 runs. Very crucial match. The bowlers are very important performing. They must be wanted here.
Oh, this time lovely one, wonderful straight hit shot and the single runs. The slowly running between the wicket and this single runs added to the scoreboard. And 5 balls completed. In last 5 balls of Sashidhar, he gave only 5 runs, wonderful single runs, no any extras, no any wickets from Sashidhar in this particular over. His individual second over and the innings both over progressing. Look at that ball and just for single runs again. Oh! The unnecessary throw from the fielder. The not directly throw to the bowler. And over number 4 completed. 4 overs completed and 34 is a total. 8 runs needed to victory. അവസാനത്തെ 6 പന്തിൽ 8 റൺസിന്റെ ലക്ഷ്യമാണ് മത്സരം വിജയിക്കാനുള്ളത്. Ashok Blasters and Ashok Blasters Kasaragod and King Cobra Kumbala. Now last 6 balls, they need only 8 runs to victory. And I think the next match, the tossing ceremony also completed. Masters Wakadi. Sorry, Friends Baikate. Won the 2 and 2 selected by requesting Mr. Captain. Field first. The field first. Friends Baikate and Masters Wakadi. The upcoming tournament. The upcoming match for this particular day 1 SACLA Trophy 2022. And now the bowler Aravind Shetty bowler. The last over of this, Aravind Shetty is the man, is a bowler. Right arm on the wicket, Ashok is about to land. Taken the single, Satish is taken the ball and returned to the bowler. 1 more run, chance for the second. What a good running between the wicket, 2 batsmen. Fantastic running between the wicket, 2 batsmen. Score moves on to 36 on the board. 36 on the board. Score moves on to Aravind Shetty is the man, is a bowling mark. A second over. Aravind Shetty Ashok batting to the leader. ಉತ್ತಮವಾದ ಬೌಲಿಂಗಿನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ವಿಜಯಗೊಳಿಸಲು ಅರವಿಂದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಿಗೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರೈಟ್ ಕಮರ್ ರೌಂಡ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಅಶೋಕ್ once again is just ball outside the leg stump. Umpire declare wide. 1 more score moves on to 37 on the board. 37. 5 delivery left, 5 runs needed. IBS chance of run out. Yes, it is gone. Once again lost the wicket. Ashok is returned to the pavilion. ഈ മത്സരം വിജയിക്കണമെങ്കിൽ 4 പന്തിൽ നിന്ന് 5 റൺസ് നേടണം. Lost the second wicket. Ashok is returned to the pavilion. ഈ മത്സരം വിജയിക്കണമെങ്കിൽ 4 പന്തിൽ നിന്ന് 5 റൺസ് നേടണം. New man jersey number 2 is come to the crease. Ali is the man. അലിയാണ് ക്രീസിലെത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഈ മത്സരം വിജയിക്കണമെങ്കിൽ 4 പന്തിൽ നിന്ന് 5 റൺസ് നേടും. അരവിന്ദ് ഷെട്ടിയാണ് ബോളിംഗ് മാർക്കിലുള്ളത്. Once again is a very good fighting match. Ashok Blasters and King Cobra. The last 4 delivery left. 4 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 5 ಓಟಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ವಿಜಯಗೊಳಿಸಿ ಅರವಿಂದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಬೌಲಿಂಗ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ವಿಕೆಟ್. Once again is all connect up the bat and ball. Shashidhar is a fielder, is a very well taken the Wadag. Umpire declare not out. 1 more score moves on to 39 on the board. 39. 3 പന്തിൽ നിന്ന്
3 പന്തിൽ നിന്ന് എത്ര വേണം? 3 പന്തിൽ നിന്ന് 3 റൺസ് നേടുന്ന ഈ മത്സരം വിജയിക്കണമെങ്കിൽ 100 എസെട്ടുകളും 100 വോട്ടുകളെന്ന് കളിസಬೇಕಾಗಿದೆ. 3 delivery left, 3 runs needed. ಕೊನೆಯ ಓವರ್ನ 3 ಎಸೆತಗಳು ಮಾತ್ರವೇ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಅವಸಾನತೆ 3 ಪಂದ್ ಮಾತ್ರವೇ ಬಾಕಿಯುള്ളൂ. आखिरी 3 गेंद बाकी है. 3 रन चाहिए मैच जीतने के लिए. अरविंद शेट्टिയാണ് ബോളിംഗ് മാർക്കിലുള്ളത്. Arvind, right arm over the wicket. What a good delivery as a fielder is taken the ball and returned to the bowler. One more chance of the second. Yeah, this is gone. What a good return to the bowler. Fielder is no mistake. Well taken and well returned to the bowler. Man, he is returned to the pavilion. Ali is returned to the pavilion. The score moves on to Fuji on the board, winning at the 2 runs needed. 2-1. 2 പന്തിൽ നിന്ന് 2 റൺസ് നേടുന്ന മത്സരം വിജയിക്കണമെങ്കിൽ അവസാനത്തെ 2 പന്ത് മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ. അരവിന്ദ് ഷെട്ടിയാണ് ബോളിംഗ് മാർക്കിലുള്ളത്. ജേഴ്സി നമ്പർ 11 ആണ് ഇപ്പൊ ക്രീസിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. റോയ് ആണ് സ്ട്രൈക്കിലുള്ളത്. ഓപ്പണിംഗ് ബാറ്റ്സ്മാൻ റോയ് ആണ് സ്ട്രൈക്കിലുള്ളത്. നോൺ സ്ട്രൈക്കിലുള്ളത് ജേഴ്സി നമ്പർ 11 മോഹനാണ് നോൺ സ്ട്രൈക്കിലുള്ളത്. അരവിന്ദ് ഷെട്ടി right arm round the wicket once again. That's a good delivery, well taken. Prasad is taken the ball and returned to the bowler. One more. Score moves on to 41 on the board. അവസാനത്തെ 1 പന്തിൽ നിന്ന് 1 റൺസ് നേടണം മാച്ച് വിജയിക്കണമെങ്കിൽ, മത്സരം വിജയിക്കണമെങ്കിൽ. ಕೊನೆಯ 1 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 1 ಓಟುಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಪಂದ್ಯಾಟದ ವಿಜಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ. किंग कोबरा आखिरी 1 गेम में 1 रन चाहिए मैच जीतने के लिए. मैच इज नेक ऑफ नेक. ಸಮಬಲದಲ್ಲಿದೆ ಪಂದ್ಯಾಟ. ಈ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ವಿಜಯಗಳಿಸಲು 1 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 1 ಓಟುಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದು ಸ್ಟಾರ್ ಬೌಲರ್ ಅರವಿಂದ್ ಶೆಟ್ಟಿಯ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತ ಯಾವ ರೀತಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವೀಗ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಈಗ ಕಾಲ್ತುದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಪಂದ್ಯಾಟ ಯಾರು ವಿಜಯಗಳಿಸ್ತಾರೆ, ಕಿಂಗ್ ಕೋಬ್ರಾ ಅಥವಾ ಅಶೋಕ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಕಾಸರಗೋಡು, ಈ ತಂಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊನೆಯ 1 ಎಸೆತಗಳು ಮಾತ್ರವೇ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಆಖರಿ 1 गेंद मैच जीतने के लिए. Once again, is Arvind Shetty is the man, is the bowling mark, is the fielder, set of field, longer, mid down, cover point, extra cover. And the setting the field is very well. And the last man is Mohan, is striking and Roy is not striking, and Arvind Shetty is the man. Bowling mark, right arm out, the last delivery, sweep shot, match is tied. What a fun! Fantastic taken wicket keeper. Wicket keeper is not mistake, taken the catch. Once again is the first match, the SACLA trophy is the first match is a tie. അവസാനത്തെ പന്തിൽ നിന്ന് വിക്കറ്റ് നേടിയിരിക്കുകയാണ് അരവിന്ദ് ഷെട്ടിയുടെ പ്രഗത്ഭമായ ബോളിംഗിലൂടെ മാച്ച് ടൈയായിരിക്കുകയാണ്. ഇതോടുകൂടി മത്സരം 1 പോയിന്റ് കൂടി നേടിയിരിക്കുകയാണ് കിങ് കോബ്ര, അതുപോലെ തന്നെ അശോക് ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് കാസർഗോഡ്. അടുത്ത മത്സരം മാസ്റ്റേഴ്സ് വക്കാരി, അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രണ്ട്സ് ബൈക്കട്ടെ, അതുപോലെ തന്നെ മാസ്റ്റേഴ്സ് വക്കാരി. അടുത്ത മത്സരം എത്രയും പെട്ടെന്ന് മത്സരിക്കണമെന്ന് അറിയിക്കുന്നു. Location mission now shot for the next commentary box.
So please wait. Saji. So okay, another match. Friends bike it takes on Master Kadi, Sunil and Charan. That is the openers for side of Masters Kadi. In the bowling mark we can see Sajid, the very first bowler for side of Friends bike. They started with a dot ball, so he's ready to deliver second time around the wicket. Sajid. And rolling the right takes the ball towards the square leg region, short square leg region, and getting off the mark. So that is a welcome score for the batting side team like Masters Urkadi. So Sajid ready to deliver the third one to Charan, and this time nice effort we've seen from the wicket keeper. So one more single taken there. With the help of that single, the batsman like Charan opens his account. And I would like to call Ali from King Cobra. Please be in the presentation area for collecting the man of the match award for the previous game. Ali from King Cobra. And that is a big one towards the deep position. And it goes all the way into the crowds. Beautiful shot from the player, but there was a little problem from the wind. The wind was blowing opposite of the cricket ball, but the power from the batsman put the ball safe outside the ground. So that is a beautiful maximum from the player. Here comes Sajid. Around the wicket to Sunil. And nice the players this time into the hands of the bowler. Dot ball considered there, 5 balls completed. So really good start from the batting side. 8 runs came from the first 5 balls. So really the good start from the openers, Sunil and Charan. This time, wicket keeper goes for the appeal. What's going on there? Chance for the run out. What's going on there? There was chance for the run out with the non-strikers, and still appeals are going on. Umpire is moving, maybe not interested.
Was completed. 11 runs on the board. So Siddiq over the wicket. Fourth time in this action to the right-handed batsman. And goes for the big one, up and over, miles up in the field underneath it, but it goes all the way into the crowds. That is a magnificent shot from the player. Sunil, a second six of the innings. This time nicely placed towards the offside region. That is a beauty. Scorecard is jumping. It moves to 17 runs on the board. So now Siddiq gets the punishment here. 1-6 we seen in the very first over. Here comes Siddiq. And this time thick edge from the bat. It gone towards the gully region. Little fumble from the fielder. It's not an easier job. One more to go. It's not an easier job for the players. Experience playing the underarm crickets. 2 overs completed. 19 runs on the board. 19 runs for the loss of 1 wicket. That is the batting condition. 2 over അവസാനിച്ചപ്പോൾ സ്കോർ കാർഡിൽ 19. So captain brings Sajid again into the attack to bowl the third over. Is bowling the second over spell. Bowling around the wicket, crossing the umpire to the right-handed batsman. Slow delivery, kicks the ball towards the square leg region. Little slow outfield. We can see here in this ground, the big grassy area in the deep square leg region that makes batsman to set with a single. So Mohan was the player just rotating the strike. So Sajida is ready to deliver the second one to Sunil. And this time looking for the reverse shot. Connection was not perfect. So really the batting side is just rotating the strike in each and every ball. So getting the singles, they don't want to get the dot balls here. Limited 5 over matches going on. Here comes Sajid. And this time bouncing delivery. That was a good line from the bowler. See, Sunil was just indicating he knows that was the advantage delivery. We can find the big gaps in the offside region. That was a really advantage for the batsman, but he fails to contact with the bat. Here comes Sajida. And nicely played this time. Finds the gap in the deep region. Fielder rushing and puts hands on it. Nicely stopped by the fielder. Meanwhile, batsman completing the couple of runs. 4 balls completed here. So far, 2 bowlers bowling for side of Friends by Kete. And this time nicely placed to the square leg region. Good thinking by the player like Mohan after losing the wicket of Charan in the very first over. Mohan joins with Sunil just rotating the strike. You know Sunil is very much able to get the maximums here. We already seen in the innings 2 sixes so far. So that makes Mohan to rotate the strikes and the partner into the strike region. Here comes Sajid with the final one. Rolling. Wow, takes the ball this time. That was a punching knock into the crowd. Beauty number 3. Over number 2. Over number 3 comes to an end. Your scorecard is jumping to 29 runs for the loss of 1 wicket. So 3 overs completed. 29 runs for the loss of 1 wicket. So it's great innings from Sunil. So we can see less numbers of crowds here today because of it's a somewhat working days for some cricket lovers. So we are expecting much numbers of crowds in the coming days here. That means tomorrow the big Sunday, Super Sunday. So many entertaining matches had to come up. The tournament conducted by BSC BEKUR and Baba Brothers playing for SACLA Trophy 2022. 3 overs completed, 29 runs on the board, 29 runs. So now the captain brings the new bowler, the man with the jersey number 12, Ari Prasada.
taking the right time over the wicket to Mohan. Slower delivery this time. Wicket keeper was not able to get it. So just rotating the strike, getting the single in the very first ball. Here comes Hari Prasad. And this time, good work from the wicket keeper. But umpire is not interested this time. No mistake from the wicket keeper. He just collected the cricket ball and breaks the stump. But umpire's batsman was well inside the crease. The bowlers are trying to get the wicket of Sunil. They know how dangerous this man is. Getting 3 sixes so far for his side. Now 2 balls completed from Hari Prasad. Is ready to deliver the third one now. And slower delivery finds a gap. But no, there was a field. Good collection in the deep region, not allowing the batsman to cross for the second. So there was a big gap between the fielders who were standing in the deep sky-like region in the mid-wicket region, but fielders rushing and just allowing the batsman to get a single here. 3 balls completed, 31 runs. So that is the present batting condition of team like Urkadi. And this time dot ball. Sunil don't want the dot deliveries there. Standing in the non-strike region, just indicating the striker they don't want the dot balls here. They have to get singles at least in each and every balls to put the decent total. Looks like a big shot towards the offside region, up and over this time into the crowds. Out of the park, that is a beautiful stroke, lofted into the outside region. We can find the fielder, but it gone all the above the fielder into the maximum. So umpire finally rising the board, and that is the 6 number 4 of the innings from side of Master Zurkari. Scorecard is jumping, it moves to 37. Five balls completed. And clicks the ball this time towards the mid-wicket region. And they qualify for the second. Throw was not perfect. Slower delivery. Keeper was not interested or not happy. Running to the wrong hand. Over completed. 4 overs completed. Scorecard remains 40 runs on the board. ഇവിടെ 4 ഓവർ അവസാനിച്ചപ്പോൾ സ്കോർ കാർഡിൽ 40 റൺസ് 1 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ. 4 overs completed, 40 runs for the loss of 1 wicket. Sunila, Mohan, Anifa. That is the action we are witnessing here. Anif in the bowling area, slower delivery, playing down the track, and it goes all the way. That is another one beauty. Crowds may be very much happy. All the cricket lovers coming from the long regions to see such a fabulous innings. They want the big hits. They want the big shots here. Sunil really entertaining you in the Mannangiri Stadium. So that is the 4th six of Sunil. 5th six of the innings. Really masters Riccardi is attacking the bowlers. Here comes the bowler. Slower again and playing down the track. This time completely missed. Oh, wicket keeper. Another wicket down. The big man Sunil departed. So this time slower delivery really works. Hanif was not under pressure. Considered 6 in the very first ball. And wicket in the ball number 2. So the big man Sunil walking back to the pavilion. Really entertaining performance. We've seen from the opener from side of Masters Urkadi. 30 runs scored by the Sunil from 15 deliveries. Really great, fabulous, entertaining innings in such an age. The tournament playing for above 40 years. We can see such a fabulous, entertaining innings from young cricketers in the regular UNDERARM matches, but really interesting one to see from the player like Sunil playing above 40 cricket, scored 30 runs from 15 balls. So potential cricket this time up in the air into the answer of the field. Sunil departed and the newcomer Prasad Shetty departed without scoring a single run. So really Anif not allowing the batting side to score the decent total in the final over. Started with a 6 wicket and wicket. Now Hanif is on a hat-trick.
So in the previous game, we've seen Ali got a chance to get the entry wicket here. He missed it. Yeah, Hanif nicely delivered this time. Nicely placed into the deep position. Good stop done by the fielder Sajid. It was going very quickly towards the deep position. Nice shot from the player, but batting side have to set with a couple of runs. 4 balls completed here. And down the track, wicketkeeper had the chance for the stump out and widen, so that will be the extra again. 49 runs on the board. 4 balls completed. Here comes Hanif. Slow delivery and completely missed this time. That was good line from the player. So really the final bowler treating the batsman with a slower delivery. Slowest. Here comes. Nicely played this time towards the outside region. Finds the gap. It goes all the way into the boundary. So beautiful way to end the innings number 1. Scorecard is jumping to 53 runs on the board. So 54 runs. 54 runs will be the victory target for Friends by Kete against Masters Orkadi. So for the upcoming innings, we have one of the experienced UNDERARM commentator, Mr. Nasir Kanyana. So 54 runs will be the victory target for Friends by Kete in the limited 5 over. Let's wait. Who will open for the batting side? Who will be the 5 bowlers for Masters Orkadi? Hall. Hall. ബാറ്റ്സ്മാൻ ദയവച്ചിട്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് ഇറങ്ങേണ്ടതാണ്. സമയം വളരെ കുറവുള്ളത് കൊണ്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് പ്രിയപ്പെട്ട ബാറ്റ്സ്മാൻമാർ. വെള്ളം വേണം, വെള്ളം. കമ്മിറ്റി രണ്ടാമത്തെ ഇന്നിംഗ്സിന്റെ 2 ഓവർ അവസാനിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ സൈനപ്പ് പുസ്തകം അടക്കുന്നതാണ്. അതിനു മുമ്പായി സൈനപ്പ് നടത്തേണ്ടതാണെന്ന് അറിയിക്കുന്നു. So Prasad Shetty is the bowler, and 54 is a victory target in SACLA Trophy 2022. The main umpire Shaki Upala and leg umpire, I think Mr. Sheikh Malali, the most famous umpires in Dakshina Karnataka and Kasaragod district in all of the cricket like UNDERARM and UNDERARM crickets. So now starting for the first innings, second innings, first over, first delivery, no connected with bat and ball to perfectly. The very good matches between Masters Orkadi and as well as Friends by. And the appeal to the umpire, but not any positive results. And test for singles, and again retired for the couple of runs. The good running between the wicket and rotating to strike the partnership of Siddiq and another one, that is Hanif.
Hanif and Siddiq is a partnership will progressing here. So after the completion of first 2 balls and score showing on just for 2 runs. And last 4 deliveries remaining here. The batsman waiting for the ball. The very good right-hand batsman, Mr. Siddiq. So after the completion of first 3 balls and score showing on just for 2 runs only. Oh, this is a lovely one. Very good shot in the long mid-off region and a single runs added to the scoreboard. And rotating the strike now. Hanif is a batsman. So after the completion of first 4 balls from Prasad Shetty. Now 5th spell of the over. Prasad to Hanif. They started to his ball. This individual first over and innings first over progressing here. 5th spell of the over. Look at that, Jivashi. Oh, brilliant bowling piece and very good keeping also. And after the completion of first 5 balls of Prasad, now Baikati as well as Walkadi. Look at that ball, clean bowled. The wicket number 1, the walking back to the pavilion. Hanif walking back to the pavilion. The first wicket of the innings. To covering to his place to the new batsman, jersey number 02. I think Mr. Ratnakar. Ratnakar is a one-run player from Friends of Baikati. So after the completion of first over, score showing on only for 3 runs and 54 is a victory target and 51 run needed to victory for 24 balls. The Stuman difficult to touch the goal, exacted 13.00. 13.00 is the current required run rate per over. Only 0 is the current run rate. സെനപ്പിന് ഒരൊറ്റ ഓവർ മാത്രമാണ് ഇവിടെ ബാക്കിയുള്ളത്. Sadananda is a bowler. Now first delivery of the second over for the second innings. Now Hanif is a batsman. They stick the ball in the mid-on side and slowly running between the wicket and single runs added to the scoreboard. The good comeback here in bowling section from Masters Wakadi. 54 is a victory target in total. Now only for now the one-run player in the striking area is the left-hand batsman and more than 25 plus years experience in underarm cricket. The new batsman is playing. Ratnakar is a batsman. First delivery. Oh, look at that ball. And just put the off temporary and wide calling for the umpire in first extra run in this innings. You know what? The only one delivery completed here. The ball in the square leg relation and slowly running between the wicket and single runs added to the scoreboard. For that area, styling for that. And now Siddiq is opener. Waiting for the ball. The right-hand batsman and left-hand batsman in partnership now. They steep the fall for the reverse shot behind the keeper and slowly running between the wicket and there is a danger position, but both partners touch to crease and they will be safe there. And after the completion of first 3 balls of the second over and scoreboard showing on slowly for 8 runs is a total. Now Siddiq and Ratnakar is a partnership will be progressing here after the completion of 3 balls. Look at that slowly here. They slowly touch the goal in the leg slip side and the single runs added to the scoreboard. And after the completion of first 4 balls, look at that here, 3 singles and 1 double and 1 extra run. That is runs in this particular over. Look at that, Ratnakar is the left-hand batsman, ball in the square leg relation and slowly running between the wicket and single runs completed. The biggest score for 54 is a victory target in 30 balls for this innings. But now 1.5 overs completed and score showing on just for 10 runs and 44 are needed to victory for 19 balls. Look at that for the leg slip side. Now field is up, and finally that is a boundary. The biggest shot for the reverse slip like every Villiers.
That kind of the shot. The brilliant one for the reverse tip in the long leg religion. Whoever number 2 completed. And scorer directly jumping to 14 on the board. 14 is the total. And last 18 balls remaining. They need 30 runs. Sorry, 40 runs needed to victory. The last 18 balls, they need 40 runs to victory. This is very difficult to touch the goal now. Only 2 overs completed and 14 is a total like a 7.00 is the current run rate. In this over total 11 runs and previous over only 3 runs. In first of all, in first over 3.0 current run rate, and after that run rate will be jumping 7.00 is the current run rate. And the last 3 overs remaining, 40 run needed to victory in 18 balls. So 13.33 is a required run rate per over. Now the new bowler, Sunil, captain, is most responsible to play this match. This time lovely one for Ratnakar! Oh! Wow! That's a brilliant shot in the long off religion. And drop the catch in the long off religion. And after the completion of a first ball, the wonderful shot in the long off. The little mistakes in more than 3 to 4 missed a destination to the boundary line. The shot is not perfected to the bat from Ratnakar. So after the completion of first ball, now second spell of the over. Look at that ball. Look at that ball. The ball in the straight shot, straight drive, straight hit behind the keeper. So after the completion of the 2 deliveries, score was to just 17 runs. 54 is the total victory target. Now again one for 37 runs to victory for 16 balls. I already told when started this particular over, 13.33 is a required run rate. Now once again, really good one, really good one. Now connected with bat and ball. Ball inside the crease. And that's dot ball calling for the umpire. So after the completion of first 3 balls, now covering to his place to the new batsman, the 5th batsman of our brothers and results, Kumar Kulashekar, the umpire of international from Sri Lanka. That kind of the experience-based umpire, Sheikh Malali, is a mine umpire. Look at that, very good one. The ball behind the keeper. So that's for the bias calling for the umpire. No any runs for the bat, no any runs to the individual run. Of the magical wicket of brothers Boykate. Why do they walking back to the pavilion? The brilliant shot in the long on religion. And very good catch also, like a Kapan Kamal from Indian Premier League. That kind of the catch. The win and got the catch. The brilliant one, and after the completion of a first delivery of the final over and 5 balls remaining, they need 33 runs to victory here. Definitely one maximums, otherwise not chance to touch the goal. 33 runs needed to victory. Look at that ball, look at that ball. Very good bowling piece of Mr. Sudhakar. Sudhakar Shetty is Sudhi Krishna. Sudhi Krishna is a bowler. Sudhi Krishna to Ratnakar. Look at that, very good bowling piece. Not connected with bat and ball. And after the completion of 3 balls, no any runs. We got only 1 wicket and 0 runs in last previous 3 balls. Now 4th spell of the over, Sudhir. Oh, look at that ball. What a magical bowling. The most fastest ball, like a 120 kph speed limit for that ball. Like a Bretley from Australia. That kind of the ball from Sudhir. Oh, this year slowly, no runs. The chances again here, another wicket. After the completion of 5 balls, he chanced chance into the maiden over. In 5 balls, no any runs, and 1 run out and 1 wicket. And after the completion of 5 balls, a score just standing in 21 runs and 33 runs needed in 1 ball. That's impossible to touch the goal. Now wait and see. One of the nether most senior player, Ratnakar, is waiting for the ball in striking area in 5 balls. Completely beaten for that 4 balls. Completely beaten that ball for Ratnakar. Final delivery of the over.
Oh, look at that. The maiden over here. The first of all for the maiden over for SACLA trophy. That credit goes to Sudhir Krishna. Congratulations and congratulations to Masters Workadi. Won the match. And thank you so much to Brothers BEKUR. Anyway, ricocheting to the next commentary box, Mr. Abdul Rahman BEKUR. I would like to call the players on side of Deja Kasaragod and BSC BEKUR. Please report here for the sign-up process. അടുത്ത മത്സരിക്കേണ്ട ടീമുകൾ BSC BEKUR, ദേജാവു, കാസർഗോഡ്. ഇരു ടീമിന്റെ എല്ലാ കളിക്കാരും എത്രയും പെട്ടെന്ന് സൈനപ്പ് പൂർത്തീകരിക്കുക. So, okay, ready? So Farooq and Ramesh opens with side of team like Fire Blasters. So in the bowling area, Khalid will start the very first over, taking the guard right arm over the wicket and nicely delivered. This time is collection from the wicket keeper. Meanwhile, batsman is rushing for the single, wide +1. So in the extra, the team scorecard opens for the Fire Blasters. MCC Uppala takes on Fire Blasters.
So Khalida is ready to deliver the very first legal delivery to the right-handed batsman Ramesh. Looking for the reverse shot, completely missed by the batsman. So in the striking region, we can see Mr. Ramesh, known as Ramunji in the Underarm cricket, having the experience. The cricket lovers may be remembering the name like Ramunji in the Underarm cricket. So really a specialist in the 7th and 9th cricket game, who is able to sweep the ball, getting the singles we can see in the 7th and 9th cricket tournament, which we've seen in for so many years in the Underarm cricket. So finally Ramesh, who is known as Ramunji in the Underarm cricket, getting the chance to play in the above 40 years World Cricket Tournament conducted by BSC BEKUR and Baba Brothers, playing for SACLA Trophy 2022. So each and every players who is participating is very much happy here. They are discussing the World Age cricket matches they played in the Underarm grounds. So really they may be thanking the organizer for conducting such a successful tournament in the history of Underarm cricket. So Ramunji just sweeps the ball and he knows it goes quick to the boundary region. So good start for the another opener for side of Fire Blasters. So in the presentation area, we have Mr. Farvez, the senior most member in the presentation area, with the man of the match memento. And I would like to call Mr. Sunil from Masters Orkadi. Please be in the presentation area for collecting the man of the match award for the previous game. 4 balls completed. 7 runs on the board. 4 balls completed. Dot ball. Okay, fine. 5 balls completed. Scorecard remains 7 runs on the board. So Khalida is ready to deliver the final one. In the presentation area, we have Farvez. And I would like to call Mr. Sunil from Masters Orkadi. Please be here for collecting the man of the match award. കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിലെ മികച്ച താരത്തിനുള്ള പുരസ്കാരം ഏറ്റുവാങ്ങുന്നതിനായി സുനിൽ മാസ്റ്റേഴ്സ് ഓർക്കാഡിയെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. പ്രസന്റേഷൻ വേദിയിൽ ഫർവേസ്. So back to the game. Of the completion of the very first over, scorecard remains 8 runs without loss of wicket. സിദ്ദീഖ് ലോഗി എവിടെയുണ്ടെങ്കിലും വേദിയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുക. സിദ്ദീഖ് ലോഗി. So second over in progress. Here comes a new bowler, Muzambil Paivalige, the experienced Underarm cricketer. Alex will make sure up and over this time. Above the field and into the crowds. Beautiful strike from the bowler. See the way he is welcoming the new bowler, just connecting in the very first ball, putting the complete pressure to bowl the remaining deliveries. Quality thinking by the player like Mr. Farooq for side of Fire Blasters. And this time into the ends of the field in the mid-wicket region. So soon after getting the boundary, just rotating the strike, sending the partner Ramunji back to the attacker, back to the strike region. See, Muzambil knows that he have to protect the sweep shot. So Ramunji was known as the sweep specialist in the Underarm cricket. And this time, swinging the bat, but ball going away from the wide region into the legal area. So 3 balls completed. That will be considered as a dot ball here. So 1 boundary so far in the innings of Ramunji. 1 maximum in the name of Mr. Farooq. Here comes Muzambil. And this time is looking for the reverse shot into the hands of the wicket keeper. 1 in the form of Bice. 4 balls completed here. Good comeback done by the bowler. 2 more to go. Started with a beautiful maximum from the player like Mr. Farooq. And trying to do a comeback by the bowler like Muzambil. 1 bounce, deliver thick edge from the bat into the hands of short third man position. We can see Razak Bapai 30, I think, standing in the short third man position behind the wicket keeper, fails to collect.
5 balls completed here. 17 runs on the board. Here comes Musambila. Rolling. Wow, this time there was something sound from the bat. And over number 2 comes to an end. 17 without loss of wicket. So in this game, we can see MCC Uppala on the fielding side, Fire Blasters on the batting side. So real the batting side had a blasting start. 17 runs came from the first 2 overs. So crowds, we can see the less numbers today because of working day. We hope the big numbers of crowds will be here in the Super Sunday, the upcoming day here at the Mananguzi Stadium for witnessing 40 above cricket tournament. Really interesting one. Very much happy each and every players. We can see big smiling faces. So they are getting the opportunity to play once again in the cricket ground. Bowler name? Sadiq. So 2 overs completed. Here captain brings Sadiq in the middle to bowl the 3rd over, taking the guard right arm over the wicket to the right-hander batsman Farooq. And bouncing delivery nicely played this time towards observation and into the end of the field. Excellent collection. Starting the long off region. So really quick collection from the fielder. That makes the end of the wicket number 1. Farooq, the opener, walks back to the pavilion. Still Ikanda. Believe that what happened, he was trying to loft towards the long off region, but a shot was going flat. It was not going above the fielder. Nicely into the hands of the fielder. Wicket number 1 down. Farooq departed. Scorecard still remains 17 runs for the loss of 1 wicket. So Sadika started with the wicket. So good start for the over number 3. Is ready to deliver to the right-hand batsman Ramanji. Nicely played by the batsman towards the short fine leg region. So outfield is not quicker, it's a slow outfield we can see in the square leg region for that right-hand batsman. So good thinking by Ramanji was trying to sweep each and every ball so he can find the field in the outside region. So he's trying to change the direction of the shot, just pushing into the onside region, running for the single. Because of that slow outfield, we can see big grassy in that area. That makes batsmen to just comfort with a single. So anyway, good piece of bowling done by the bowler Sadiq. Started with a wicket, single. Here comes the ball number 3. And nicely played. This time finds a gap. It goes like a bullet into the boundary rope. That is a beautiful one from the new player facing the very first ball of the tournament and just pushing the ball into the boundary rope. And that is the beauty again from the batsman. Scorecard is jumping. It moves to 22 runs on the board. So 3 balls completed here. What a start from the newcomer Marshall from side of Fire Blasters. He comes Sadika. And slow delivery this time. What kind of shot? Umpire turns and widens. So that was going towards the leg stick region. He was looking for the across shot, I think, but the ball was not hitting anyway. Ball going towards the wide region. So white conceded. Now Sadiq may be having some pressure. We see the boundary from the batsman, the newcomer. Here comes Sadiq. And slower delivery this time. What's going on there? They are wanting balls moving into the boundary region. What's going on? Still umpire raising the finger. Hit wicket. The cricket bat hits the sticks there. So really a big scene we've seen there. Wicket number 2 down. This time Marshall departed for side of Fire Blasters. Of the completion of 2.4 overs, scorecard remains 23 runs for the loss of 2 wickets.
4 balls completed. After losing the wicket of Mr. Marshall, here comes the new player Vinod. Batting at number 4 for Saida Fire Blasters. Really good comeback done by the bowler Sadiq. So he's just setting the fielders. So the new batsman entering into the crease. That makes captain to make a slight change in the field position. So Razak starting the gilly region, Muzammil at the mid off region. So Sadiq is ready to deliver the 5th one over the wicket. Here comes Sadiq. Nicely delivered. That is a beauty, but this time wrong line. A little mistake we can find, but it was going very closer to the wide region. So umpire turns and widens both and so that will be the one more runs on the board. 24. Here comes Sadiq again. And nicely delivered this time. Umpire turns and widens again. Consecutive extra 0. So often known as exercise for the official main umpire. Back to back extra indication. Here comes Sadiq. And this time bouncing delivery and finds a great line. So this is what the bowler targeting is, bowling towards the offside region for the newcomer. Twice he made the mistake and now he finds a great line on the track, not allowing the batsman to cross. So Ramun is rushing and guiding something for the newcomer. 3rd over in progress. The match will be played 5 overs, limited 5 overs, so they have to get the decent total on the board. Here comes Sadiq. A full delivery, this time bouncing and over number 3 comes to an end. Scorecard remains 25 runs for the loss of 2 wickets. So great cricket tournament we are witnessing here in the Manguji Stadium. The historical cricket ground here in the Uppala area brings another historical tournament in the UNDERARM cricket, playing for SACLA Trophy 2022. The players participating in the tournament will be the Okay, welcome back to the match between Fire Blasters versus MCC Uppala. 3 overs completed, 25 runs for the loss of 2 wickets. Excuse me, bowler name please.
So fourth over in progress. Kadir. Here comes over the wicket. And full toss delivery this time towards the wicket keeper. He was not able to get it wide, +1. So still we can see Ramani, the opener for side of Fire Blasters, trying to get scores, trying to contribute the good run for the team to put the decent total on the board. Here comes Kadir Adura and clicks the ball, this time up in the air. And the batsman completes the single. So rotating the strike, Mr. Vinod gets off the mark with a single. 28 runs on the board. So again Kadir. And full delivery, looks a big shot. Ramanya strikes hard this time into the hands of the fielder. That was not hitting the good part of the cricket bat. So the wicket number 2 down. Make a part, wicket number 3 down for Fire Blasters. Ramani, the opener, walks back to the pavilion. That was a full toss advantage delivery. He was not able to get it perfectly, hitting the top edge of the bat and it moving into the deep region. And wicket number 3 down for Fire Blasters. Scorecard still remains 28 runs on the board. After losing the wicket of the opener Ramani, here comes a new player, Mr. Rafiq, with the jersey number 03 for the side of Fire Blasters. Fourth over in progress. They are really in the decent position. 28 runs for the loss of 3 wickets. So that will be the good total, especially in the afternoon session here in the Mananguji Stadium. So slight discussion going between the captain from side of MCC Uppala and the official umpires. Oh, the umpire is checking the cricket bat. Something different we can find out. So discussion going. Muzambil was asking something to the umpire. Umpire is checking the cricket bat of the newcomer. So really the great picture we can see from the Mananguji Stadium. So finally they are happy with the new bat. So anyway, Captain Muzambil is cleared his problem there with the umpires, and now the batsmen having the discussion. Mr. Rafiq and Vinod, that is a batting combination. The bowling marker, you can find Kadir, who started with a wide +1, a single wicket. 2 balls completed so far. He's ready to deliver the third one around the wicket to the right-handed new batsman. Looks at the big shot up in the air. This time field underneath it, and it goes all the way to the crowds. This is why Muzambil checked the cricket bat before this delivery. I think so. The bat is looking reddish. The danger color, reddish cricket bat holding by the batsman like Mr. Rafiq, and gets a 6 in the very first ball. Here comes Kadir around the wicket to the danger man. And Lucy delivery, this time connection was not perfect. Ball moving into the short fine leg region. They are just getting the singles. 4 balls completed. Scorecard remains on 35 runs on the board. So the team like Fire Blasters is moving into the decent position in the limited 5-over matches. 4th over in progress. 1 more over yet to come. Full toss, Bema, lollipop, advantage, delivery, wicket keeper was confused here. The striker was running to the danger end, but wicket keeper was not able to throw into the non-strike region. Ball heading the west of the batsman. He was appealing for the illegal delivery, but umpire says that was illegal. Here comes the bowler, Kadir again. And rolling, Alex with a big shot up and over into the crowds. Maximum number 2. 4 overs completed. Scorecard is jumping to 42 runs on the board. We were talking about the cricket bat.
Holding by the new player, Mr. Rafiq, first side of Fire Blasters, 2 sixes so far. 4 overs completed. Really great comeback done by the batsman. So still discussion going. Mozambique is not happy. The cricket bat is really the big discussion here. Umpire says the batsman can play with the same bat. So the batsman like Mr. Rafiq just enjoying the innings. 42 runs, 42. So captain brings Sadiq to bowl the second over of spell, the final over of the innings. 2 maximums we've seen in the previous over. The team like MCC Uppala leading under the captaincy of Mozambique. Paivalike still is playing for the team like CSC Paivalike in the regular UNDERARM cricket, joining as a captain, coming as a captain for MCC Uppala in the above 40 years cricket tournament. Here comes Sadiq. Full toss delivery this time and confusion. What's going on there? Wicketkeeper failed at the moment, but non-striker was not interested for the run. The finally Vinod departed in the form of run out. So not a bad thinking by the striker. Vinod, he was trying to send Mr. Rafiq into the strike region. He knows Rafiq, who hit the 2 maximum in the previous over, having the ability, holding the weapon for his team. So that made Vinod to try to rotate the strike, but unfortunately Rafiq was not interested to move into the strike region. That made end of another wicket. Vinod departed in the form of run out. So good start from the bowler Sadiq, who bowled the perfect 1 over before in the innings, is brought back into the bowling area to bowl the final over. Started with the run out. He is ready to deliver the second one. And Lucy delivery this time towards the wide region. So that will be the first extra of the final over. Sadiq to the right hand batsman. And this time, little fumble from the wicketkeeper, and that is a really good presence of mind from the wicketkeeper there. The big man departed in the form of run out. The player like Rafiq was not interested to take the strike in the very first ball. They had a chance. Wicketkeeper had a little fumble in the very first delivery. Vinod was trying to rotate the strike, but Rafiq was not interested. Now Rafiq is trying to move into the strike region, but unfortunately wicketkeeper heading into the sticks, goes for the appeal. Umpire raising his finger. That makes end of another wicket. The big man walks back to the pavilion in the form of run out. 2 balls completed. Scorecard remains on 43 for the loss of 5 wickets. 2 back-to-back run outs here in the over number 5. Now Rafiq is sitting back in the dugout. No red cricket bat, no tension for the bowlers. They are having the complete power to end the innings here. 5 wicket down here. Here comes Sadiq. And towards the wide region, extras. 44 runs on the board. So this will be the good total, especially in the afternoon session. We can't find any wind blowing here in the Mandangisi Stadium. Alex, a big shot up and over this time. That is a bye-bye one from the newcomer. Another maximum. See the connection from the player. I was talking about the stamina of the players playing above 40 years in the cricket game. They may having the experience, but the power, the energy will be the problems for the players, but that doesn't matter. Once the performer will be always be the performer. This time goes up and over into the crowds again. 2 in 2. 56 runs on the board. 2 more to go. 4 balls completed here. Udaya is a man. Can he make it 3 in 3? Crowds are very much waiting eagerly. Here comes Sadiq to there, pitching one this time. Timing was
Not perfect. They want the second. And they get the second. What a running between the wicket. 14 runs came from 3 balls. So still Udaya is on the strike region. Final one from Sadiq, who bowled perfectly so far. Failed in this over. 2 consecutive sixes couples. Here comes the ball number 6 over the wicket. And Luzivan. This time nicely played into the mid-on region, running for a single, calling for the second. And they complete a couple of runs. What a way to end the innings here. 16 runs are scored from last 4 balls. That made the big change in the board here. Scorecard is jumping and it moved to 60 runs on the board. 61 runs will be the victory target for the team like MCC Uppala. So really the big task in front of the batsman. Let's wait and see which batsman So let's wait and see who will open for side of MCC Uppala, the team leading under the captaincy of Muzambil Paivalike. So let's wait and see who will bowl the 5 overs for side of Fire Blasters. 61 runs from limited 5 overs. And I would like to call Mr. Nasir Kanyana once again in the dais for upcoming innings. Hull. Thank you, Naushad Burak. Now the match is between in the second innings. Fire Blasters and MCC Uppala. MCC Uppala and the 5 Blasters between the match in the second innings. And the 30 balls, they need 61 runs. 61 runs to victory, like 12.20 is required run rate per over to catch the goal for this particular innings. MCC Uppala and 5 Blasters Kasaragod. ഈ മത്സരം വിജയിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി 30 പന്തിൽ 61 റൺസിന്റെ ലക്ഷ്യമാണ് ആവശ്യമുള്ളത്. ഒരു വശത്ത് MCC ഉപ്പളയാണെങ്കിൽ മറുവശത്ത് ഫയർ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് കാസർഗോഡ്. രണ്ട് ടീമുകളുടെ ആദ്യത്തെ ഇന്നിംഗ്സിന് ശേഷം രണ്ടാമത്തെ ഇന്നിംഗ്സ് ഇവിടെ ആരംഭിക്കുകയാണ്. സ്ട്രൈക്കിംഗ് വിഭാഗത്തിൽ ജാവീദ് ആണെങ്കിൽ നോൺ സ്ട്രൈക്കിംഗ് വിഭാഗത്തിൽ മുസമ്മിൽ.
09 എത്ര ആറര Okay, well, 61 is a victory target. Now, first of all, the first delivery, the ball in the long on release and slowly running between the wicket and account is open here for this for 1 run and the necessary throw and this was single runs added to the scoreboard. For slowly the matches between MCC Uppala as well as Fire Blasters Kasaragod. Now one delivery completed in the first over. 61 is the biggest target. Look at that ball, look at that ball. They appeal to the umpire, but not any positive results from the seat of the umpire. And leg by scoring for the umpire, Sakir Uppala. Sakir Uppala is one of the most famous and the most popular and a very good experienced umpire in UNDERARM cricket, Sakir Uppala. So after the completion of the first 2 balls, in first of all single, and after that leg by and we have the tight ball. No field is that. That's a brilliant shot. The very good high-up shot in here. The one shot and scored directly in the deep point side and the boundary. And 4 runs added to the scoreboard. And after the so 6 on the board, sorry. That's a brilliant maximum. The deep point side and after the completion of first 3 balls, scored directly jumping to 8 on the board. And the last 3 more delivery to go here. The very good powerful batsman. I think Mr. Javid is a batsman. 61 is the biggest victory target. Look at that very good bowling. And slowly running between the wicket and single runs added to the scoreboard. And after the completion of first 0.4 balls, score directly jumping to 9 on the board. 61 is a victory target and 52 run needed to victory. 52 run needed for 26 balls. Now 5th spell of the over. Wait and see, Praveen. The really good one, no windless here. Once again in the deep extra cover, that is a boundary. The second boundary of the innings. The biggest high-level shot here. 4 runs added to the scoreboard. Scoreboard directly jumping to 13 on the board. What a good comeback here. Very good batting here. Muzammil. In previous match, he got a man of the match. Muzammil from MCC Uppala. Now final delivery of the over. The ball in the long on release and single runs. Tejavu Kasaragod in the yellow member Maram. They have the photo section. Tejavu Kasaragod in the yellow member Maram. They have the commentary box in the Totata Ketisha. അതുപോലെ തന്നെ തേജാബു കാസർഗോഡിന്റെ ക്യാപ്റ്റൻ ടോസിംഗിന് വേണ്ടി എത്തിച്ചേരേണ്ടതാണെന്ന് അറിയിക്കുന്നു. തേജാബു കാസർഗോഡ് requesting the captain for the tossing ceremony and all the members please started for the second over. Good brilliant bowling piece in first of all. That's a dot ball for the new bowler. Requesting to the bowler, please show your jersey number. Mr. Bowler. Excuse me. Okay.
തേജാവ കാസർഗോഡിന്റെ സൈനപ്പ് ചെയ്യാത്ത 2 ആൾക്കാരുണ്ട്. അവർ എത്രയും പെട്ടെന്ന് സൈനപ്പ് ചെയ്യുക. 1 ഓവർ മാത്രമാണ് അവസരമുള്ളത്. 0 മാർഷലും സോറി എത്ര ജേഴ്സി നമ്പർ 0802 2 ആൾക്കാർ സൈൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. Well, very good. Leadership shot. Look at that shot. Absolutely brilliant for the reverse shot. The ball in the long regulation for the boundary. This is second boundary of the innings and 1 maximum also. The brilliant comeback and after the completion of the first 2 balls. So this time the lovely one and very good bowling piece also this time. Once again for the tip the ball and the single run added to the scoreboard in 3 balls completed and score directly jumping to 20 on the board. 20 is a total and 41 run needed to victory. 41 needed to victory for 21 balls. The exact 12 point something for required run rate. The ball completely for the leg stump area and the final the umpire calling wide +1 and 2 runs added to the scoreboard on extra run and 1 is running between the wicket. So 2 runs added to the score for extra and scoreboard again jumping to 22 on the board. Oh, brilliant one. They strip the ball again in the gully side and the single runs again for the leg prize call for the umpire. Not connected with bat and ball read perfectly. So after the completion of first 4 balls, Tejavu, Kasargod and BSC BEKUR for the next match. The high voltage match for the next match. Tejavu and BSC BEKUR. 5 balls completed and 1 ball remaining here. The final delivery of the ball. Look at that ball! Look at that ball! The appeal to the umpire. So after the completion, of first 2 overs and score showing on just for 23 is a total. 23 is a total in 2 overs and 11.5 is the current run rate and 61 is a victory target. 23 is a total. And I think 38 run needed to victory in 18 balls. 18 balls, they needed 38 runs. That's more like a 12.70 is the required run rate per over. So Hamid is the bowler and in the batting position is the right batsman from the striking area. Mozammil and a non-striker Javid. Both are openers from MCC Uppala. Now first spell of the tide over. Oh, look at that ball! What a performance! Clean ball. Mozammil walking back to the pavilion. Absolutely, they're doing very well. One of the historical cricket festival.
Welcome back here. Now Hamid is the bowler after the completion of first 5 balls. He got 2 wickets and 2 dot balls and only 1 single in this particular over from Hamid. And final delivery of the over. Right and see for Hamid. Now Hamid to the batsman waiting for the ball. The very good right hand batsman. Oh, look at that shot for the reverse sweep. And finally for single runs added to the scoreboard and good running between the wicket and 3 overs completed. And 25 for quite a century is the total and lots of 2 wickets. 25 like 6.33. Sorry, 3 overs completed, 25 is the total and 8.34 is the current run rate. And last 2 overs remaining, 61 is a victory target. So 31 run needed to victory. So 36 run needed to victory for 12 balls. 18.0 is a required run rate in Deepak Shakawala and very good swingle. Sorry, deep square leg relation and swingle runs added to the scoreboard and slowly running between the wicket. And after the completion of first ball of the 4th over. Now last 5 balls remaining here. The batsman waiting for the ball. The very good right hand batsman. Sadiq is the batsman this time. Really good one. What a good piece of ball. Another wicket of MCC Uppala. The brilliant bowling piece of Mr. Ramesh. Ramesh got first wicket of his individual. And after the completion of first 2 balls, I already told about for that runs and 35 run needed to victory for 16 balls. Sorry, 10 balls. The 10 balls remaining. They needed 35 runs to victory. Too much difficult to touch the goal. So Hanif is a new batsman from MCC Uppala. So after the completion of 2 balls only for the 4th over, still progressing here from Ramesh. And first of all single and after that the wicket. Now third spell of the over, Ramesh. Ramesh to Hanif and very good shot in the long controlation and just for single runs added to the scoreboard, slowly running between the wicket. They completed for single runs and scoreboard directly jumping to 27 on the board. And 34 are needed for 9 balls. Now 4th spell. Look at that bowling pace. They appeal to the umpire, but not any positive results from the squad like umpire. Not told any decisions. That's a not out. And well appealed for the stamping, but not perfectly. The batsman still there in the stamping area. So after the completion of first 4 balls, like 1 wicket, 1-0 in this over. Now 5th spell of the over. Wait and see. Ramesh. Now 5th spell of the over. The batsman waiting for the ball. The very good right hand batsman. 5th spell. Oh, look at that shot! Absolutely performance for that batsman. What a good leadership here. That's an unbelievable shot in the deep long on relation. The long leg relation, that kind of the batting position for that batsman. And after the completion of first 5 balls, that's a brilliant maximum in the 5th ball of the last ball. The last ball remaining here. In the 5th ball, that's a brilliant maximum in the long calculation. And after the completion of 3.5 balls and score showing on 33 is the total. And 61 is a victory target. So 28 run needed to victory. Oh, look at that! Look at that shot! That's a brilliant! Another maximum! It's another maximum here. The out of the grease. The out of the grease. That's why up the quality for another maximum. So back to back. So back to 2 maximums.
And scoreboard directly jumping to 39 on the board. 39 is the total and lost 6 balls remaining. They needed 22 runs to victory. അവസാനത്തെ 6 പന്തിൽ 22 റൺസിന്റെ ലക്ഷ്യമാണ് മത്സരം വിജയിക്കാനുള്ളത്. The last 6 balls they needed 22 runs. So anyway, I'm requesting to the next commentary box one of the most senior commentator in national language Hindi. I heartily inviting Mr. Abdurrahman Bekur for the next commentary box in sweet and national language Hindi. धन्यवाद नासिर कन्याना। 6 गेंद में 22 रन की जरूरत है। बहुत खूबसूरत शॉट, शानदार शॉट। Thank you, Mr. Nasir Kanyana. चौथी गेंद लक्ष्य के काफी बाहर थे, अंपायर ने कोई इशारा नहीं किया। बहुत खूबसूरत गेंद लक्ष्य के जो बॉक्स थे उस बॉक्स के अंदर गेंद निकल गई है। कोई रन नहीं, कोई खतरा नहीं। हमीद अपनी जवाबदारी तो बहुत अच्छी तरह आगे बढ़ रही है। जवाबदारी के साथ जो कप्तान ने अपने कंधे पर जवाबदारी दी है उसे जवाबदारी के साथ इन्होंने गेंदबाजी करते हुए, और इस गेंद लेग स्टंप पर बीट हुई। इस बार तो वाइड, इस बार वाइड के करार दिया गया। स्ट्राइक पर हनीफ है, दोनों हार्ड हिटर, लेकिन खाली दोनों स्ट्राइक पर हैं। बहुत खूबसूरत 2 बार छक्के लगाए थे इन्होंने।
പുളകം അണിയിപ്പിക്കുന്ന ബോൾ. ഓ ലക്ഷ്യമിന്റെ തുടക്കം അതിഗംഭീരമാണ് BSC ബേക്കൂറിന്റെ. കാരണം സൗജന്യമായ നിരക്കിൽ 4 റൺസ് ഇവിടെ വിട്ട് കിട്ടുമ്പോൾ BSC ബേക്കൂറിന് മികച്ച തുടക്കം തന്നെയാണ് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കിരാൻ മറ്റൊരു പന്തുമായി മികച്ച പന്ത് സ്റ്റമ്പിൽ പിച്ച് ചെയ്ത പന്തിന് ഇപ്രാവശ്യം ബാറ്റ്സ്മാനെ കബളിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വിക്കറ്റ് കീപ്പറുടെ കൈകളിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ റൺ എടുക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഒരു പന്തിൽ ശൂന്യമായി നിൽക്കുകയാണ് ഇസ്മായിൽ. മറ്റൊരു പന്തുമായി കിരാൻ. ഓ മികച്ച പന്ത് വൈഡാണെന്ന് തീരുമാനിക്കപ്പെടുന്നു. ഷെയ്ഖ് മലാലി വീണ്ടും തിരിച്ചെത്തുമ്പോൾ മൈതാന മധ്യത്തിലേക്ക്. വീണ്ടും വൈഡ്. ഒരു പന്തിൽ 7. മികച്ച ഷോട്ട് ഇസ്മായിലിന്റെ ബാറ്റിൽ നിന്ന് മനോഹരമായ ഒരു ബൗണ്ടറി നേടുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വ്യക്തിഗത സ്കോറിംഗിന് തുടക്കം കുറിക്കുന്നു വെട്ടിക്കെട്ട് ബാറ്റ്സ്മാൻ ഇസ്മായിൽ. ഓ മികച്ച പന്ത് വീണ്ടും സ്ലിപ്പിൽ ഫീൽഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരൊറ്റ റൺസ് കൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടുന്നു. നിന്തി സ്വതസിദ്ധമായ ശരീരം അദ്ദേഹം സ്വീപ്പ് ചെയ്യുന്നു. നേരെ ബൗണ്ടറി കിടക്കുകയാണ്. ഇന്ത്യ നേരിട്ട ആദ്യ പന്തിൽ തന്നെ ബൗണ്ടറി നേടിക്കൊണ്ട് മേൽക്കോയ്മ നേടുകയാണ്. ദേജാവ കാസർഗോഡിനെതിരെ ആദ്യ ഓവറിൽ തന്നെ വെടിക്കെട്ട് ബാറ്റിംഗോടുകൂടി 16 റൺസ് നേടിക്കഴിഞ്ഞു 5 പന്തിൽ നിന്ന്. കിരൺ മറ്റൊരു പന്തുമായി. ഓ മികച്ച ഡ്രൈവ് മിഡ് വിക്കറ്റിൽ കളിക്കുന്നു. ആദ്യ റൺസ് വേഗതയോടുകൂടി ഓടുന്നു. ഉമ്മർ ചെയ്ത ചെറിയ തോതിലുള്ള മിസ്ഫീൽഡിലൂടെ രണ്ടാമത്തെ റൺസ് മനായസം നേടുകയാണ്. അങ്ങനെ ഓവർ അവസാനിക്കുമ്പോൾ സ്കോർ ബോർഡിൽ 18. दोस्तों उपला की बादशाह यानी कि शफीक उपला हमारी इस मैदान में इस प्रतियोगिता में आए हैं. इनको बड़े स्वागत करना चाहता हूं. शफीक उपला यहां पर तो शफीक उपला बहुत कुछ क्रिकेट यहां पर इसी मैदान पर बहुत कुछ प्रतियोगिता खेले हैं. एचएन फील्ड हिदायत नगर के जाने माने खिलाड़ी हैं. इन्होंने कभी भी कौन से भी जो मैच होते हैं तो यहाँ पर हमारे साथ आनंद उठाते हैं. आपको बिग सैल्यूट शफीक. उमर तैयार है. दूसरी ओवर के पहले गेंद लेकर तैयार है इस्माइल के लिए. इस्माइल उठाकर खेलना चाहा. बल्ले के बार हिस्सा लगते हुए शॉट लेग पर गेंद गई. तब तक फील्डर ने विकेट कीपर ने आकर गेंद उठाया. तब तक 1 रन और इस 1 रन की मदद से संख्या बढ़ते हुए 19. फिर एक बार उमर अराउंड द विकेट अपर को क्रॉस करते हुए तैयार है इंती पुशॉट के लिए. इंती बहुत खूबसूरत शॉट. फाइन लेग में फील्डर मौजूद है. तैनात है. 1 रन मुश्किल से दौड़कर पूरा किया इस्माइल बाबा तो BSC बेकुर के तगड़े बल्लेबाज जाना जाते हैं. हमेशा बहुत अच्छे बल्लेबाजी करते हैं. नॉर्मल क्रिकेट टूर्नामेंट हो अबाउट 40 क्रिकेट
ലോധിയുടെ ഇടതുവശത്ത് റെഡ് ക്യാപ്പ് അണിഞ്ഞ സിദ്ദീഖ് ലോഗി ാണ് കാഴ്ചവെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഖാദർ വീണ്ടും ഓ മനോഹരമായ ഷോട്ട്. ഫർവേസിനെതിരെ ഫർവേസ് തയ്യാറാണ്. दोस्तों 3 ओवर की समाप्ति पर 28 यानी कि पहली ओवर में 18 रन और उसके बाद 4 रन और आखिरी ओवर में 6 रन यानी कि एक बाउंड्री मिले थे जो कादर के ओवर में. उस बीच में भी जो 6 रन जो तारीफ करना होगा कादर को, कप्तान ने महंगी साबित की है. അതേപോലെ യൂട്യൂബ് ടെലികാസ്റ്റിലേക്ക് സംഭാവന എഴുതിച്ചവർ, അണ്ടറാം വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലൂടെ അറിയിച്ചവർ അത് കരീം നീർച്ചാലിനെയോ BSC ബേക്കൂറിന്റെ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളെയോ ഒന്ന് വന്നിട്ട് അത് ഏൽപ്പിക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. KFCയുടെ കുമ്പളയുടെ എല്ലാ കളിക്കാരും 28 3 ഓവർ അവസാനിക്കുമ്പോൾ KFC കുമ്പളയുടെ എല്ലാ കളിക്കാരും ഭക്ഷണശാലയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. ബോളിംഗ് വിഭാഗത്തിൽ വീണ്ടും ഉമ്മറിനെ തിരിച്ചു വിളിക്കുമ്പോൾ ക്യാപ്റ്റന്റെ വിശ്വാസം നേടിയെടുത്ത ഉമ്മർ വീണ്ടും തന്റെ കോട്ടയിലെ രണ്ടാമത്തെ ഓവർ. ഓ മികച്ച ഷോട്ട്, മിഡ് വിക്കറ്റിലൂടെ കളിക്കുന്നു ജഗദീശ്വരത്തെ റൺസ് നേടുന്നു. രണ്ടാമത്തെ റൺസിന് അവസരമില്ല. മികച്ച ഫീൽഡിംഗ്, മികച്ച ത്രോ. അങ്ങനെ 29 നിൽക്കുമ്പോൾ ഫർവീസ് ബൗണ്ടറി കൊണ്ട് തുടക്കം കുറിച്ച ഫർവീസിനെതിരെ ബോളിംഗിൽ ഇന്ദ്രജാലം കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഉമ്മർ ബോൾ ചെയ്യാൻ തയ്യാറെടുപ്പ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. दोस्तों उमर फिर एक बार अराउंड विकेट. ओहो हो बहुत अच्छी गेंद थी. यहाँ पर खेलने के प्रयास में जो पैड पर टकराई, लेग बाई के इशारा दिए और इस लेग बाई की मदद से संख्या बढ़ते हुए 30 रन 30 ऑन द बोर्ड. फिर एक बार उमर मतो जगदीश का मार के लिए उमर. ओ अच्छी गेंद खेला है, रोलिंग डिलीवरी थी, खेला जरूर लेकिन 1 रन मुश्किल से यहाँ पर BSC बेकुर के खाते पर लिखवा दिया गया. संख्या बढ़ते हुए 31 ऑन द बोर्ड. ये
जमाने के माइकल बेवन जाना जाती है इनको। चक्रवर्ती ओसंगाड़ी की लाजवाब मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज है जो मेरे ख्याल में 1990 से जो 2005-2008 तक जो चक्रवर्ती ओसंगाड़ी अंडरआर्म क्रिकेट के जो किंग मेकर थे ओसंगाड़ी इलाके की, उस टीम के सदस्य हैं। दिनेश अभी भी खेल रही है वो 40 में। फिर एक बार उमर तो जगदीश, ओ हो बढ़िया गया। बिल्कुल जगदीश ने ये सोच रहा है कि जोखिम उठा कर खेलूं, शॉट बड़े बड़े लगाऊं, यानी कि स्कोर बहुत बड़े बनाऊं। 7 गेंदे इस इनिंग्स में बचे हैं। जो छोटे क्रिकेट में बस एक ओवर दुनिया बदल सकते हैं। पहले ओवर में 18 रन मिले थे और उसके बाद बिल्कुल अच्छी गेंदबाजी में मजारा किए। फिर एक बार ऑफ स्टंप के बिल्कुल बाहर, खराब गेंद, वाइड, खराब गेंद। नमस्ते शिवराम सर, शिवराम कलतूर, विकास कलतूर के एक जमाने के शेर, यानी कि अंडरआर्म क्रिकेट के सबसे खूबसूरत खिलाड़ी हैं। ओहो और इसी के साथ जगदीश के विकेट भी उमर ने जो अपनी झोली में डाल दिए। बहुत बड़े विकेट कहना होगा। नए बल्लेबाज है राघवेंद्र भट्ट, बीएससी बेकुर के क्लब के खिलाड़ी है। बहुत अच्छे बल्लेबाज भी है, बहुत अच्छे ऑलराउंडर है। Four after completion of 4 over, loss of 4 विकेट। 4 विकेट के नुकसान पर यहां पर बना लिया गया है 34 रन। गेंदबाज हैं राजेश मधुर। पहली गेंद, आउट। पहली गेंद में सामना किए, पहली गेंद में दिनेश आउट होकर बॉलिंग को बाल लौट रही है। ये तो बिल्कुल परितापी स्थिति कहना होगा बीएससी बेकुर के, यानी कि पहली ओवर में 18 रन के साथ शुरुआत की और उसके बाद जो गेंदबाजों ने इतनी अच्छी गेंदबाजी की है। उमर 2 ओवर फेंके हैं और कादर उलेतड़ का 1 ओवर फेंके हैं और इसके बाद अभी आए हैं राजेश भी विकेट छटकाए। बहुत अच्छी शॉट, फाइनल गिला के बाद राघवेंद्र भट्ट ने, क्षमा कीजिए, रहीम बाबा ने इस शॉट को लगाए। इस बीएससी बेकुर के आरंभिक बल्लेबाज थे रहीम इस्माइल बाबा। अब तो उनके बड़े भाई रहीम बाबा जो 3-4 विकेट पतन होने के बाद आए, सामना किया, पहली गेंद पर चौके लगाए, फाइनल पर ब्यूटीफुल शॉट। संख्या बढ़ते हुए 38 ऑन द बोर्ड। अंसार पैवलिका प्लीज कम टू द माइक पॉइंट। अंसार पैवलिका, फिर एक बार राजेश तैयार है रहीम बाबा के लिए और बदबी के नंबर को क्रॉस करते हुए तैयार हैं। रहीम बाबा भी तैयार हैं चौके लगाकर आत्मविश्वास के साथ। और इसी के साथ उसी पटरी पर जवाब दिए राजेश ने। रहीम बाबा को बाहर जाने की मौका तो दिया गया है। बहुत जबरदस्त विकेट। देखिए जो गेंदबाजों ने इतनी छलाकी गेंदबाजी की है, किरण के बाद सभी जो गेंदबाजों ने अच्छे जो गेंदबाजी की है। उमर 2 ओवर फेंके हैं, कादर उलेतड़ का 1 ओवर फेंके हैं। अब राजेश, एक चौके तो लगा दिया गया है बीएससी बेकुर ने, लेकिन यहां पर नेट रन रेट तो बहुत बड़े दबाव में है। और इसके साथ रफीक अली आका उठा करके ला है मिड विकेट पर और बहुत खूबसूरत फील्डिंग उमर के 2 रन दौड़कर पूरा किए। तीसरे रन के लिए दौड़ा जा रही है, दूसरी रन के लिए आउट।
आलिया रोबिन सिंह की तरह इन्होंने जो ड्राइव लगाकर कोशिश की है रोकने के लिए अपने आप को, लेकिन जो फील्डर बहुत अच्छी तेज थे, इन्होंने बहुत अच्छी थ्रो की है और इसी के साथ അതുപോലെ നമ്മോടൊപ്പം മറ്റൊരു വ്യക്തിത്വം കൂടി നമ്മോടൊപ്പം എത്തുകയാണ്. ആരിഫ് എച്ച് ഹിദായത്ത് നഗർ അദ്ദേഹത്തെ ഈ ടൂർണമെന്റിലേക്ക് വളരെ സ്നേഹത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. HPL ക്രിക്കറ്റ് ടൂർണമെന്റ് ഇതേ വർഷം പ്ലാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. 40 on the ball. 40 ball. 3 more ball to left. 2 more ball to left. 2 more ball to left. बोलती में गलती हुई है, माफ कीजिए. फिर एक बार राजेश और आगे वीरेंद्र भट्ट ने उठाकर खेलने के प्रयास किए, लेकिन एक ही रन. बहुत खूबसूरत यहां पर नए बल्लेबाज है. मजी हार्ड हिटर ऑफ एनएफसी अरिमला के जाने माने खिलाड़ी. बहुत खूबसूरत शॉट मिड विकेट पर फील्ड हुए. एक रन तेजी के साथ दौड़कर पूरा किया, दूसरी के लिए कोई मौका नहीं. और इसी के साथ 42-43 इज द विक्ट्री टारगेट, यानी कि 43 रन के लक्ष्य. मजीद तो मेरे ख्याल में इस सीजन में थोड़े डिले हुए हैं. मोटे थे जो पहली इनिंग जो सीजन में, इस इनिंग्स में इस सीजन में तो बिल्कुल डिले दिख रहे हैं इनको. स्लिम ब्यूटी हुए हैं मजीद. और 43 इज द विक्ट्री टारगेट. हॉल 43 इज द विकेट टारगेट, यानी कि 43 रन के लक्ष्य यहां पर बीएससी बेकुर के सामने. इज द विक्ट्री टारगेट, यानी कि पहली ओवर फेंकने के लिए कप्तान इंती तैयार है. लेकिन बैट्समैन हरी अप, ബാറ്റ്സ്മാൻ ഇവിടെ ഡെക്കൗട്ട് ഇവിടെയാണ്. ദേജാവ കാസർഗോഡിന് വേറൊരു സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടില്ല. ദയവ് ചെയ്ത് ഇവിടെ ഡെക്കൗട്ടിൽ വന്നിരിക്കണം. ടൂർണമെന്റിന്റെ വിജയത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓരോ സൗകര്യങ്ങളും ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ദയവ് ചെയ്ത് നിങ്ങളോട് വീണ്ടും വീണ്ടും അപേക്ഷിക്കുകയാണ്, ഡെക്കൗട്ടിൽ തന്നെയാണ് നിങ്ങളുടെ കളിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ നിങ്ങളുടെ സീറ്റ്. ദയവ് ചെയ്ത് ഇങ്ങോട്ട് മാറിയിരിക്കണം. ആ മത്സരാർത്ഥികൾക്ക് ഡെക്കൗട്ട് ഒഴിഞ്ഞു കൊടുക്കണമെന്ന് അവിടെ ഇരിക്കുന്ന മഹത് വ്യക്തികളോട് അപേക്ഷിക്കുകയാണ്.
इनकी पहली ओवर की पहली गेंद लेकर ओहो शुरुआत काफी अच्छी शुरुआत है। खड़े खड़े खेलना चाहते थे मनोज ने, गेंद और बल्ले के बीच में कोई संपर्क नहीं हुई, बहुत अच्छी गेंद। इंती कप्तान जो बल्लेबाजी में बहुत अच्छे बल्लेबाजी की शुरुआत किया गया था, लेकिन अब गेंदबाजी में क्या कर पाएंगे। पहली गेंद तो बहुत अच्छे फेंके इन्होंने, अब तो फील्डिंग में परिवर्तन लाना चाहते हैं। जो मिड ऑफ लॉन्ग ऑफ से जो मिड ऑफ में 30 तारीख के अंदर की तरफ फील्डर को लाया गया, मिड विकेट पॉइंट में एक खिलाड़ी को खड़े किए और मजीद को बिल्कुल गली इलाके पर लाया गया। लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन, मिड विकेट, डीप मिड विकेट, स्क्वायर लेग। ओह, हल्के से बल्ले से पुश किए हैं, कोई फील्डर मौजूद नहीं थे। फील्डर ने तेजी के साथ आकर इस गेंद को उठाए, तब तक एकमात्र रन और इसी के साथ खाता खोले हैं। शॉर्ट पिच डिलीवरी यानी कि लॉलीपॉप गेंद थे और इस गेंद को बिल्कुल बड़े शॉट नहीं लगाए, रक्षात्मक के साथ बिल्कुल जो अंदाजी के साथ इस गेंद को फ्लिक किए थे मनोज ने, अपने खाता खोले। अब तो खतरनाक बल्लेबाज है किरण, बहुत बड़े बल्लेबाजी करने वाले बल्लेबाज है जो इन्होंने स्वीप मास्टर जाना जाती है अंडराम क्रिकेट में, कासरगोड इलाके में इनको स्वीप मास्टर ही करना चाहिए, क्योंकि बहुत अच्छे स्वीप खेलने वाले खिलाड़ी हैं। ऑन साइड हो, ऑफ साइड हो, बहुत अच्छे स्वीप रिवर्स स्वीप खेलने वाले खिलाड़ी है किरण। और उनके सामने इंती, राइट आर्म ऑन द विकेट, लेफ्ट हैंडर के लिए राइट आर्म ऑन द विकेट। ओ उठा कर खेला है, फील्डर तैनात है और इसी के साथ वाह भाई वाह, व्हाट अ प्लानिंग, व्हाट अ प्लानिंग मिस्टर इंती। इंती जानता है कि लॉलीपॉप गेंद इनके लिए डाले तो इन्होंने जरूर उठा कर खेलेंगे। उसी इलाके पर फील्डर को खड़े किए थे, लंबे फील्डर को खड़े किए थे, उन्होंने कोई गलती नहीं की, बहुत अच्छी कैच। जगदीश ने बहुत खूबसूरती के साथ इस कैच को हासिल किए। खतरनाक बल्लेबाज आउट हो चुके हैं। नए बल्लेबाज उमर, पिछले मैच के हीरो, यानी कि इनके खेल देखे थे पिछले मैच में धुआंधारी बल्लेबाज, यानी कि ईश्वर पठान के जैसे इन्होंने खेलते हैं, छक्के चौके लगाए, बहुत स्पीड अप किए इन्होंने, रन रेट को स्पीड अप किए, गेंदबाजी में लाजवाब गेंदबाजी किए थे इस मैच में। पिछले मैच की कहानी कह रही थी कि बल्लेबाजी में, गेंदबाजी में इस मैच में फिर एक बार थी तुमार हो अच्छी गेंद थी। ओ इंती ने कोशिश नहीं किए, इंती अगर कोशिश करते हैं तो यहां पर कोशिश में कामयाब होती है, लेकिन कोशिश नहीं की है इंती ने, अच्छी। फिर एक बार इंती ओवर द विकेट नंबर को क्रॉस करते हुए तैयार है मनोज, अरबिक बल्लेबाज है मनोज के लिए। मनोज बढ़िया गेंद, वाह भाई वाह, व्हाट अ डिलीवरी मिस्टर इंती, क्या गेंदबाजी कर रही है, बहुत अच्छे गेंद फेंके हैं। 5 गेंद में 2 रन। फिर एक बार इंती ओवर द विकेट नंबर को क्रॉस करते हुए तैयार है मनोज के लिए। मनोज उठाकर खेलना चाहा, बहुत अच्छी गेंद, वाह भाई वाह, व्हाट ए ओवर मिस्टर इंती। खतरनाक बल्लेबाज को आउट किए और सिर्फ 2 रन देकर इन्होंने अपनी जवाबदारी तो बहुत अच्छी तरह निभाई। कप्तान है, जवाबदारी बहुत ज्यादा है। ഇവിടെ ഭക്ഷണം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്, ഒരു ടീമിന്റെ 20 ആൾക്കാർക്കാണ് അവസരമുള്ളത്. ഇവിടെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഭക്ഷണം വിളമ്പുന്നവരും ഇതിന് സഹകരിക്കുന്നവരും ഒക്കെ കളിക്കാരാണ്. അതിന് നേതൃത്വം നൽകുന്നത് സിദ്ദീഖ് ലോഗിയാണ്, ബിഗ് സലൂട്ട് സിദ്ദീഖ് ലോഗി. അതിന് ഒരുപാട് പ്രയത്നിച്ചൊരു ദിവസങ്ങളായിട്ട് സിദ്ദീഖ് ലോഗിയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂട്ടരുമാണ്, അതായത് ബ്രദർ സാരിക്കാടി എന്ന പഴയകാല പടക്കുതിരകളാണ് ഇതിന് നേതൃത്വം നൽകിയത്. അതേപോലെ ഇവിടെ ലൈവ് ടെലികാസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതിന്റെ ഒരു ഭൂരിപക്ഷം കളക്ഷനിനും നേതൃത്വം നൽകിയത്, അതിന് ധനസമാഹരണത്തിന് ഭാഗമായിട്ടുള്ളത് ബ്രദർ സാരിക്കാടി തന്നെയാണ്. മികച്ച ഒരു ക്രിക്കറ്റ് പ്രേമികൾ തന്നെയാണ് ബ്രദർ സാരിക്കാടി. ഇവിടെ ബോളിംഗ് വിഭാഗത്തിൽ മാറ്റം വരുന്നു. സതീഷ് കനില, ചക്രവർത്തി മഞ്ചേശ്വരത്തിന്റെ പഴയകാല പടക്കുതിര ഇവിടെ ബോളിംഗ് വിഭാഗത്തിൽ വരുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ ഉമർ എന്ന വെടിക്കെട്ട് ബാറ്റ്സ്മാൻ കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിലെ
ഹീറോ. ഓ മികച്ച ബോളിംഗ്, മികച്ച തുടക്കം. ഉമർ ഉയർത്തിയടിക്കാൻ തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം ഓങ്ങിയതെങ്കിൽ ഇവിടെ പരാജയപ്പെടുന്നു. സ്കോർ ബോർഡിൽ ഇപ്പോഴും 2 റൺസ് മാത്രം. सतीश फिर एक बार अरुण विकेट नंबर को क्रॉस करते हुए उमर ने उठा करके लाट किया। बहुत बढ़िया गया। और विकेट कीपर के रूप में इस्माइल बाबा खड़े हैं। बहुत खूबसूरत शुरुआत दिया गया थे बल्लेबाजी में इस्माइल बाबा ने। अब सतीश और फिर एक बार बहुत खूबसूरत फील्डिंग रफीक नाम के अलिया का। हमसा अंपर वेट सतीश फिर एक बार अपने ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार है मनोज के लिए। ओ बहुत अच्छी गेंद, फील्डिंग में बहुत अच्छे फील्डर राघवेंद्र भट्ट खड़े हुए थे। इन्होंने गेंद को तेजी के साथ उठाए। तब तक 1 रन और इस 1 रन की मदद से संख्या बढ़ते हुए 4 रन। 4 गेंदे फेंक चुके हैं सतीश कनीला। उमर खतरनाक बल्लेबाज स्ट्राइक पर मौजूद है। उमर सीतांगोली फिर एक बार राउंड द विकेट अंपायर को क्रॉस करते हुए तैयार। उठा कर गेला है, फुल टॉस गेंद थे, उठा कर गेला है, गेंद सीधा मिड विकेट के ऊपर से सीमा रेखा के बाहर 6 रन। अवश्य समय पर फुल टॉस गेंद थे, इसके फायदा उठाए। बहुत बढ़िया छक्का। छक्के की मदद से संख्या बढ़ते हुए 10 रन। दूसरी ओवर के 5वें गेंद पर छक्के लगाए, यानी कि अवश्य समय पर बिल्कुल परितापी थे, दबाव थे। जो पहली ओवर पर जो कप्तान को नुकसान हुए थे, यहां पर जो सतीश की अच्छी गेंदबाजी जारी थी, आखिरी जो 2 गेंदें बाकी थे तब छक्के लगाए। फिर एक बार उठा कर गेला है अलिया का, अलिया का ने कैच लिए। यहां पर उमर खतरनाक बल्लेबाज आउट, उमर आउट। दूसरी विकेट यहां पर बहुत खूबसूरत विकेट छक्का लिया गया है बीएससी बेकूर ने, जो ज्यादा रन नहीं बनाए थे, जो 42 रन। कादर उलियतलिका न्यू बैट्समैन, कादर उलियतलिका नए बल्लेबाज के रूप में कादर काफी अच्छे बल्लेबाज है। അടുത്ത മത്സരത്തിന്റെ ടോസിംഗ് നടത്തേണ്ടതുണ്ട്. ബ്രദേഴ്സ് അടിക്ക, അതേപോലെ കിങ് കോബ്ര. ബ്രദേഴ്സ് അടിക്ക, കിങ് കോബ്ര, അതേപോലെ കൂടെ കൂടെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇവിടെ ഭക്ഷണം തയ്യാറാണ്. മത്സരം ടീമുകൾക്ക് ഭക്ഷണം തയ്യാറാണ്. നിങ്ങളുടെ കളി ഇല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് പോയി ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് വരാം. ആരെയും കാത്തിരിക്കേണ്ട. 20 ആൾക്കാണ് ഒരു ടീമിൽ അവസരമുള്ളത്. അതായത് 10 ടീമിന് 200 ആൾക്കാർക്കുള്ള ഭക്ഷണം ഇവിടെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ നമ്മുടെ ഓഫീഷ്യൽസ്, ക്യാമറ നിയന്ത്രിക്കുന്നവർ ഭക്ഷണം കഴിക്കണം. ആരും ആരെയും കാത്തു നിൽക്കില്ല. അവരവരുടെ ഊഴത്തിനനുസരിച്ച് ഭക്ഷണം കഴിക്കണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു. ഇവിടെ ഇസ്മായിൽ ബാബയെ പന്തേൽപ്പിക്കുന്നു. ഓ മികച്ച പന്ത്, മികച്ച പന്ത്. ഫീൽഡിംഗിൽ പിഴവ് വരുത്തുമ്പോൾ എവിടെ നേരെ ബൗണ്ടറി, ബായിൽ കൂടി ബൗണ്ടറി. ഇൻടീപ്പ് ഷോട്ട് വിട്ടുകളഞ്ഞ പന്തിൽ ക്യാപ്റ്റൻ ഫർവേസ് ഒന്ന് ടോസ്. आद्य पंदिल बाउंड्री नेडुമ്പോൾ इस्माइल बाबा की हाथ में है गेंद। पहली गेंद पर चौका मिले हैं। स्कोर 14। तीसरी ओवर की शुरुआत अभी अभी इस्माइल
ओ उल्टा बल्ले में खड़े हो गई हैं, तब अंपायर ने कह रही कि वाइड। इस्माइल फिर एक बार, ओ अच्छी गेंद, बहुत खूबसूरत गेंद। उल्टा बल्ले में कोशिश तो कर रही है कादर ने, लेकिन कामयाब नहीं हुए। फिर एक बार इस्माइल, रेडाम अरुण हो द विकेट। ओ अच्छी गेंद, फाइनल पर बहुत खूबसूरत बुलेट की तरह गेंद सीधा सीमारे के बाहर, चौका। इस्माइल फिर एक बार, ओ अच्छी गेंद, अंपायर की इशारा, सिंगल। स्कोर 21 बॉल, तीसरी ओवर जा रही है। ओ मनोज उठाकर खेला है, हवा पर है गेंद, गेंद सीधा सीमारे के बाहर, 6 रन के लिए। वाह भाई वाह, व्हाट अ शॉट मिस्टर मनोज, 26 ऑन द बोर्ड। ओवर ओवर पहली ओवर में कामयाब गेंदबाजी, अच्छी गेंद, अच्छी गेंद, बहुत खूबसूरत गेंद, शुरुआत ही बहुत अच्छे किए। इन तीनों टोटल 7 गेंदें फेंक चुके, तक 2 रन कर चुकी है, एकमात्र विकेट भी इन्होंने हासिल किए इस बार कादर के लिए। रेड ऑन द विकेट, इन 7 आउट ऑफ 11 डिलीवरी। अब 10 गेंदे बचे हैं, 16 रन की जरूरत है मैच को जीतने के लिए। मनोज और कादर मिडिल ऑर्डर में बहुत अच्छी बल्लेबाजी करते हैं दोनों बल्लेबाजों। फिर एक इस्माइल बाबा के लिए इंती, क्षमा कीजिए मनोज के लिए इंती, पुशोड ओवर द विकेट। और हल्के के पुश की है गेंद को राघवेंद्र भट्ट, फील्डर के रूप में बहुत शानदार फील्डर के रूप में जाना जाती है इनको, बीएससी बेकुर के राघवेंद्र भट्ट। माइक ऑपरेटर बेदील रिपोर्ट चेगा, माइक ऑपरेटर प्लीज कम हियर। और हवा पर गेंद है, फील्डर तैनात है और इसी के साथ मजीद टेक द कैच। मजीद अरिमला, एनएफसी अरिमला के जो लंबे सफर है इनके भी बहुत खूबसूरत खिलाड़ी है, इन्होंने कैच हासिल किया, तब बड़े विकेट यानी कि कादर के विकेट यहां पर प्राप्त कर चुके हैं। इंती पुशोड ने इस ओवर में भी बहुत अच्छी जादू गेंदबाजी करते हुए 2 रन कर चुकी है 4 गेंदों में। धनु नए बल्लेबाज के रूप में, चार गेंदों में 2 रन कर चुकी है। अब तो मेरे ख्याल में 8 गेंदे बचे हैं, 8 टू गो, 15 टू गेंद। जी हाँ, 15 रन की जरूरत है मैच को जीतने के लिए। मनोज अभी भी मौजूद है मैदान पर, बहुत अच्छे खास बल्लेबाज है, छक्के लगा दिया गया था इस्माइल बाबा के सामने। ओह बहुत अच्छे गेंद, 1 रन तेजी के साथ इस्माइल की तरफ थ्रो आए, तब एकमात्र रन और इसी के साथ लगबाई का इशारा किया। लगबाई की मदद से संख्या बढ़ते हुए इस ओवर में 5 गेंद में 3 रन कर चुके और भी 14 रन की जरूरत है मैच को जीतने के लिए। स्ट्राइक पर धनु है, एक नॉट टेकन पर मनोज है। मनोज तो आरंभिक बल्लेबाज है, शुरुआती बल्लेबाज है। 29 ऑन द बोर्ड, 14 रन रिक्वायर्ड फ्रॉम 7 डिलीवरी।
फिर एक बार, ओ अच्छी गेंद, बहुत अच्छे स्वीप, 1 रन, और इस 1 रन की मदद से 13 रन की जरूरत है। 13 रिक्वायर्ड फ्रॉम 6 डिलीवरी। 4 പന്ത് 17 ആണ്, 12 ബോളിൽ. നിങ്ങൾ ബൊബ്ബിടണ്ട, ഒരാൾ വരും. അല്ല, കണക്ക് കറക്റ്റ് ഉണ്ട്. 12-ൽ 17 ആണ്, 4 കിട്ടിയ ഓവറിൽ 13 ആണ്. फरवेज रत्नाकर बीएससी बेकुर के खिलाड़ी हैं, उनको योगदान मिले हैं. स्ट्राइक पर धनु और नॉन स्ट्राइक पर धनु. अच्छी गेंद उठा कर खेला है, हवा पर गेंद है और इसी के साथ व्हाट कैच, बहुत अच्छी कैच. रत्नाकरा ने पहली गेंद पर जो बड़े विकेट हासिल किए, धनु के विकेट. अब तो 13 रन की जरूरत है. मनोज अभी भी मौजूद है मैदान पर. मनोज जो इस्माइल बाबा के सामने एक चौके छक्के लगाए थे इन्होंने. बैट्समैन राजेश मधुर ने की आखिरी टूर्नामेंट थे जो मोरतना प्रीमियर लीग मियापदाओं में जो बीएससी बेकुर के लिए खास योगदान दिया गए थे इन्होंने. फिर एक बार राजेश नॉन स्ट्राइक पर, स्ट्राइक पर मनोज. रत्नाकर अपने ओवर के दूसरे गेंद, मैडम और विकेट. ओ अच्छी गेंद, फील्डिंग फील्डर तैनात है, इन्होंने गेंद को तेजी के साथ उठाए. ओ फील्डिंग अच्छी थ्रो. राजेश स्ट्राइक पर है. 4 गेंद में 12 रन की जरूरत है मैच को जीतने के लिए. बड़े शॉट बिल्कुल चाहिए. 4th को 12th विकेट. बिल्कुल छोटे टारगेट थे, बड़े टारगेट नहीं लगाए, यानी कि 43 इस टूर्नामेंट के सिर्फ छोटे टारगेट यहां पर बनाए गए. അടുത്ത മത്സരത്തിലേക്കുള്ള തയ്യാറെടുപ്പ് ടീം മീറ്റിംഗ് അതേപോലെ റൗണ്ട് അപ്പ് പുറത്തു നിന്ന് തന്നെ നടത്തുക. दोस्तों 4 गेंदे बचे हैं. रत्नाकर लॉलीपॉप गेंद, लेकिन फायदा नहीं उठा पाए. सतीश कनीला फील्डर के रूप में आए, गेंद को उठाए, तब तक कि एकमात्र रन. अब 3 गेंदे बचे हैं, 11 रन की जरूरत है मैच को जीतने के लिए. 3 to go, 11 to get. बस एक शॉट दुनिया बदल सकते हैं यहां पर. अच्छी गेंद, रोलिंग डिलीवरी. हो बढ़िया गेंद. रत्नाकर, व्हाट ए डिलीवरी मिस्टर रत्नाकर. 4 गेंद में सिर्फ 2 रन कर चुके हैं. अब तो 2 गेंद में 2 बड़े शॉट चाहिए मैच को जीतने के लिए. 2 बड़े शॉट लगाओ, मैच को जिताओ. अच्छी गेंद उठा कर खेला है, गेंद हवा पर. 1 to go, 5 to get. मनोज तो अब तक बल्लेबाजी की तारीफ ही करना होगा इनको. ऑफ साइड में 2 बार इन्होंने, जो एक लॉन्ग ऑन में एक ऑफ साइड में, दोनों ऑफ साइड की जो बहुत अच्छे खेले हैं इन्होंने. ऑन साइड में अब तक इनको मौका नहीं मिले. जो सारे गेंदबाजों ने जो ऑफ स्टंप के बिल्कुल बाहर गेंद रखकर दिए, बहुत अच्छे खेल खेले हैं. एक मनोज और बीच में कादर आकर कुछ अच्छी पार्टनरशिप बनाए थे. अब राजेश के साथ पार्टनरशिप जारी है. 1 to go, 5 to get. मनोज अरबिक बल्लेबाज, कप्तान की उम्मीद के साथ बल्लेबाजी की, बहुत खूबसूरत बल्लेबाजी की. 1 to go, 5 to get. बाउंड्री लगाए तो मैच तय हो सकते हैं. छक्के लगाओ, मैच को जीताओ. फिर एक बार लॉलीपॉप गेंद, लॉलीपॉप गेंद, व्हाट ए गेंद.
और इसी के साथ मैच पे कैच छोड़ दिया गया। तो समय लग रही थी कि बीएससी बेकुर के हाथ से फिसल गए, कैच छोड़ो यानी कि मैच छोड़ो, लेकिन यहां पर तो बीएससी कैच छोड़े लेकिन मैच भी नहीं छोड़े। यहां पर तो 2 रन दौड़ने की मौका थे, लेकिन मनोज के साथ बिग सैल्यूट देना चाहिए, बिग सैल्यूट मनोज, क्योंकि अच्छी शानदार जो चमत्कार मनपसंद इनिंग्स खेले आप, बिल्कुल अच्छी इनिंग्स खेले हैं, बिल्कुल तारीफ ही करना चाहिए इनको, धन्यवाद। മത്സരത്തിന്റെ മാൻ ഓഫ് ദ മാച്ച് വേദിയിലേക്ക് കിടക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഈ മത്സരത്തിന്റെ മാൻ ഓഫ് ദ മാച്ചിന് മുമ്പായിട്ട് കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിന്റെ മാൻ ഓഫ് ദ മാച്ച് നൽകിയിട്ടില്ല, ക്ഷമിക്കുക. ഫയർ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് കാസർഗോഡ് ടീമിന്റെ ഉദയ ദയവ് ചെയ്ത വേദിയിലേക്ക് വരിക. മാൻ ഓഫ് ദ മാച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് നൽകാൻ ബാക്കിയുണ്ട്. ഫയർ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് അത് മാൻ ഓഫ് ദ മാച്ച് നൽകേണ്ടത് ദിനേശ് ചക്രവർത്തിയാണ്. ദിനേശ് ചക്രവർത്തി BSC ബേക്കൂറിന് വേണ്ടി ജേഴ്സി അണിയുന്നു. എങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വളരെ മനോഹരമായ അണ്ടർആം ക്രിക്കറ്റ് ഹിസ്റ്ററി തന്നെയാണ്. മികച്ച ഒരു ഓൾറൗണ്ടർ ഒരു സമയത്ത് ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ചക്രവർത്തി മഞ്ചേശ്വരത്തിന്റെ. ദിനേശ് ചക്രവർത്തി ഉദയന് വേണ്ടിയുള്ള മാൻ ഓഫ് ദ മാച്ചാണ്. ഉദയ വന്നു കഴിഞ്ഞു. അവിടെ എയർഫോർട്ട് ഈ മത്സരത്തിലെ മാൻ ഓഫ് ദ മാച്ച് ഗോസ് ടു ക്യാപ്റ്റൻ ഓഫ് BSC ബേക്കൂർ അനീഫ് എന്ന ഉമ്മങ്ങ. അണ്ടർആം ക്രിക്കറ്റിന്റെ എന്നും വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിലുള്ള ഒരുപാട് ടൂർണമെന്റുകൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അണ്ടർആം ക്രിക്കറ്റിന്റെ നെറുകയിൽ, അണ്ടർആം ക്രിക്കറ്റിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ സ്ഥാനം പിടിച്ച ഹനീഫ് എന്ന ഉമ്മങ്ങ അദ്ദേഹത്തെ വളരെ സ്നേഹത്തോടെ ക്ഷണിക്കുകയാണ് ടൂർണമെന്റിന്റെ മാൻ ഓഫ് ദ മാച്ച് വേദിയിലേക്ക്. दोस्तों और इस मैच खेला जाएंगे ब्रदर्स अडका और फायर किंग कोबरा. इंती पसोड मैन ऑफ द मैच गोस टू इंती पसोड. स्ट्राइक में दिनाकर शेट्टी, रोई कासरगोड. वाह, बहुत अच्छे बल्लेबाजों को यहां पर लाए गए हैं. यूसुफ गेंदबाज के रूप में, यूसुफ मुसोली एक्सप्रेस, इनको योगदान मिले हैं. ओवर द विकेट, बहुत खूबसूरत तालमेल के साथ बल्ले की बारी हिस्सा लगकर गेंद गई है सीमारे के बाहर, चौका. 2 फील्डर को वंचित करते हुए गेंद गए हैं. जो फील्डर के बीचों बीच में, 2 फील्डरों के बीचों बीच में बल्ले के बारी हिस्सा लगे थे दिनाकर शेट्टी. बहुत अच्छे खास बल्लेबाज है, इनके भी लंबे सफर है अंडरआर्म क्रिकेट में, बहुत खूबसूरत योगदान है. जो क्लब मेंबर्स में इन्नी एपिसोड के लिए खेलने वाले खिलाड़ी है, जो कुंबला के मशहूर टीम में खेलने वाले खिलाड़ी, अब तो इनको योगदान मिले. पहली गेंद पर चौका लगाए नौशाद बुराक. ഈ പരിസരത്തുണ്ടെങ്കിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. फिर एक बार इस ओवर द विकेट अंपायर को क्रॉस करते हुए तैयार है. इस हफ्ते दिनाकर रो अच्छी गेंद गली पर गेंद गई, वहां पर फील्डर इन्होंने गेंद के ऊपर तेजी के साथ आए, उठाए. तब तक एकमात्र रन, 1 रन के सहारे के साथ रन संख्या बढ़ते हुए 5 रन 2 गेंदों में. फिर एक बार अच्छी गेंद, बहुत खूबसूरत गेंद. लेग स्टंप पर पकाने के बाद रोई ने उठाकर खेलने की प्रयास किए, लेकिन बल्ला और गेंद के बीच में कोई संपर्क नहीं हुई. बहुत अच्छे. फिर एक बार सब सिद्ध करना चाहा. बहुत अच्छे गेंद, बहुत खूबसूरत गेंद. चौका लगाने के बाद 2 बार इन्होंने डॉट किए हैं, तो बहुत अच्छे तारीफी गेंदबाजी कर रही है सब मुसोड़ी ने.
4 गेंदें फेंक चुके हैं, स्कोर 5। बहुत अच्छे गेंद, बल्ले की बारी हिस्सा लगकर गेंद स्लिप पर गए, लेग बाई की इशारा किए और इस लेग बाई की मदद से संख्या बढ़ते हुए 6 रन। फिर एक बार सब अच्छी गेंद उठा करके ला है, फील्डर काफी लंबे खड़े हुए थे, उन्होंने गेंद को तेजी के साथ उठाया, तब तक 1 रन और इस 1 रन से ओवर समाप्त हो चुके हैं। 7 after completion of first over. അടുത്ത മത്സരത്തിന് വേണ്ടി തയ്യാറെടുപ്പ് നടത്തുക KFC കുമ്പള ഫ്രണ്ട്സ് ബായിക്കട്ട തമ്മിലുള്ള മത്സരമാണ്. 2 ടീമും തയ്യാറെടുപ്പ് നടത്തണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. മത്സരം മത്സരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ബ്രദേഴ്സ് അഡ്ക കിങ്സ് കോബ്ര. അടുത്ത മത്സരത്തിന് സൈനപ്പിന് വേണ്ടി പുസ്തകം തുറന്നു വെക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു. KFC കുമ്പള ഫ്രണ്ട്സ് ബായിക്കട്ട എത്രയും പെട്ടെന്ന് സൈനപ്പ് പുസ്തകത്തിന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തിച്ചേരണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. ആദ്യ ഓവറിന് യൂസഫ് വിട്ടുകൊടുത്തത് 7 റൺസ്. മികച്ച ഒരു ബോളിംഗ് പ്രകടനം തന്നെയാണ് നടത്തിയത്. ആദ്യ പന്തിൽ തന്നെ ബൗണ്ടറി പോയെങ്കിലും വീണ്ടും പിന്നെ എറിഞ്ഞ 5 പന്തുകളിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം മനോഹരമാക്കുന്നു. बहुत खूबसूरत गेंद को उठा करके लाया, गेंद सीधा बाउंड्री। पहली ओवर में पहली गेंद पर बाउंड्री थी, दूसरी ओवर की पहली गेंद पर बाउंड्री लगा दिया गया। 2 फील्डरों के बीचों बीच में जो फील्डरों को वंचित करते हुए गेंद गई है, दिनाकर शेट्टी के बल्ले से निकलता हुआ शानदार बाउंड्री लगाए। बहुत अच्छे शॉट दिनाकर शेट्टी। अंसारी भैया शॉट मिस्टर दिनाकर शेट्टी। उल्टा बल्ले में इतना तेज बल्ले घुमाए जो फील्डर को देखने तक मौका नहीं मिले, जो कैमरा मैन भी जो अफसोस हुए 1 सेकंड के लिए, क्योंकि इतने तेज गई थी गेंद, सीमारे के बाहर चौका। 15 ऑन द बोर्ड। 2 गेंदों में 2 लगातार बाउंड्री लगाकर जो हैट्रिक बाउंड्री के लिए मौका है अंसारी। फिर एक बार अरुण विकेट अब टीम के बाहर वाइड। 16 यानी कि 16 रन। फिर एक बार अरुण विकेट दिनाकर उठाए। इस बार देखिए दोस्तों, दिनाकर शेट्टी के बल्ले इतने लंबे बोल रही है। इस ओवर में 2 चौके 1 छक्के, हैट्रिक चौके के लिए मौका मिले हैं तो उन्होंने छक्के लगाए। अंसारी पिछले मैच में भी जो महंगी साबित हुए थे, इस मैच में भी जो महंगी साबित होते जा रही हैं। जो 3 गेंदें इन्होंने अब तक फेंके हैं, 15 रन कर चुकी है, संख्या बढ़ती हुई 22। अंसारी दिनाकर उठा करके ला है मिड विकेट पर। इस बार बहुत खूबसूरती के साथ खिलाड़ी इस्तेमाल किए हैं। यूसुफ ने फील्डर के रूप में आई गेंद उठाए, थ्रो किया, तब तक एकमात्र रन और इस 1 रन की मदद से संख्या बढ़ती हुई 23 ऑन द बोर्ड। फिर एक बार बहुत खूबसूरत शॉट, इस बार रोई के बल्ले से तोहफा दिए, गेंद गए सीमारे के बाहर चौका। 27 ऑन द बोर्ड, यानी कि 27 रन बिल्कुल अच्छी कहना होगा, क्योंकि दूसरी ओवर जा रही है। इतने स्कोर बनाई गए हैं, बहुत बढ़िया स्कोर बनाए गए। ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ബാക്കിയുള്ളവർ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഭക്ഷണം കഴിക്കണം. ഇനി അവസാനം വന്ന് ഭക്ഷണം കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്ന് പറയരുത്. അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്കാണ് ഭക്ഷണ വിതരണം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. മികച്ച ഷോട്ട് വീണ്ടും റോയിയുടെ ബാറ്റിൽ നിന്ന്. ആദ്യം നേരിട്ട ഈ ഓവറിൽ 2 പന്തുകളിൽ 2 ബൗണ്ടറി നേടി ദിനാകർ ഷെട്ടിയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അവസാന ഘട്ടത്തിൽ 4ാമത്തെയും 5ാമത്തെയും പന്തിൽ ബൗണ്ടറി നേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു റോയ്. ഇപ്രാവശ്യം റോയ്ക്കാണ് ഇവിടെ ഹാട്രിക്കിനുള്ള അവസരം മുമ്പിൽ വന്ന് നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഹാട്രിക്ക് നേടുമോ എന്ന് കാത്തിരുന്ന് കാണാം.
अंसारी बहुत बड़े महंगी ओवर साबित हुए अंसारी की। 2 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 31। साली अडका को योगदान मिले हैं। साली अडका लाजवाब ऑलराउंडर, ब्रदर्स अडका के खिलाड़ी, नुस्टार कुंजतुर के लिए बहुत साल खेले हैं इन्होंने। साली अडका साली तैयार है। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। ओ उल्टा बल्ले में कोशिश तो जरूर की है, लेकिन दिनाकर शेट्टी मुस्कुरा रही है साली के सामने। 2 टन डिलीवरी। फ्रेंड्स बाई कटेड़े मत्सरार्थिകൾ പെട്ടെന്ന് വരിക। बहुत खूबसूरत शॉट मिड विकेट में फील्डर तैनात नहीं थे। जो अंसारी ने मिड विकेट से आकर गेंद उठाए। संदीप चक्रवर्ती खड़े हैं मिड विकेट पॉइंट पे आने के सर्किल के अंदर। याद होगा एक जमाने की चक्रवर्ती मंजेश्वर की हॉल इन हॉल यानी कि बहुत बड़े बल्लेबाजी करते थे। मैथ्यू हाइडन के जैसे आरंभिक बल्लेबाज के रूप में आती थी उस समय पर, एक जमाने थे इनके। ओ यहाँ बार खतरा हो सकते थे लेकिन अंपायर ने इंकार किए। डायरेक्ट हिट तो जरूर लगे थे लेकिन अंपायर ने जो इंकार किए। 1 रन तेजी के साथ और इस 1 रन की मदद से संख्या बढ़ते हुए 33 ऑन द बोर्ड। 33। സൈനിട്ടും बहुत खूबसूरत शॉट। 1 रन और इस 1 रन की मदद से इसी के साथ ओवर की समाप्ति। साली अडका के बहुत खूबसूरत ओवर 34 ऑन द बोर्ड। बहुत खूबसूरत ओवर। इस ओवर में सिर्फ 3 रन खर्च किए। बहुत अच्छी बहुत खूबसूरत जो गेंदबाजी की है। नए ओवर की शुरुआत ही कर रही है करीम निर्चाल। ओहो बहुत खूबसूरत गेंद, अच्छी गेंद थे करीम निर्चाल के। उठाकर खेलने की प्रयास किए हैं जो शुरुआती से जो बड़े बड़े शॉट लगा रही है। अभी भी कोशिश यही तो कर रही है करीम निर्चाल, तो बहुत बड़े ऑलराउंडर करीम। और उठाकर खेला है, हवा पर गेंद है। फील्डर जो तीसरा के अंदर फील्डर थे इन्होंने कोशिश तक नहीं की है। जो करीम जो कोशिश तो की है लेकिन गेंद तक पहुंच नहीं पाए। बहुत अच्छी गेंद। और उठाकर खेला है, हवा पर गेंद है और फील्डर के सर के ऊपर से गेंद सीधा जाकर गिरे है लॉन्ग ऑफ पे छक्के। 6 रोई और दिनाकर शेट्टी। व्हाट ए पार्टनरशिप, स्पोर्टक पार्टनरशिप यहां पर जा रही है। फ्रेंड्स बाई कटेड हनीफ और एक बार उठाकर खेला है, हवा पर गेंद और इस बार बच नहीं पाए। रोई आउट।
अशोक का सरकोट, बहुत अच्छी गेंद। छक्के लगने के बाद तो वही पटरी पर रोय के विकेट हटा दिया गया है करीम निर्चाल ने। इस बार तो दिनाकर शेट्टी के सामने करीम उठा करके ला है, बहुत खूबसूरत शॉट, फील्डर को कोई मौका नहीं, गेंद सीधा जाकर गिरे मिड विकेट पर बाउंड्री। दिनाकर शेट्टी बहुत खूबसूरत बल्लेबाजी करते हुए अब तक 3 चौके लगा, 4 चौके लगाए, 1 छक्के भी लगाए दिनाकर शेट्टी ने। ओवर की समाप्ति। साली न्यू बॉलर, लेकिन नए बुलडॉट। लेफ्ट आर्म ऑन द विकेट, अंपायर को क्रॉस करते हुए तैयार है साली अडका। साली अडका उठा कर गिला है हवा पर, गेंद कोई फील्डर मौजूद नहीं है, गेंद सीधा जाकर गिरे सीमा रेखे के बाहर, चौका। इस बार तो प्रकाश के बल्ले से, प्रकाश कोटकर्णी, अशोक कोटकर्णी, क्षमा कीजिए अशोक कोटकर्णी, बहुत अच्छे बल्लेबाज है जो दिखने में इनको देखिए दोस्तों नजर ना लग जाए, जो यंगस्टर लग रही हैं, जो एबो 40 के खिलाड़ी है। साली अडका के सामने चौके लगाए हुए खिलाड़ी, बहुत अच्छे खिलाड़ी भी हैं साली अडका। फिर एक बार लेफ्ट आर्म ऑन द विकेट, हवा पर गेंद, फील्डर मौजूद थे लेकिन पिच हटकर खड़े हुए थे, इन्होंने गेंद को तेजी के साथ उठाया, तब तक 2 रन दौड़कर पूरा किए। 2 रन की मदद से संख्या बढ़ते हुए 51 ऑन द बोर्ड। साली अडका। फिर एक बार अशोक के लिए, अशोक बहुत खूबसूरत कला के इस्तेमाल किए, ड्राइव किए, लॉन्ग ऑफ में फील्डर तैनात थे यूसुफ मुसोडी, इन्होंने गेंद को तेजी के साथ उठाए तो रोके, तब तक 1 रन और इस 1 रन की मदद से रन संख्या कुल मिलाकर 52 52 रन। फिर एक बार दिनाकर शेट्टी के लिए 2 more ball। साली अच्छी गेंद, विकेट कीपर के लिए मौका थे जो दिनाकर शेट्टी को पांच भेजने के लिए, लेकिन यहां पर मौका नहीं मिला। रनआउट के रूप में अशोक कोटकर्णी को आउट किया गया। नए बल्लेबाज आना चाहिए, जल्दी चाहिए, न्यू बैट्समैन 52। न्यू बैट्समैन मुन्ना भपाई तट्टी, वेलकम मुन्ना भपाई तट्टी, जो अबव 40 में पहली बार इन्होंने जो कदम रखे हैं और इस बार दौड़ने में कामयाब हुई। दूसरी रन भी यहां पर, तो तीसरी रन के लिए यहां पर कोशिश की है लेकिन कामयाब नहीं हुई, बैक इशारा किए। देखिए दोस्तों, मुन्ना की बारी में कह रहे थे कि जो अंडरआर्म क्रिकेट के जो कहीं भी हो अंडरआर्म क्रिकेट, वहां पर नजर जो दिखाई देती है इनको। मुन्ना भपाई जो टीम को जो स्वागत करना चाहती हैं जो अंडरआर्म क्रिकेट के बो 40 क्रिकेट प्रतियोगिता के लिए पहली बार इन्होंने कदम रखे हैं बो 40 में। जो अवसर नहीं मिले हैं, आखिरी अवसर मिले हैं, नॉट टेकन पर थे। अब 55 इज द विक्ट्री टारगेट। अभी प्लीज कम, अभी KFC കുമ്പളയുടെ ഒരു ബാറ്റ് മിസ്സായിട്ടുണ്ട്. അതെങ്കിലും ആരെങ്കിലും മാറിയിട്ട് കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് പരിശോധിച്ചിട്ട് തിരിച്ചേൽപ്പിക്കണം. പച്ച ഗ്രിപ്പ്, ഗ്രീൻ ഗ്രിപ്പ് ഇട്ട ഒരു ബാറ്റ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിപ്പോയിട്ടുണ്ട്. ആരെങ്കിലും അടുത്ത
മാറിപ്പോയതായിരിക്കാം. ദയവ് ചെയ്ത് തിരിച്ചേൽപ്പിക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു കളിക്കാരന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ബാറ്റും കൂടിയാണെന്ന് അറിയിക്കുന്നു. ടോസിംഗ് നടത്തുക. So the match is between Brothers Adka and King Cobra Kumbala. Now 55 is a victory target. Now Ravi Uppala is a right-hand batsman from the opener and the non-striker of Brothers Adka. And first of all, they arrived at jersey number 11, Sali. And first of all, the very good bowling piece, not connected with bat and ball. That's per dot and delivery. In previous match of Ravi Uppala, in back-to-back 2 boundaries and 1 maximum. That's a hard hitting in previous match. Ravi Uppala, one of the most popular umpire. Oh, this time lovely one, very good shot. And this to the deep mid-wicket side and single run added to the scoreboard. And after the completion of first 2 balls, and so score showing on just for 1 run. And Siddiq എവിടെ ഉണ്ടെങ്കിലും മൈക്ക് പോയിന്റുമായി ബന്ധപ്പെടേണ്ടതാണോ? സിദ്ദീഖ് ആരിക്കാടി. So after the completion of the first 2 balls, now left-hand batsman waiting for the ball for the Sali Adka, one of the most dangerous player in UNDERARM cricket. Now 3 balls completed here. King Cobra Kumbala as well as Brothers Adka between the match. A 4th spell of the over. Oh, look at that shot! Sali Adka! Hard hitting here. That's a powerful maximum. And 6 runs added to the scoreboard. That's a brilliant shot. What a good comeback there. Absolutely, they did very well. The deep backward shot regulation. That kind of the shot from Sali Adka. So this time, the ball outside of the off stump and first extra run. And wide run added to the scoreboard and scoreboard directly jumping to 8 on the board. And after the completion of first 4 balls, 5th spell. Look at that shot. The ball in the deep mid-wicket side and drop that fielder. Another boundary. 4 runs added to the scoreboard. 12 on the board. The biggest victory target for 55 is a victory target. The most run wanted per over because 55 is the biggest target. So Dinakari, requesting Mr. Bowler, please show your jersey number. Ashok is a bowler. Ashok to Sali Adka. After the completion of the first 5 balls and score showing on just for 12 runs. This time the lovely one just tipped the ball in the mid-wicket side. The another one, the back-to-back, the 6-4-4 for the Sali Adka. And the scoreboard directly jumping to 16. 16 on the board and loss of 0 wickets. The 55 is a victory target and 16 is a total. So 41 run needed to victory for 24 balls. An exact 10.25 is a required run rate per over. 41 run needed to victory.
The 39 run needed to victory for 24 balls. Now Ravi Uppala is a batsman and Sali Adka is a non-striker, and the new bowler Ali is the new bowler. The first delivery of the second over Ali to Ravi Uppala. Oh, this time the lovely one just tipped the ball in the mid-wicket side. No fielders there, and once again that's a boundary. Look at that shot. Absolutely, they did very well. Ravi Uppala and Sali Adka is a partnership. What a performance! What a hard-hitting Ravi. The very good playing for Ravi, and after the completion of first delivery of the second over, and score showing on just for 20 runs. 20 is a total, and 35 run needed to victory, and 55 is a victory target. Last 23 balls remaining, and 35 run needed to victory second spell. Ali this time lovely one, and very good shot. The ball in the square. The ball in the cover side, and slowly running between the wicket and single runs added to the scoreboard. Now Sali Adka. There are now chances to the hat-trick boundary for Sali Adka, because in previous last 2 balls he got 2 boundaries and on maximum also. So the lovely one and very good shot for the river sheep. That's to the long leg region and hat-trick performance. That's a brilliant one. And a wonderful shot for Sali Adka for the river sheep shot in the long leg region. Absolutely brilliant performance. What an outstanding, what a good performance there. And after the completion of first 3 balls, and scores are showing on 25 on the board for quite a century is a total. Quite a century in the total. And after the completion of first 3 balls, and 25 is a total, and 55 is a victory target, and 30 run needed to victory for 21 balls. The crucial matches between King Cobra as well as Brothers Adka and Day 1 SACLA Trophy. This time lovely one for Soli. Wow! Soli! That's a brilliant one for another maximum. What an outstanding. What a magnificent shot, and more than 69 meters. Absolutely brilliant performance in the deep mid wicket side. What a performance. What a performance to Sali Adka. And after the completion of first 4 balls, the bowling finished Ali to Sali Adka once again, and scoreboard directly jumping to 31. This time the lovely one, and again the very good bowling piece for Ali. And just for dot balls calling for the umpire. Sheikh Malali is a main umpire. Is one of the popular umpire in Dakshina Karnataka. Sheikh Malali. And after the completion of the first 5 balls, 4-1, 4-6-0, the last
ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ബാക്കിയുള്ളവർ ഹാൾ. So after the completion of 5 balls, the final delivery, this ball in the rear just tipped the ball for the mid-wicket side and single runs added to the scoreboard. And after the completion of over number 1 completed. Last ball in the and 7 is the total. So sorry, the 5 balls completed and last one more delivery to go. Requesting to the umpire, 5 balls completed and 1 ball remaining. There's a little mistakes of the scoreboard. So this time they stepped the ball, not connected with bat and ball too perfectly.
ഇസ്മായിൽ ബാബ അദ്ദേഹം എവിടെയാണെങ്കിലും മൈക്ക് പോയിന്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടതാണ്. ഇസ്മായിൽ ബാബ. So after the completion of first over, a score showing on just for 7 runs. Sadiq is a new bowler. This time the lovely one, wonderful shot there, and no ball calling for the umpire. So no ball plus 6 and 7 runs added to the scoreboard here. So no ball for free hit calling for the umpire. So after the completion of the free hit chance, after the completion of first over only, and 14 is the total. Now first delivery once again to Sadiq. Oh, look at that shot. And very good running between the wicket. And single runs added to the score after the completion of first ball. After the completion of first ball of the second over, a score showing on 15 on the board. 15 is a total. Fire Blasters. Upendra, the Hemerdon Mike point by Bandapadadan. Ashok Blasters in Upendra. This time loudly one wonderful boundary. And very good shot for the long off relation. And 4 runs added to the scoreboard. And scoreboard directly jumping to 19 on the board. And after the completion of 2 balls. So now last 4 balls remaining. Now 10th spell of the over. This time the lovely one. Very good bowling piece of Sadiq. Not connected with bat and ball. In 3 balls completed. Desperate odd balls in the 3rd ball of this over. Look at that wonderful shot. There's another one in the long off relation and very good running between the wicket. And after the completion of first 4 balls of the second over, a scoreboard showing on 20 on the board. 20 is a total. Now 5th spell of the over. The batsman, Mr. Biran, waiting for the ball. The very good left-hand batsman from UNDERARM Cricket. Oh, look at that shot in the deep mid-wicket side. That's it high. And finally they cross the line and the magnificent maximum. The brilliant shot from Iran. What a good comeback. This is the second maximum of Iran. The second maximum of this innings. And after the completion of first 5 balls of the second over, scoreboard directly jumping to 26 on the board. 26 is the total. Oh, this time the lovely one and very good one. Just for single runs. I request Mr. Yakub Paika. Please come here. Hall. And after the completion of first 2 overs and scoreboard showing on 27. 27 is the total. So 13.5 is the current run rate. So when we are requesting Mr. Yakub, please come here for the commentary box with a sweet and the national language Hindi. So this time the lovely one and very good performance. Not connected with bat and ball. Saji is a bowler. I'm requesting to Yakub for the next commentary box and thank you so much.
ओके धन्यवाद मिस्टर नासिर कल्याण, बहुत ही बढ़िया अनाउंसमेंट था आपको अंग्रेजी में अब तक का सुनाते हुए। अब तक 3 गेंद फेंक चुके हैं गेंदबाज और स्कोर कार्ड बढ़ते हुए 28 रन। इस बार बेहतरीन गेंद और बल्ले का किनारा लिया, सीधा प्रहार करना चाहते थे मगर बल्ले का किनारा लिया और अंपायर का इशारा यहाँ पर 4 रन का। यह बेहतरीन चौका यहाँ पर, इस चौके के साथ अब तक 4 गेंद फेंक चुके गेंदबाज और स्कोर कार्ड बढ़ते हुए 32। ये बेहतरीन गेंद और यहाँ पर एक और रन बटोरते हुए ओके KFC कुमला और फ्रंट से वाई कटा के बीच हो रहा मैच। मिस्टर साजी गेंदबाजी करते अब तक का 5 गेंद फेंक चुके गेंदबाज। इस ओवर का आखिरी गेंद और बल्लेबाज मिस्टर बीरा तैयार। बहुत ही बढ़िया गेंद और इस बार हवा में प्रहार करते हुए 6 रन के लिए बेहतरीन छक्का। बहुत ही बढ़िया इशारा देते हुए मेन अंपायर द्वारा इस इशारे के साथ आंकड़ा यहाँ पर बढ़ते हुए 39 39 रन यहाँ पर बनते हैं। ओके रत्नागर यहाँ पर गेंदबाजी करते हुए और बल्लेबाज मिस्टर बीरान तैयार सामना करने के लिए। बहुत ही बढ़िया मूड में है बीरान। अब तक इस इनिंग्स में 3 छक्के लगा चुके हैं। जाने माने हार्ड हिटर है, पुराने बल्लेबाज की यही खासियत। यहाँ पर 1 शॉट डिलीवरी और बेहतरीन गेंदबाजी। यहाँ पर कीपर गेंद को कनेक्ट नहीं कर पाए। 1 रन जरूर मिलेगा यहाँ पर, लगता है बई के तौर पर 1 रन मिलेगा। बहुत ही बढ़िया इशारा देते हुए मेन अंपायर द्वारा शकील मेन अंपायरिंग करते हुए इस खेल का नियंत्रण करते हुए साइड अंपायर मिस्टर अजीज और मेन अंपायर मिस्टर शकील। यहाँ पर अतिक्रमण का इशारा देते हुए मेन अंपायर द्वारा ओके अब तक का 3 गेंद फेंक चुके हैं गेंदबाज। इस बार बेहतरीन गेंद और उछालना चाहते हैं मगर वहां पर फील्डर मौजूद 1 रन दौड़कर पूरा किया। 1 से ही संतुष्ट है बल्लेबाज बीरान। रत्ना नाम शेख फरते रत्ना तो रत्ना आगे सामना करेंगे। अब तक का 4 गेंद फेंक चुके हैं गेंदबाज। रत्ना बहुत ही बढ़िया गेंद। इस बार 1 शॉट डिलीवरी और बल्ला घुमा दिया। यहाँ पर यह शानदार चौका लेफ्ट साइड की तरफ फेंका गया गेंद और उसका पूरा फायदा उठाते हुए बल्लेबाज रत्ना। इस ओवर का 5 गेंद समाप्त हो चुका है और स्कोर कार्ड बढ़ते हुए 48 रन यहाँ पर बन चुका है। इस इनिंग्स का अब तक का 4थे ओवर का आखिरी गेंद फेंकना शेष है और 48 रन स्कोर कार्ड पर दर्ज होते हुए यह बेहतरीन गेंद और यहाँ पर सीधा प्रहार करते हुए बल्ले से 1 रन जरूर मिलेगा। बहुत ही बढ़िया कोशिश यहाँ पर फील्डर द्वारा। इसी के साथ ओवर समाप्त, 4 ओवर समाप्त और स्कोर कार्ड बढ़ते हुए 49 रन यहाँ पर बनते हुए
49 स्कोर कार्ड यहाँ पर बढ़ते हुए बहुत ही बढ़िया तरीके से स्कोर कार्ड को आगे बढ़ाते हुए अब तक का 4 ओवर तक चुके गेंदबाज की तरफ से 2 विकेट यहाँ पर केवल गंवा चुके हैं रत्ना और बल्लेबाज मिस्टर वीरान तैयार है। सिद्दीक यहाँ पर गेंदबाजी करते हुए इस इनिंग्स का आखिरी ओवर और यहाँ पर ऑफ स्टंप के बाहर गई थी गेंद और अतिरिक्त रन का इशारा देते हुए मेरे बार द्वारा इस इशारे के साथ बहुत ही बढ़िया आंकड़ा यहाँ पर अर्जित होते हुए 50 रन पूरे होते हुए बहुत ही बढ़िया गेंद लेग स्टंप के बाहर गई थी गेंद एक और एक्स्ट्रा का इशारा देते हुए मेरा बार द्वारा इस बार सीधा प्रहार करने की कोशिश वहां पर फील्डर मौजूद 1 रन से नहीं चूक पाएंगे रत्नागर बहुत ही बढ़िया बल्लेबाज है यहाँ पर मगर 1 ही रन से संतुष्ट दोनों बल्लेबाज बीरान और रत्नागर 2 विकेट के लिए यहाँ पर खेलते हुए पहला दोनों विकेट यहाँ पर बहुत ही बढ़िया आंकड़ा दर्ज करते हुए बीरान और बल्लेबाज मिस्टर रत्नागर सिद्दीक यहाँ पर गेंदबाज करते हैं अब तक का 2 गेंद फेंक चुके गेंदबाज 4 गेंद फेंकना शेष है इनिंग्स का बीरान बल्लेबाज यहाँ पर सीधा प्रहार वहां पर फील्डर मौजूद शानदार चौका यहाँ पर इस क्लासिकल चौके के साथ अब स्कोर कार्ड बढ़ते हुए 56 रन यहाँ पर स्कोर कार्ड पर अर्जित करते हुए छक्के और चौकों की बौछार लगाते हुए यहाँ पर बल्लेबाज बीरान पुराने खिलाड़ी हैं क्लासिक प्रता के बहुत बढ़िया बल्लेबाज हैं इस बार घुमा दिया मगर बल्ले का किनारा और विकेट को छूते हुए गई गेंद बल्लेबाज बीरान को पहल का रास्ता दिखाते हुए यहाँ पर पहला सफलता है यहाँ पर सिद्दीक को स्कोर कार्ड यहाँ पर बहुत ही बढ़िया स्कोर कार्ड अर्जित करते हुए 56 स्कोर कार्ड अब तक का राजेंद्र अब नए बल्लेबाज मैदान में उतरते हुए रत्नागर और राजेंद्र अब सामना करेंगे इस ओवर का केवल 2 गेंद फेंकना शेष रत्नागर तैयार है इस ओवर का 5वां गेंद का सामना करने के लिए तैयार यहाँ पर फील्डिंग में थोड़ी तब्दीली लाते हुए गेंदबाज सिद्दीक यहाँ पर इस बार 1 शॉट फेंका हुआ गेंद हवा में गेंद और राजेंद्र के बल्ले से निकलता हुआ 6 रन पहले ही गेंद पर छक्का लगाते हुए इस ओवर का 5 गेंद फेंक चुके गेंदबाज मिस्टर सिद्दीक इस इनिंग्स का आखिरी ओवर फेंकते हुए अब स्कोर कार्ड यहाँ पर 62 बहुत ही बढ़िया आंकड़ा दर्ज होता है 62 रन बनते हैं सिद्दीक का आखिरी गेंद सामने आकर प्रहार करते हुए ये दूसरा छक्का 2 गेंदों में 2 छक्के और मैच समाप्त करते हुए पहला इनिंग्स समाप्त 68 रन यहाँ पर बनाते हुए 69 टारगेट बहुत ही बढ़िया स्कोर कार्ड अर्जित करते हुए बल्लेबाज मिस्टर राजेंद्र आखिरी 2 गेंदों में 2 छक्के लगाकर मैच को समाप्त करते हैं
ओके, मैच यहाँ पर आरंभ है। तो ये मैच खेला जा रहा है फ्रंट बाई कट्टा और KFC कुंबला के बीच। KFC कुंबला यहाँ पर पहले बल्लेबाजी करते हुए 69 का लक्ष्य रखा है, यहाँ पर 68 रन बनाते हुए। यहाँ पर 68 रन बहुत ही बढ़िया तरीके से वीरान बल्लेबाज यहाँ पर जरूर शो कर आखिरी समय में राजेंद्र बल्लेबाज ने आकर 2 छक्के लगाए। बहुत ही बढ़िया इनिंग्स रहा है KFC कुंबला का। देखना कि फ्रंट से बाई कटा ओके, मैच यहाँ पर आरंभ होते हुए ये बहुत ही बढ़िया गेंद और अब तक का 2 गेंद पिच के गेंदबाज बहुत ही बढ़िया तरीके से गेंदबाजी करते हुए मिस्टर बीरान गेंदबाजी करते हुए सिद्दीक तैयार सामना करने के लिए। ओके, अनीफ नॉन सेक्टर सिद्दीक के लिए इस ओवर का तीसरा गेंद और बेहतरीन गेंदबाजी यहाँ पर लक्ष्य स्टंप के काफी करीब से गई है गेंद। बीरान गेंदबाजी करते हुए बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पर गेंदबाजी का छोर संभालते हुए मिस्टर बीरान। इस बार बेहतरीन गेंद, बहुत ही बढ़िया कीपिंग कह सकते हैं इसे, रत्नागर कीपिंग करते हुए। यहाँ पर जरूर पोस्टम के काफी करीब फेंकते हुए गेंदबाज। अब तक का 4 गेंद फेंक चुके गेंदबाज और स्कोर कार्ड केवल 2 रन यहाँ पर देते हुए यहाँ पर अपना SP जाहिर करते हुए गेंदबाज मिस्टर बीरा। इस बार रिवर्स स्वीप मारने की कोशिश, वहां पर फील्डर मौजूद मगर 1 रन से नहीं रोक पाएंगे। बहुत ही बढ़िया रनिंग है यहाँ पर अनीफ और बल्लेबाज मिस्टर सिद्दीक के बीच में बहुत ही बढ़िया तालमेल कर सकते हैं। रनिंग बहुत ही बढ़िया तेजी से लेते हुए इस ओवर का 5 गेंद फेंक चुके गेंदबाज। पहले ओवर का आखिरी गेंद फेंकना शेष है और अनीफ बल्लेबाज तैयार सामना करने के लिए। यहाँ पर जरूर बल्ला घुमा कर खेला, वहां पर फील्डर मौजूद और इसी के साथ पहला ओवर समाप्त और स्कोर कार्ड बढ़ते हुए 4 रन। बहुत ही बढ़िया गेंद और यहाँ पर अनीफ बल्लेबाज 1 रन यहाँ पर जरूर बढ़ते कुमार गेंदबाजी करते हुए। अब सिद्दीक तैयार सामने। कुमार इस ओवर का अगला गेंद और बहुत ही बढ़िया क्लिक यहाँ पर सिद्दीक के बल्ले से निकलते हुआ धीरे से 1-1 रन बटोरते हुए दोनों बल्लेबाज अनीफ और सिद्दीक 5 ओवरों में 69 का लक्ष्य रखा है यहाँ पर KFC कुंबला ने फ्रंट से बाई कट्टा के लिए। अब तक 3 गेंद फेंक चुके गेंदबाज कुमार। अनीफ बल्लेबाज इस बार बल्ला घुमा दिया मगर फील्डर से काफी करीब से गई गेंद और यहाँ पर 2 रन दौड़ने की कोशिश है और 2 रन यहाँ पर दौड़कर पूरा करते हुए
ओके, अंपायर का इशारा यहाँ पर स्वीकृत करते हुए 1 रन शॉट का इशारा देते हुए मेन अंपायर द्वारा 4 गेंद फिक्स के गेंदबाज है कुमार। इस बार हवा में गेंद जरूर यहाँ पर 6 रन मिलेगा। क्लासिकल छक्का यहाँ पर अनीफ के बल्ले से निकलता हुआ सेवक का शॉट कह सकते हैं इसे। अब तक का 5 गेंद फिक्स के गेंदबाज और स्कोर कार्ड यहाँ पर 13 रन। मिस्टर सालियाड का आप जिधर भी हो कमेंट्री बॉक्स से संपर्क करें। मिस्टर सालियाड का ഓക്കെ, കായിക പ്രേമികൾക്ക് അറിയിപ്പ്, ഗ്രൗണ്ടിന് പുറകുവശത്ത് അവിടെ മരം കട്ടാക്കാനുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അവിടെ 2 ബൈക്ക് പാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ആ ബൈക്ക് എടുത്തു മാറ്റണമെങ്കിൽ നിങ്ങളോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. ओके, गेंदबाज का छोर संभालते हुए मिस्टर मुरली यहाँ पर गेंदबाज का छोर संभालते हुए KFC कुंबला की तरफ से गेंदबाज करते हैं। ये पहला गेंद मुरली गेंदबाज और बल्ले का किनारा लिया और चौका, शानदार चौका यहाँ पर अनीफ के बल्ले से निकलता हुआ। बहुत ही बढ़िया शुरुआत यहाँ पर। दूसरे ओवर का पहले गेंद पर चौका लगाते हुए मुरली गेंदबाजी करते हुए अनीफ बल्लेबाज यहाँ पर चौका लगा। पहले ओवर पर 13 रन जरूर बटोरे थे दोनों बल्लेबाज ने मिलकर। इस ओवर का दूसरा गेंद मुरली और अनीफ तैयार सामना करने के लिए। इस बार तेजदार गेंद और सीधा प्रहार करते हुए वहां पर जरूर बेहतरीन फील्डिंग कर सकते हैं फील्डर द्वारा। 2 रन से नहीं रोक पाएंगे। बहुत ही बढ़िया कोशिश है फील्डर द्वारा। इसे कहते हैं एक्सपीरियंस है। जरूर 2 रन यहाँ पर रोका अपनी टीम के लिए। अब तक का 2 गेंद फिक्स की गेंदबाज मिस्टर मुरली और स्कोर कार्ड बढ़ते हुए 20 रन 20 रन यहाँ पर अर्जित करते हुए 7 रन बटोरे हैं। बहुत ही बढ़िया गेंद और यहाँ पर चौका जरूर मिलेगा। ये शानदार चौका, गेंद की रफ्तार। ഓക്കെ, ഇവിടെ എത്തിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ കായിക പ്രേമികൾക്കും അറിയിപ്പ്, ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി ഭക്ഷണം കുറെ ബാക്കിയുണ്ട്. അപ്പൊ ആരും കഴിക്കാൻ ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി എത്തിച്ചേണ്ടതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ 2 ബൈക്ക് അവിടെ പാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് കമ്മിറ്റി ബോക്സിന്റെ പുറകുവശത്ത്. ആ ബൈക്ക് അവിടെ എടുത്തു മാറ്റണം, മരം മുറിക്കാനുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് പണിക്കാർ 2 കൂടി ഇവിടെ വന്ന് അറിയിപ്പ് തരുന്നത്. ओके, अब तक का 3 गेंद फिर चुके गेंदबाज मिस्टर मुरली। अनीफ तैयार, स्कोर कार्ड बढ़ते हुए 24 रन मतलब 24 रन आंकड़े पर दर्ज हो चुका है। 3 गेंद फेंकना शेष है। 14 रन जरूर 2 ओवर में बन चुके थे। ये तीसरा ओवर यहाँ पर फेंकते हैं। इस बार बेहतरीन गेंद और बढ़िया प्रदर्शन यहाँ पर 1 रन जरूर दौड़कर पूरा किया अनीफ और सिद्दीक के बल्लेबाज। ये तीसरा ओवर का 4था गेंद फिक्स के गेंदबाज और स्कोर कार्ड बढ़ते हुए 25। बहुत ही बढ़िया तरीके से स्कोर कार्ड पर आगे बढ़ते हुए दोनों बल्लेबाज जानते हैं कि 69 का लक्ष्य रखा है यहाँ पर मुरली। इस ओवर का 5वां गेंद लेकर बल्लेबाज मिस्टर सिद्दीक के लिए। इस बार लक्ष्य के बाहर गई थी गेंद और अंपायर का इशारा अतिरिक्त रन का बहुत ही बढ़िया इशारा देते हुए मेन अंपायर द्वारा। इस इशारे के साथ स्कोर कार्ड में इजाफा होते हैं। अब तक 4 गेंद फिक्स चुके गेंदबाज, 1 एक्स्ट्रा जरूर फिक्स चुके हैं।
सिद्दीक यहाँ पर बल्लेबाज ऑफ स्टंप के बाहर गई थी गेंद। यहाँ पर अंपायर का निर्णय अतिरिक्त रन का 1 रन दौड़ने का भी मिलेगा। बहुत बढ़िया इशारा देते हुए मेन अंपायर द्वारा इस इशारे के साथ स्कोर कार्ड बढ़ते हुए 28 रन यहाँ पर आंकड़े पर दर्ज होते हुए बहुत बढ़िया तरीके से स्कोर कार्ड को आगे बढ़ाते हुए अब तक का 4 गेंद फिक्स के 2 एक्स्ट्रा यहाँ पर फेंक चुके हैं गेंदबाज। देखना होगा कि क्या कर पाते हैं। बल्लेबाज आनी थी यहाँ पर सामने आकर खेलने की कोशिश मगर ऑप्शन के बाहर गई थी गेंद द्वारा अतिरिक्त रन का इशारा देते हुए मेन अंपायर द्वारा इस इशारे के साथ स्कोर कार्ड बढ़ते हुए 29 ओके 29 रन यहाँ पर बनते हुए लगातार 3 एक्स्ट्रा फेंक चुके गेंदबाज मिस्टर मुरली अनीफ तैयार सामना करने के लिए। इस ओवर का 5वां गेंद फेंकते हुए तीसरे ओवर का इस बार बेहतरीन गेंद सामने आकर खेला मगर गेंद को रोक नहीं पाए फील्डर मिस्टर बीरान। यहाँ पर जरूर 2 रन दौड़कर पूरा करते हुए सिद्दीक और बल्लेबाज मिस्टर अनीफ। ये तीसरे ओवर का 5 गेंद समाप्त होते हुए अब इस ओवर का आखिरी गेंद फेंकना शेष और स्कोर कार्ड बढ़ते हुए 31। बहुत ही बढ़िया स्कोर कार्ड यहाँ पर अर्जित होते हुए 31 रन यहाँ पर आंकड़े पर दर्ज हो चुका है। तीसरे ओवर का आखिरी गेंद और बल्लेबाज अनीफ तैयार सामना करने के लिए। यह मैच खेला जा रहा है KFC कुंबला और फ्रंट्स बाई कटा के बीच। यहाँ पर बेहतरीन स्टंप आउट करते हुए मिस्टर बल्लेबाज मिस्टर अनीफ पवेलियन जाते हुए आखिरी गेंद और बेहतरीन कीपिंग इसी के साथ 3 ओवर पूरे और स्कोर कार्ड बढ़ते हुए 31। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी और बढ़िया बल्लेबाजी दोनों टीम के बीच। रन यहाँ पर बन चुका है स्कोर कार्ड पर। अब 69 का लक्ष्य रखा है। देखना है किस तरह अभी भी आधे दर्जन रन की जरूरत है। केवल 2 ओवर बचा है। बीरान अपना दूसरा स्पेल फेंकते हुए ये 4था ओवर का पहला गेंद फेंकते हुए सिद्दीक के लिए हरिप्रसाद नॉन स्ट्राइक पर मिस्टर अंसार खजा एवढे नोलो माइक उन्होंने बहुत ही बढ़िया गेंद और शानदार चौके का इशारा देते हुए मेन अंपायर द्वारा बहुत ही बढ़िया इशारा देते हुए मेन अंपायर द्वारा अब स्कोर कार्ड बढ़ते हुए 35 रन। यहाँ पर जरूर बल्लेबाज चार्ज करना पड़ेगा मैच को जीतना हो तो। इस ओवर का दूसरा गेंद है बीरान गेंदबाज और सिद्दीक तैयार सामना करने के लिए। यहाँ पर ऑस्टम के काफी बाहर गई थी गेंद और बेहतरीन इशारा देते हुए मेन अंपायर द्वारा साइड अंपायर और मेन अंपायर बहुत ही बढ़िया तरीके से अपना काम करते हुए इस बार बल्ला घुमाना चाहते थे बीरान की गेंद पर रिवर्स स्वीप पर मगर बल्ले के अंदर से गई गेंद और क्लीन बोल्ड बल्लेबाज सिद्दीक को पवेलियन जाना होगा। ओके अब नए बल्लेबाज है मिस्टर मोईदीन मैदान में धीरे धीरे उतरते हुए सिद्दीक बहुत ही बढ़िया स्कोर कार्ड यहाँ पर बना कर वापस आते हुए। मैच थोड़ा स्पीड करे बहुत ही समय कम है और बहुत ही ज्यादा मैच यहाँ पर खेलना बाकी तो फिर आप लोगों का सहयोग भी मैच को आगे बढ़ा सकते हैं। अब तक का 2 गेंद फेंक चुके हैं गेंदबाज मिस्टर बीरान और स्कोर कार्ड बढ़ते हुए 46। 33 रन की जरूरत है इस मैच को जीतना हो तो। बहुत ही बढ़िया गेंद हवा में गेंद मगर मुरली गेंद की तरफ पहुंच नहीं पाएंगे। 2 रन दौड़ने की कोशिश हरिप्रसाद और मिस्टर मोईदीन द्वारा बहुत ही बढ़िया रनिंग यहाँ पर दोनों बल्लेबाज के बीच में बहुत ही बड़े तालमेल कह सकते हैं। 38 रन यहाँ पे बन चुका है। केवल 31 रन की जरूरत है इस मैच को जीतना हो तो। 9 गेंदों में 31 रन की जरूरत है। 9 पंदिल 32 रन आवश्यकता। क्लीन बोल्ड यहाँ पर अब केवल 8 गेंद शेष इस मैच का।
ओके, नए बल्लेबाज मिस्टर सदाशिवा तैयार सामना करने के लिए। गेंदबाज मिस्टर बीरान यहाँ पर बहुत ही बढ़िया बल्लेबाज और एक्सपीरियंस से गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज मिस्टर बीरान केएफसी कुमड़ा के लिए ये मैच खेला जा रहा है। ओके, सदाशिवा नए बल्लेबाज इस ओवर का 5वां गेंद का सामना करने के लिए तैयार है। वाह, बहुत ही बढ़िया गेंद और बहुत ही पावरफुल स्ट्रोक। मुरली यहाँ पर फील्डर, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग। इस ओवर का 5 गेंद फिक्स के गेंदबाज 1 नॉट टू गो दिस ओवर। ये बेहतरीन गेंद और यहाँ पर धीरे से क्लिक करते हुए ऑफ साइड की तरफ 1 रन जरूर दौड़कर पूरा करते हुए इसे 1 रन के साथ ओवर समाप्त। 3 ओवर पूरे और स्कोर कार्ड बढ़ते हुए 40 रन, सॉरी 4 ओवर पूरे और 40 रन यहाँ पर बटोरते हुए। अब इस मैच को जीतना हो तो ओहो यहाँ पर ओके हेलो ओके, मैं बल्लेबाज मिस्टर रस्साक मैदान में उतरते हुए। अब तक एक गेंद फिर चुके गेंदबाज मिस्टर मोइदीन गेंदबाजी करते हुए। रस्साक नए बल्लेबाज सदाशिवा नॉन स्ट्राइकर पर। इस बार बेहतरीन गेंद और बढ़िया कीपिंग यहाँ पर। अगला मैच खेला जाएगा फायर ब्लास्टर्स और अशोक ब्लास्टर्स के बीच। बहुत ही बढ़िया गेंद। ये मैच धीरे धीरे केएफसी कुमला की तरफ जाते हुए। अब तक का 3 गेंद पिच की गेंदबाज मिस्टर मोइदीन और यहाँ पर बेहतरीन गेंद क्लीन बोल्ड का इशारा देते हुए रज्जाक के बल्लेबाज पवेलियन जाते हुए। बहुत ही बढ़िया गेंदबाज केएफसी कुमला द्वारा। अब नए बल्लेबाज मिस्टर साजी ओके, बहुत ही बढ़िया गेंद और यहाँ पर मैच का आखिरी समय आते हुए यहाँ पर केएफसी कुमला की तरफ धीरे धीरे मैच जाते हुए। शाहजी बल्लेबाज तैयार। यहाँ पर आखिरी गेंद और हवा में गेंद और ये चौका, शानदार चौका। शाहजी बल्लेबाज। इसी के साथ ये मैच केएफसी कुमला जीतते हुए। ओके, इस खेल का मैन ऑफ द मैच यहाँ पर घोषित करते हैं मिस्टर बीरान। केएफसी कुमला के खिलाड़ी है मिस्टर बीरान को यहाँ पर स्वागत करते हुए। ये मैच खेला जाएगा फायर ब्लास्टर्स और अशोक नगर अशोक फंड्स के बीच। अशोक फंड्स ने पहले टॉस जीतकर यहाँ पर फील्डिंग करने का निर्णय लिया। एक बार फिर आपको सूचित करते हैं पिछले मैच का मैन ऑफ द मैच दिया जाता है मिस्टर बीरान को। ओके, फुड बाकी लड़का 3 पैटर्न करने फुड काउंटर में बंद पड़ेगा।
ओके, ये मैच खेला जा रहा है फायर ब्लास्टर्स और अशोक ब्लास्टर्स के बीच। अशोक ब्लास्टर्स ऑन द टॉस एंड फील्ड टेस्ट। अब हमारे मिस्टर नौशाद आपको अगला अनाउंसमेंट सुनाएंगे अंग्रेजी में। Thank you, Mr. Yakub, who was commentating for the previous innings. I would like to call the players from side of BSC BEKUR and Orkadi, please report here for the sign-up process. അടുത്ത മത്സരിക്കേണ്ട ടീമുകൾ BSC BEKUR, മാസ്റ്റേഴ്സ് Orkadi ടീമിന്റെ എല്ലാ കളിക്കാരും എത്രയും പെട്ടെന്ന് സൈനപ്പ് പൂർത്തീകരിക്കുക. So back to the game, the match playing here between Fire Blasters versus Ashok Blasters. After spinning the coin, captain from side of Ashok Blasters won the toss and they elected to field first. So good scenery we are witnessing here in the Mananguji Stadium, playing about 40 years old in the UNDERARM cricket, the experienced players playing in the Premier League, conducted by BSC BEKUR and Baba Brothers, playing for SACLA Trophy 2022. 11th day cricket tournament, day number 1. So after losing the toss, the team like Fire Blasters coming with the openers, Farooq, the right-handed batsman, Ramesh Ramuni, another right-handed batsman, opens for side of Fire Blasters. So Satish Vela up on the bowling department are ready to deliver right hand over the wicket. So in the batting pair we can see Farooq and Ramesh Ramani. So players, please speed up the game. We have to finish lots of matches in the day number 1 to get the beautiful wind-up matches tomorrow evening here in the Mananguji Stadium to know the winners of SACLA Trophy 2022. We have to finish in the evening with a beautiful presentation party. So all the players, all the captains, please speed up the game. So this is a match playing between Fire Blasters versus Ashok Blasters. Satish with the ball number 1 over the wicket to Farooq. Slowa Lucy delivering the very first ball was that advantage for the batsman. No contact with the bat and ball. So Farooq play great innings in the previous match for the team like Fire Blasters. Here comes Satish. Slow delivery, lofted towards the outside region. We can't find any fielder there, bouncing and into the boundary rope. So that is a welcome boundary for the batsman. Nicely finds the gap outside the 30-yard circle
pushing the ball into the boundary region. So that will be the beautiful boundary coming from the bat. So scorecard open for the batting side. So Satish is ready to deliver the third one over the wicket. And rolling one, this time there was no connection. Nicely delivered by the bowler. He got the punishment in the ball number 2. Farooq hit it to the boundary. So Satish, fourth time. Another slower delivery, nicely played. This time ball moving to the deep covers region. So there was the fielder just one more runs. Rotating the strike, sending the partner Ramunyi back into the strike region. Ramesh, known as Ramunyi in the UNDERARM cricket. So Satish, and rolling one, nicely delivered. So see the fielding position, they are well set on the fielding region. The captain from side of Ashok Blasters. Already they played games in the group stage earlier today. So they may be knowing the ground situations. So this time clicks the ball into the onside region and running for the single. So with the help of that single, scorecard moves to 7 at the end of the over number 1. മജീദ് അരിമല എവിടെയുണ്ടെങ്കിലും മൈക്ക് പോയിന്റിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുക. BSC ബേക്കൂറിന് വേണ്ടി കളിക്കുന്ന മജീദ് അരിമല എവിടെയുണ്ടെങ്കിലും മൈക്ക് പോയിന്റിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുക. So after the completion of the very first over, scorecard remains 7 without loss of wicket. Good start from the bowling side. The bowler like Satish bowled the very first over, considered 7 runs. Second over in progress. So the new bowler Aravind Shetty over the wicket. And this time appeals are going on. Confidential one from the wicket keeper. So delivery, no score will be ahead there. So Shashidhar start with the dot ball. Second time, slow delivery, nicely bowled this time. Beautifully rolled on the track, one in the form of leg byes there. So Farooq is struggling in front of the new bowler, not able to contact with the bat there. Anyway, they will be satisfied with the rotation on the strike, sending the partner Ramunyi back in the strike region. So 2 balls completed, 2 runs considered, 1 run considered. And this time was not able to get it. So there was something connection with the bat. 1 more runs added here. Scorecard is moving to 9 on the board. 3 balls completed, 9 runs on the board. Really bowlers are not allowing the batsmen to go for the big shots. So far 1 boundary we can see in the batting side. 3 balls completed from the new bowler who is ready to deliver the 4th one over the wicket. Shashidharan from side of Ashok Blasters. Here comes Shashi. And that's a Lucy deliver, looks a big shot up in the air and into the hands of the fielder. Wicket down. The opener Farooq departed in the form of catch out. So really that was advantage delivery coming from the bowler's region. Batsman striking very hard towards the mid-wicket, but the power was not enough. Ball landed safely inside the hands. Wicket number 1 down for Fire Blasters of the completion of 1.4 overs. 9 for the loss of 1 wicket. So after losing the opener, here comes a new player, Marshall.
Batting at number 3, moving to the non-strike region, joining with Ramunyi. So 4 balls completed. So Shashidharan ready to deliver the 5th one over the wicket to Ramesh. Rolling well, look for that cross shot. The ball heading the pads there, really beautifully bowling. The new bowler from side of Ashok Blasters not allowing the batsman to go for the big. We've seen Farooq tried for the big shot in the 4th delivery. He failed in front of the fielders. Now 5 balls completed here. 9 for the loss of 1 wicket. Not a good start from the batting side. They scored 7 in the very first over. So really great comeback we've seen from the bowling side. Shashidharan, here comes the ball number 6. And full delivery playing down the track. And dot ball. Over number 2 comes to an end. Scorecard remains 9 for the loss of 1 wicket. See the bowling figure of the bowler like Shashidharan bowled the 1 over, considered 2 runs, got a wicket of the opener. Really good piece of bowling. 2 overs completed, 9 for the loss of 1 wicket. So 3rd over in progress. Here comes a new bowler, Ashok. 9 runs came from the first 2 overs. Captain brings the right bowler, Ashok, into the attack. And nicely played. This time finds the gap. It goes directly into the boundary. That is a beautiful stroke from Marshall. So in the previous innings, we've seen he started the innings with a beautiful boundary. The same kind of a shot we've seen in this present game. The previous match he departed in the form of 8 wicket. We see the cricket boy hit at the stumps in the previous match. So Marshall have to contribute much to put the decent total. Started perfectly with the boundary. Let's wait how well he can treat the bowler like Ashok. Second time. Slower delivery this time. Nicely placed. Ball moving into the offside region. So just a single, sending the partner Ramunyi back into the attack. I was talking about the batting ability of Ramesh Ramunyi in the regular underarm cricket. Specialist in the 7s and 9s format. Is having the ability to sweep the ball. And this time looking for the big shot. Apples are going on. Confidential one from the wicket keeper, but umpire Sheikh Malali is not interested with the appeal. He denies the appeal, so dot ball considered. There are 3 balls completed from the new bowler. So good comeback we can say. The very first bowler got the punishment from the batsman like Marshall with the boundary. Single, dot ball, 3 balls completed, ready to deliver the 4th one around the wicket to Ramunyi. Here comes the ball number 4. Slow one, nicely saved. There is the fielder, the protector for side of Ashok Blasters in the gilly region. So one more single taken for the batting side. So 4 balls completed. Here comes Ashok. And Lucy, this time shot selection was wrong from the batsman. That was the Lucy delivery. He was trying for the reverse shot, completely missed. One more single added there. 5 balls completed from the new bowler Ashok. Scorecard remains on 16 runs on the board. 3rd over in progress. Ashok with the final one around the wicket to Ramesh. Playing down the track. Strikes Maria. That was a powerful one into the crowds. That is a beautiful Ramunyi. Much needed maximum scorecard. Having a big change here. It goes to 22 of the completion of 3 overs. What a connection from the batsman. Nicely focused on the cricket ball. Till it reaches to the batting area and connects it perfectly with the powerful and finds the gap. It goes all the way into the boundary. So second boundary of the innings. First one for the batsman like Ramunyi. In the previous match we seen he was just busy with getting the singles by sweeping into the onside and offside region. But this time you have to charge the bowlers. You already missed his partner Farooq in the form of catch out in the very second over. So he have to contribute much to get the decent total on the board. 3 overs completed here. Ashok considered
Almost 14 runs in the previous over. That was an expensive one from Ashok Blasters. So captain brings Shashidharan again into the attack to bowl the fourth over. We've seen the perfect second over from this man. Let's wait how well he can bowl to the right-handed batsman Marshall. He goes for the big shot, up and over. This time ball landing the no man's region. Confusion between the fielders, and they are calling for the third, and is running to the danger end. Bowler was not aware. 3 runs. Good running between the wicket. Big misunderstanding between the fielders. We can see 3 fielders standing in the offside region. 1 inside the 30-yard circle, 2 outside the 30-yard circle. But the ball landed safely inside the ground. Meanwhile, batsmen converted couple into the third one. So 3 valuable runs added here. Good start for the batting side in the over number 4. Here comes the ball number 2. Rolling one. This time not able to get it. So 2 was completed. Ramunji targeting into the same region. We've seen the 6 in the final delivery of the previous over. And the captain from side of Ashok Blasters brought a fielder in the same region. Let's wait. Can Ramunji go above the fielder there, or will he change the direction? Looks for the big shot into the hands of the wicket keeper. So that's a floppy one. Is indicating, but umpire says Ramunji should walk back to the pavilion. Wicket number 2 down. Another opener departed for side of Fire Blaster. Scorecard remains 25 runs for the loss of 2 wicket. So 3 was completed. Here comes a new player, Rafiq. So Shashidharan over the wicket to Rafiq. And rolling Wodello strikes very hard. This time it goes into the deep region, bouncing and all the way into the boundary. So beautiful strike from the player, Rafiq. For side of Fire Blasters, really a blasting performance we've seen in the very first game against MCC Opal, I think. Got 2 maximums with his reddish cricket bat, but this time is coming with another bat here. Let's wait how well he can play. Here comes Shashidharan. And Saksmaria this time into the deep region and bouncing and all the way into the boundary. That is a beauty number 2. 2 in 2 there. See the connection from the player. This is the cricket match going above 40 years old. Still the potential cricket match we can see from the player like Rafiq. The age doesn't matter. The age is just a number. Here comes Shashidharan. Around the wicket. 5 balls completed. And slower delivery this time pressure for the bowler. Bowling to a select stick. Don't want to bowl towards the offside region. He treated with the 2 balls, but 2 balls gone away and into the boundary rope. So it's trying to bowl towards the select stick region. But this time it considered as a wide. 5 balls completed. Here comes Shashidharan. Rolling one. Nicely played this time towards the offside region. Deep covers region. Running for the single. And they may be happy with the single because Rafiq will face the final bowler. 4 overs completed here. Scorecard remains 35 for the loss of 2 wicket. So good comeback we can see from the batting side. 7 runs came from the very first over. 2 runs considered by Shashidharan. 14 runs considered by Ashok in the over number 3. Again captain brings Shashidharan back into the attack to bowl the perfect over. But we've seen 2 beautiful boundaries from the bat of Rafiq that made team total 35 in the first 4 overs. Slight discussion going from men in green who will bowl the over number 5.
So final over in progress. Here comes the new bowler Aravind Shetty. Taking the guard, right time around the wicket to Rafiq. Oh my goodness. Slower delivery. Was that a needed one? Wicket-keeper's mistake. So 1 run gifted by the fielding side. There was no chance for the single. So rotation on the strike. Rafiq and Marshall. Over number 5 started perfectly from Aravind Shetty. And this time a little bouncy in the final moment. Not at all a mistake from the batsman. He was waiting for the rolling delivery ball. Pitching when it reaching to the batsman's area. That makes a little confusion. Here comes the ball again. Nicely delivered, slow one, quick one into the sticks, into the middle stick there. Third wicket down. Marshall walks back to the pavilion. So they got a single in the very first ball that made Rafiq to stand in the non-strike region. And dot ball and a wicket. 3 balls completed here. Scorecard remains 36 on the board after losing the wicket of Marshall. Here comes a new player. Udaya had a brilliant innings in the previous match. We've seen he scored 16 runs from last 4 balls for the team like Fire Blasters. So the team like Fire Blasters having the top class batsmen playing in this tournament. We've seen Farouk the opener, Ramuni, Marshall, Rafiq, and now we can find the new player Udaya who scored 16 from 4 balls. The attacking innings in the previous game. Here comes Aravind Shetty. Rolling ball, looks for a big shot, up and over this time, bouncing inside the ground. Meanwhile, batsman is just running for the single. So Udaya opens the account with a single. Scorecard is moving to 37. 4 balls completed, 2 more deliveries yet to come from Aravind Shetty. See the bowling performance of the final bowler, Aravind Shetty, keeping the pressure away, bowling perfectly, slower delivery. Little spin, we can see the leg spin delivery this time. And Rafiq departed. 1 more wicket down. Anyway, Rafiq done his job perfectly for his side. We see 2 boundaries in his innings and finally walking back into the dugout. Departed in the form of run out. 5 balls completed. 37 runs on the board. Now Amit will join Mr. Udaya. Good piece of bowling done by the final bowler Aravind Shetty. Just 1 run considered in the final over. Here comes Aravind Shetty to Udaya. And playing down the tracks, lofted up in the field underneath it and gets it. Nicely collected and innings completed here over number 5, completed perfectly from the bowler Aravind Shetty. Scorecard remains on 37 runs. 38 runs will be the victory target for Ashok Blasters in the limited 5 overs. I request each and every player, please speed up the game. .37 is the target from limited 5 overs. Let's wait which 2 openers will open for the team like Ashok Blasters. And let's wait which bowlers will bowl for Fire Blasters in the second innings. And we have Nasir Kanyana once again in the commentary box.
Hall. Hall. Thank you. Now Shad Burak. So 38 is a victory target. 38 റൺസിന്റെ ലക്ഷ്യമാണ് ഈ മത്സരം വിജയിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി 30 പന്തിൽ. Hall. Please start the match. Hall. Welcome. Hall. Okay, welcome back for the SACLA Trophy 2022. Baba Brothers and the BSC BEKUR proudly presenting the historical Cricket Festival of UNDERARM Cricket Above 40 Cricket Tournament for SACLA Trophy 2022. The now matches between Ashok Blasters and Fire Blasters Kasaragod. So 38 is a victory target in 30 balls. The opener Aravind Shetty is opener and calling that is no ball. So no ball call for the umpire. The 6 balls on the outside, that's why umpire call for the no ball. It's a no ball call for the umpire for extra run added to the scoreboard. And also we are waiting for that decision. Is a free hit. The free hit decision for the umpire. And so after the completion of 0 balls, has not started any balls. The first ball for that's a no ball. Now account is open just for 2 runs. Now free hit chance. Now first ball of the over. Look at that brilliant bowling. What a bowling piece. That's a really good one for that bowler name. Udaya. Udaya from Fire Blasters. And the batsman Samir Baba and the non-striker Aravind Shetty. The second spell of the over. And look at that ball for Udaya. The really good one. The rolling delivery not connected with bat and ball. Is again and again 2 dot balls, and first of all no ball, and after that 2 dot balls, and 2 deliveries completed and 4 deliveries remaining. This is the 10th spell of the over. Udaya
Oh, look at that ball. What a bowling. What a magical piece of ball from Udaya. They absolutely did it very well. The 3 balls completed and the 3 balls remaining. And 2 is a total in 3 balls. So after the completion of first 3 balls and fourth ball, look at that wonderful shot, and finally the ball with the wide long off religion, and finally they're running behind the ball for that fielder. They completed 2 runs. The couple of runs added to the scoreboard after the completion of 0.4 balls, and scoreboard directly jumping to 4 on the board in ball-to-ball score here. So after the completion of 4 balls and 4 is a total. Now once again Udaya to Shamir Baba. Look at that ball. Look at that ball for Udaya. What a good bowling piece, and every balls, that's a really good bowling from the side of Udaya from Fire Blasters. That's a rolling delivery, and after the completion of first 5 balls, now final delivery of the over. Look at that bowling piece, and once again they tried for the reverse in a long leg relation, and this was single runs added to the scoreboard, and over number 1 completed. The first over completed, and total scoreboard showing on test for 5 runs. And they're requesting for the tossing ceremony for the next match. Okay, sorry. The next match is between Masters Workadi and BSC BEKUR. I think Masters Workadi won the toss and chose elected by field first. So ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് മത്സരം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണമെന്ന് അറിയിക്കുന്നു. ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിൽ ഏകദേശം 13 മത്സരമാണ് ഇവിടുത്തെ ഷെഡ്യൂളിൽ സൂചിപ്പിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഈ മത്സരം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ അറിയിക്കുന്നു. ഏകദേശം വൈകുന്നേരത്തെ 6:24 ആകുമ്പോൾ പടിഞ്ഞാറൻ ചക്രവാളത്തിന്റെ അറബിക്കടലിലേക്ക് സൂര്യൻ നീങ്ങുന്ന സമയമാണ്. അതിന് മുമ്പായി തന്നെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഈ മത്സരം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണമെന്ന് പ്രിയപ്പെട്ട മത്സരാർത്ഥികളോട് വളരെ സ്നേഹത്തോടെ അറിയിക്കുകയാണ്. 13 മത്സരങ്ങൾ ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിൽ നടക്കാനിരിക്കവേ ഇത് 9ാമത്തെ മത്സരമാണ് ഇവിടെ പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇനി ഏകദേശം 4 മത്സരമാണ് അവശേഷിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ദയവ് ചെയ്തു എത്രയും പെട്ടെന്ന് മത്സരത്തെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണമെന്ന് അറിയിക്കുന്നു. So this time the lovely one for first over completed, and 5 is a total, and 38 is a victory target, and 33 run needed in 24 balls. So wait and see now the first delivery of the second over. The bowler is Hamid. Now Hamid to Dinakar Shetty. This time the lovely one. Wow! This is a high-level ball for the straight hit maximum. What a shot! Absolutely brilliant. It's in more than 75 meters in straight hit shot. The scoreboard directly jumping to 11 on the board, and 27 run needed to victory for 23 balls. That's a really good comeback for that batsman. Shamir Baba on fire. So after the completion of first delivery of the second over, look at that Shamir Baba's batting style. He's a very good right-hand batsman from UNDERARM cricket. So 27 runs needed to victory for 23 balls. Now second spell of the over, the new bowler, that is Hamid to Dinakar Shamir Baba. Now second spell of the over, and requesting to the bowler, please continue. Now second spell of the over. Look at that bowling piece, and just for single runs added to the scoreboard behind the keeper. The ball is just like the slip side and not connected perfectly. So just a dot balls, and for the leg pies 1 runs, and single runs added to the scoreboard, and scoreboard directly jumping to 12 on the board. So this time the lovely one, the same position, that fielder running behind the ball, and 1 run completed and a couple of runs. 2 runs added to the scoreboard. And after the completion of 0.3 balls, and I think the still decision is pending, and bites and 2 runs. So after the completion of 3 balls and 14. Look at that ball. Look at that ball. That's a really good one. What a good comeback for that bowler. Absolutely they're doing very well, Hamid. And after the completion of first 3 balls in the second over, the scoreboard still showing on 14 on the board. Little mistakes of that ground. That's why both the officials are discussing
that finally is a not out, not any positive results from the side of umpires. And I'm requesting to the players from Fire Blasters, please do not take any extra times. I'm requesting to all the players, now time exactly in the evening, 3 o'clock and 50 minutes. So this time lovely one, very good shot in the deep extra cover region, and 1 run completed. And after the completion of 0.5 balls, a score position to 15 on the board, and 38 is a victory target. So after the completion of first 2 overs and score showing on 15 on the board. 15 is the total and lots of 0 wickets. 38 is a victory target. 15 is the total. And I think 23 run needed for 18 balls. So 23 run needed. ಕೊನೆಯ 18 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 23 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ವಿಜಯಶಾಲಿಯಾಗುವುದಕ್ಕಾಗಿ. ಇದೀಗಾಗಲೇ ಬಾಬಾ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಅದೇ ರೀತಿ BSC ಬೇಕೂರ್ ಅಭಿಮಾನದಿಂದ ಸಾಧನಪಡಿಸುತ್ತಿರುವ 40 ವಯಸ್ಸಿನ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ಸಕ್ಲಾ ಟ್ರಾಫಿ 2022. ಇದೀಗಾಗಲೇ 18 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಸರಿಸುಮಾರು 23 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವಾಗ ಆರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು ಬಲವಾದ ದಂಡನೆ, ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲಕರ ವೈಫಲ್ಯವನ್ನು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅವಳಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಫೈರ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಕಾಸರಗೋಡು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಅಶೋಕ ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಉಭಯ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಂತಹ ಜಿದ್ದಾಜಿದ್ದಿನ ಪೈಪೋಟಿಯನ್ನ ಗಮನಿಸುವುದಾದರೆ ನೇರ ಪ್ರಸಾರದಲ್ಲಿ ದೇಶ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಹಲವಾರು ಕ್ರಿಕೆಟಿನ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಕಿಂಗ್ಸ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇದರ ನೇರ ಪ್ರಸಾರದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಆರಂಭಿಕವಾಗಿ 1 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ್ರೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಜಮೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಸರಿಸುಮಾರು 17. ಆರಂಭಿಕವಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸೊಗಸಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ನನಗೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಡೆದಿರುವಾಗಲೂ ನೇರವಾಗಿ ಸೀಮಾ ರೇಖೆಯ ಗಡಿಯನ್ನ ದಾಟಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಬೌಂಡ್ರಿ. ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯದ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇದೀಗಾಗಲೇ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಜಮೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಸರಿಸುಮಾರು 21. The 17 run needed to victory for 16 balls. 16 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 17 ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭ ನೇರವಾಗಿ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೆ ಕವರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 1 ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳಿಸುತ್ತಾ ಆರಂಭಿಕವಾಗಿ ತೃತೀಯ ಓವರಿನ 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆರಂಭಿಕ 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ್ರೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಜಮೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಸರಿಸುಮಾರು 22. ಈ ಮೂಲಕ ಬಲವಾದನಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಪಟ್ಟರು, ಆದರೆ ಚೆಂಡಿಗೂ ದಂಡಿಗೂ ಯಾವುದೇ ಸಂಪರ್ಕವಿಲ್ಲದೆ ಚೆಂಡು ನೇರ ಚುಕ್ಕಿಯ ಹಾದಿಯನ್ನು ಹಿಡಿತಾ ಇದೆ. ಆರಂಭಿಕವಾಗಿ 4 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 4ನೇ ಬಾರಿಯ ಚೆಂಡಿನ ಬಳಿಕ ಪಂಚಮವಾರ್ಷಿಕ ಪ್ರಯೋಗದಲ್ಲಿ ಮೂಲಕ ಚೆಂಡಿಗೂ ದಂಡಿಗೂ ಯಾವುದೇ ಸಂಪರ್ಕ ಇಲ್ಲ, ಕಾರಣ ಅಗಲ ಎಸೆತ ಎಂಬ ನಿಶಾನೆಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಮೂಲಕ ವೈಟ್ ಘೋಷಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭಿಕ 4ನೇ ಚೆಂಡಿನ ಬಳಿಕ ಪಂಚಮ ಬಾರಿಯ ಚೆಂಡು ಈ ಮೂಲಕ ನೇರವಾಗಿ ಮಿಡ್ವಿಕೆಟ್ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಸಾಗಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಚೆಂಡು 1 ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳಿಸುತ್ತಾ ಆರಂಭಿಕವಾಗಿ 5 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಾಗ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಜಮೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ 24. 38ರ ಗುರಿ ಇದೆ, 14ರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಮೂಲಕ ಬಲವಾದದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟರೆ ನೇರವಾಗಿ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೆ ಮಿಡ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 1 ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 3 ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. In 3 overs completed and the total score was showing on 25 for quarter century. 25 for 0. The last 12 balls remaining and 13 run needed to victory for 12 balls. An exact 6.5 is a required run rate and 8.34 is the current run rate and 6.5 is a required run rate to touch the goal here for the second innings. The match is between Ashoka Blasters and 5 Blasters Kasaragod. The last 12 balls, they need 13 runs to victory.
the one of the mega cricket festival of UNDERARM cricket, in official panel, main umpire Sheikh Malali and the leg umpire Mr. Shakir Uppala is the square leg umpire, and in commentary panel this time the lovely man, that's a brilliant 40 back shot over, absolutely the magnificent maximum. What a good comeback. Samir Baba, sorry, Aravind Shetty, that's a brilliant one. The 6 runs added to the scoreboard, score directly jumping to 31 on the board, and just 7 runs needed to victory. What a good comeback. The second spell of the over. Look at that ball, and ball just to the gully side, and so single runs added to the scoreboard. And after the completion of first 2 balls, so we got 32 on the board. And 30. So 32 is the total this time. The river sheep, no fielders there. The ball finally crossed the boundary line, and one more boundary. It's another boundary for this innings. The really good comeback. Only 38 is a victory target now. The score moves on to 36 on the board. They need only 2 runs for 9 balls. The 9 balls remaining, and 2 runs needed to victory. Once again, that also a very good shot for another gap shot, and single runs added to the scoreboard, and match will be tied for the level score. 37 on the board. 37 and level score will be showing here. So 38 is a victory. Last one more. So last one more delivery. This time the lovely man. Wow! What a shot! It's another one for flawless performance. And total score showing on 43. 38 is a victory target, and 43 is the total. And no doubt about the man of the match. Heartily inviting the man of the match award goes to requesting Mr. Aravind Shetty from Ashoka Blasters. Please come and collect your man of the match award. Requesting Mr. Abdul Rahmanji, please hand over this man of the match award. And also I requesting to the next commentary box in sweet and national language Hindi, and also sweet and state language. So little changes to the man of the match stage. I requesting one of the most popular cricketer in UNDERARM cricket, Chemi Hasangari, please hand over the man of the match award to Aravind Shetty from Ashok Blasters. I requesting to Mr. Chemi, and also I requesting Mr. Aravind Shetty, please come and collect your man of the match award, and Chemi Hasangari, please hand over this man of the match award. And heartily inviting Mr. Abdul Rahman, one of the most famous commentator in national language Hindi. ദയവ് ചെയ്ത് മാൻ ഓഫ് ദ മാച്ച് വേദിയുടെ മുമ്പിൽ ആരും തന്നെ ഇരിക്കരുത്. ദയവ് ചെയ്ത് പ്ലേയേഴ്സുമാർക്ക് പ്രത്യേകമായ ഡെക്കോട്ട് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇരിക്കാവൂ. ഒരു കാരണവശാലും മാൻ ഓഫ് ദ മാച്ച് വേദിയുടെ മുൻവശത്ത് ആരും തന്നെ ഇരിക്കരുത്. റിക്വസ്റ്റിംഗ് മിസ്റ്റർ റവി ശാസ്ത്രി ഫ്രം UNDERARM cricket, Mr. Abdul Rahman. धन्यवाद मिस्टर नासिर कन्याना और इसी तरह नौशाद बुराक, आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं। और इससे प्रतियोगिता है सकला ट्रॉफी 2022 और इसी तरह BSC बेकुर और बाबा ब्रदर्स जो मिलकर इस प्रतियोगिता पेश किया गया है। और इस प्रतियोगिता के लिए आए हुए इस शाम के वक्त पर आए हुए सभी दर्शकों को स्वागत करना चाहता हूं। आज के दिन पहले दिन है, कल के दिन आखिरी दिन, और इस दिन के 10वें मैच यहाँ पर खेला जा रही है। आज के दिन 13 मैच खेलना है। जो कप्तान ध्यान दीजिए, जल्दी जल्दी इस मैच को खत्म करना है। अरे कोई भी प्रतियोगिता खड़े करती हैं तब कोई भी
जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की इच्छा ये होती है कि चाहते हैं कि जल्दी जल्दी खत्म किया जाए, जो शेड्यूल के समय पर जो खत्म किया जाए। यहाँ पर जो मैदान की तैयारी कर रही हैं राजेंद्र, इनको बड़े बिग सैल्यूट देना चाहता हूँ। अंडरआर्म क्रिकेट के सबसे अच्छे खिलाड़ी जो क्रिकेट को कितने जो चाहते हैं, कितने मोहब्बत करते हैं, ये जानना चाहिए, क्योंकि ऐसे बड़े बड़े खिलाड़ी आकर अपने जो इस प्रतियोगिता में हमारे साथ मौजूद होकर हमारे साथ मिलकर ऐसे जो सेवा कर रही हैं, ऐसे जो खिलाड़ियों को तारीफ करना चाहिए, उनके सामने झुकना चाहिए। बिग सैल्यूट सर, यहाँ पर बहुत बड़े जो योगदान दिए हैं बीएससी बेकुर और मास्टर वर्काली के बीच में इस दो टीम खेला जा रही है। बीएससी बेकुर ने इस मैच में भी टॉस हारकर पहली बल्लेबाजी करने के लिए योगदान मिले हैं। बॉलर की जैसी नंबर 02 तैयार है। इस्माइल बाबा स्ट्राइक पर है, नॉट स्ट्राइकन पर इंटी। पहली गेंद बिल्कुल लॉलीपॉप गेंद उठा करके ला है, मिड विकेट पर फिर तैनात इन्होंने गेंद को तेजी के साथ उठाए, तब तक एकमात्र रन इस्माइल बाबा की खाता खोल चुके हैं। एक रन तेजी के साथ, लेकिन दूसरे के लिए मौका थे लेकिन दौड़ नहीं पाए। मोहन चक्कपोस्ट ने आकर गेंद को उठाए, तब तक एक रन, और इस एक रन की मदद से संख्या बढ़ते हुए एक खाता खोल चुके हैं बीएससी बेकुर के। इस प्रतियोगिता के सबसे छोटे रन बनाकर जो लपट लिए थे पिछले मैच में। हो बढ़िया गेंद, बढ़िया गेंद। बल्ला और गेंद के बीच में कोई संपर्क नहीं हुई। बल्लेबाज एक जो बल्लेबाज के जो साथ में जो बड़े अपील किए इनकी पुसोट के सामने। फिर एक बार और गेंद को उठाकर खेला है लॉन्ग ऑन पर, बिल्कुल अच्छे जगह बनाए, लेकिन फील्डर काफी अच्छी फील्डिंग की मजारा की। एकमात्र रन, और इस एक रन के साथ इंटी खेल रही है 2 गेंदों पर 1 रन बनाकर। 1 गेंद पर 1 रन बनाकर खेल रही है इस्माइल बाबा। बहुत अच्छी बल्लेबाजों के बीच में इस जोड़ी मैदान पर है। फिर एक बार प्रसाद लॉलीपॉप, बहुत अच्छी शॉट लॉन्ग ऑन इलाके पर खेला गया है। फील्डर तैनात है, इन्होंने गेंद को तेजी के साथ उड़ाया, तब तक एकमात्र रन, और इस एकमात्र रन के सहारे के साथ रन संख्या कुल मिलाकर 3 रन। और इस मैच को देखने के लिए, आंखों की हाल देखने के लिए बहुत कुछ लोग आए हैं यहाँ पर। और कैप्टन ऑफ बीएससी बेकुर, बहुत खूबसूरत खूबसूरत शॉट, उल्टा बल्ला। अंतिम क्षण में इन्होंने जो डिसाइड किए थे बल्ला घुमाने की, बहुत खूबसूरत शॉट, चौका। फिर एक बार प्रसाद 20 6। ओके, छक्के की इशारा किए अंपायर ने, बहुत खूबसूरत छक्के। फिर एक बार प्रसाद, हो बढ़िया गेंद। इस बार तो बहुत अच्छी तरह वापसी लौटे हैं, वापस लौटे हैं, और इसी के साथ ओवर की संपन्न हो चुके हैं। स्कोर संख्या 9 बिना किसी नुकसान के साथ। किंग कोबरा എംസിസി ഉപ്പള രണ്ട് ടീമും സൈനപ്പ് ചെയ്യുക. അതിനു മുമ്പ് ഫോട്ടോ സെഷനിലേക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് വരിക രണ്ട് ടീമും. കാരണം ഇതുവരെ നിങ്ങളുടെ ടീമിന്റെ ഫോട്ടോ ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടില്ല. बहुत अच्छी शॉट, 1 रन के सहारे के साथ स्कोर संख्या बढ़ते हुए 10 रन. दूसरी ओवर के रूप में गेंदबाज है सुनील. सदानंदा है गेंदबाज. दूसरी गेंद फेंकने के लिए तैयार. लॉलीपॉप गेंद उल्टा बल्ले में खेला गया है. गेंद तेज रफ्तार से जाते हुए तैरमैन इलाके पर फील्डर मोहन चेकपोस्ट ने रोकना चाहते थे, कोई मौका नहीं. गेंद सीधा चौका, इंटी के बल्ले से निकलता हुआ चौका खूबसूरत थे. और इस चौके की मदद से संख्या बढ़ते हुए 14 रन, 14 ऑन द बोर्ड. दूसरी ओवर के सिलसिला जारी. इस्माइल बाबा और इंटी पुसोट कप्तान और ओनर के बीच में इस जो जोड़ी जारी है मैदान पर. लाजवाब जो शुरुआत दिया गया है पिछले मैच में. पहली ओवर में 18 रन की जो साझेदारी बनाए थे किरण की पहली ओवर में. फिर एक बार ओवर विकेट अंपायर को क्रॉस करते हुए तैयार. ओवर विकेट और एक बार उल्टा बल्ले में खेला गया है. इस बार फील्डर खड़े किए थे, फील्डर ने कोई गलती नहीं की है. मोहन चेकपोस्ट ने इस गेंद को लपेट लिया गया और इसी के साथ इंटी आउट. और इस मैच को जो YouTube में सीधा प्रसारण दे रही है
किंग स्पोर्ट्स पुत्तूर और किंग स्पोर्ट्स पुत्तूर के इस यूट्यूब चैनल में देखने वाली जो बाहर गांव के में बैठकर कहीं लोग इस मंजेश्वर इलाके की, कासरगोड जिला के, दक्षिण कर्नाटक की बहुत कुछ लोग इस मैच की आंखों की हाल देख रही है। सबको जो स्वागत करना चाहता हूं इस मैच के लिए, इस टूर्नामेंट के लिए जो यूट्यूब के लिए यहाँ पर बहुत बड़े जो सेवा की है, जो जानते हैं फिरोज मंजेश्वर के रूप में यहाँ पर जो शुरुआत की है इन्होंने, जो यूट्यूब चैनल के साथ सीधा प्रसारण देना चाहिए और सभी के साथ मिलकर इन्होंने बंदोबस्त की है। सब बहुत बढ़िया सेवा की है, धन्यवाद देना चाहता हूं। और इसी तरह जो एबो 40 अंडरआर्म व्हाट्सएप ग्रुप में सभी लोग इस भाग लिए इस यूट्यूब चैनल के लिए। और बहुत खूबसूरत शॉट परवेज इस्माइल, मैंने पिछले मैच में भी कहा था कि 1992 2005 तक BSC बेकूर के बड़े जोड़ी थे। अब उस जमाने की याद दिलाते हुए दूसरी एक बार दोनों जोड़ी मैदान पर है। बहुत खूबसूरत शॉट, वाइड स्मिथ विकेट पर गेंद जाते हुए फील्डर ने तैनात है। खूबसूरत फील्डिंग, बहुत अच्छी फील्डिंग अजीत रो प्रसाद ने इस फील्डर के रूप में आए थे। एकमात्र रन और इस एक रन की मदद से संख्या बढ़ते हुए 17 after completion of 2 over, loss of 1 wicket. MCC ടീമിന്റെ എല്ലാ മെമ്പേഴ്സും തയ്യാറാണെങ്കിൽ ഫോട്ടോ സെഷനിലേക്ക് പോകണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. നാസർ പുസോട്ട് ആ ഫോട്ടോ സെഷനിൽ സഹകരിക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. गेंदबाज के रूप में तैयारी हुए हैं सुनील, कप्तान मरतला की यानी कि मास्टर वर्काड़ी उठा कर गया है, बहुत बड़ा शॉट, वाह भाई वाह, इस्माइल बाबा तगड़े बल्लेबाज जाना जाते हैं इनको, इन्होंने उठा कर खेला है। कितने लंबे शॉट लगाए, मेरे ख्याल में कम से कम 105 मीटर तक इस गेंद जाकर गिरे, बहुत बड़े शॉट। छक्के की मदद से संख्या बढ़ते हुए 23 ऑन द बोर्ड। स्वागत किए हैं सुनील को छक्के लगाकर। फिर एक बार अच्छी गेंद, बहुत खूबसूरत है। लक्ष्म के काफी बाहर से उठाकर खेलना चाहा लेकिन बल्ला और गेंद के बीच में कोई संपर्क नहीं हुए, लेग बाई की इशारा दिए और इस एक रन की मदद से संख्या बढ़ते हुए 24। इस्माइल बाबा अपनी फॉर्म को बढ़ाते हुए बहुत खूबसूरती के साथ दे रही है। फिर एक बार सुनील राइट आर्म ऑन द विकेट, परवेज उठाकर खेला है, मिड विकेट पर भी तैनात है। यहां पर खतरा हो सकते थे लेकिन बाल बच गई। परवेज तो बाल बच गई। Sakir Upala, please come here. फिर एक बार सुनील टू इस्माइल बाबा, राइट आर्म ऑन द विकेट। AK-47 से निकलता हुआ गोली की तरह इस गेंद फाइन लेग पर सीमारे को पार किए, चौका इस्माइल बाबा, बहुत खूबसूरत चौका। और इस चौके की मदद से संख्या बढ़ते हुए 29 ऑन द बोर्ड। तीसरी ओवर की चलती पर है, 2 गेंदे बचे हैं। और इस बार उठा कर खेला है, गैप में गेंद जाते हुए 1 बाउंस बाउंड्री। वाह भाई वाह, व्हाट अ बैटिंग परफॉर्मेंस। मिस्टर इस्माइल बाबा टीम के मालिक हैं और कप्तान आउट होने के बाद खुद जवाबदारी लिए। बहुत बड़े शॉट इन्होंने 3 बार लगाए, 2 बार चौके, 1 छक्के। सुनील महंगी साबित होते हुए 33 ऑन द बोर्ड। फिर एक बार सुनील टू इस्माइल बाबा, राइट आर्म ऑन द विकेट, अंपायर को क्रॉस करते हुए इस्माइल खड़े खेलना चाहते थे, कदमों के इस्तेमाल नहीं थे इस गेंद पर। बहुत अच्छी गेंद और इसी के साथ ओवर की समाप्त हो चुके हैं।
33 on the board after completion of 3 over. 3 ओवर की समाप्त हुए हैं। एमसीसी उपला जो अपने हस्ताक्षर के लिए तैयार हो जाइए और फोटो सेशन के लिए तैयार हो जाइए। किंग कोबरा भी कोबरास भी और इसी तरह एमसीसी भी फोटो सेशन में तैयार हो जाइए। सकीर उपला के चाहिए सुधीर नए गेंदबाज के रूप में सुधीर पहली बार गेंदबाजी के लिए इस इनिंग्स में। फरवेज इस गेंद को खेला गया है, यहां पर तो खतरा हो सकती है। इस्माइल बाबा आउट। ये रन की रिस्की रन दौड़ रही थी। इस रिस्की रन में जो अंडरआर्म क्रिकेट के इंजमामुल हक जाना जाती हैं, शमीर बाबा और इस्माइल बाबा, ऐसे कुछ बल्लेबाज हैं जो अंतर्राष्ट्रीय मैचों में जो पाकिस्तान के इंजमामुल हक और इसे इंजमामुल हक के जैसे जो अंडरआर्म क्रिकेट में दो खिलाड़ी हैं, शमीर बाबा और इस्माइल बाबा, दोनों बाबा हैं, लेकिन एक तो पसोट के बाबा हैं, एक तो बेकुर के बाबा हैं, जो रनआउट के रूप में आउट होकर बॉलिंग को बाल लौटे हैं। अच्छी तालियों से स्वागत कीजिए, क्योंकि बहुत अच्छे लंबे इनिंग्स खेल कर आए जगदीश शेट्टी फ्रॉम कडम्बा। जगदीश तैयार है सुधीर के सामने बल्लेबाजी करने के लिए। सुधीर तो पहली जो फरवेज के लिए अराउंड द विकेट गेंदबाजी किया गया था, अब नए बल्लेबाज आए तो इन्होंने जो छोर बदल दिए हैं ओवर द विकेट। अच्छी गेंद फील्डर जा रही है गेंद के पीछे, बहुत खूबसूरत फील्डिंग मच्छी थ्रो और इसी के साथ 1 रन और इस 1 रन की मदद से संख्या बढ़ते हुए 34 ऑन द बोर्ड। बहुत अच्छी ओवर की शुरुआत की है सुधीर ने। एक अराउंड द विकेट फेंकते हैं, एक ओवर द विकेट फेंकते हैं इन्होंने। बल्लेबाज दोनों दाना हाथ के बल्लेबाज हैं। फिर एक बार सुधीर, अच्छी गेंद को छोड़ दिया गया फील्डर ने और इसी के साथ गेंद सीधा गए है चौका, 22 चौका। राइट बोलते विकेट कीपर के गलती में, इस गलती के परिणाम यहां पर बल्ले जो बीएससी बेकुर को मिला है, यानी कि चौका की, यानी कि 4 रन की मदद मिली है, संख्या बढ़ते हुए 38 ऑन द बोर्ड। बिल्कुल दबाव थे बीएससी बेकुर के खाते पर। अब अगली गेंद सुधीर अराउंड द विकेट अंपायर को क्रॉस करते हुए परवेज के लिए, परवेज उठा कर खेला है, इसका लग पर फील्डर तैनात है, गेंद को तेजी के साथ पकड़ लिए, थ्रो किए, तब तक एकमात्र रन और इस 1 रन की मदद से संख्या बढ़ते हुए 39 ऑन द बोर्ड। अब तो देखिए जो बल्लेबाज बदलते हैं इन्होंने छोर भी बदलते हैं, जो अराउंड द विकेट से ओवर द विकेट सीधा गए। अब तो बल्लेबाज बदल गए, जगदीश के लिए गेंदबाजी करना चाहते हैं अपनी ओवर की 5 विकेट लेके। ये तो रुकने वाला नहीं, गेंद तो सीधा गए सीमा रेखा को पार किए, चौका, बहुत खूबसूरत चौका लगा दिया गया। पहले छुप गए थे बल्लेबाज, शरीर और बल्ले को एक साथ लाए, 1 फुट आगे बढ़े और गेंद के गति के जैसे देखे, नजर लगाए, सीधे शिप किए, गेंद फाइन लेग पर, बहुत खूबसूरत चमत्कार दाबर चमनराज चौका। फिर एक बार सुधीर तो जगदीश, उल्टा खड़ा हो गई, गेंद तो लेग साइड पर जा रही है। अब सिर पर कोशिश किए थे 1 रन और इस 1 रन की मदद से संख्या बढ़ते हुए 44 ऑन द बोर्ड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 4 ओवर। नए गेंदबाज के रूप में प्रसाद को वापस बुलाया जा रही है। प्रसाद तो इनिंग्स के पहले ओवर गेंदबाज के रूप में फेंका गए थे, इनको खोटे में दूसरी ओवर दिया गया है कप्तान ने। सुनील है कप्तान, बहुत अच्छी कप्तान है, जो मंजेश्वर इलाके की लंबे सफर है अंडरआर्म क्रिकेट में। इनको जो मास्टर वर्काड़ी नाम से इस प्रतियोगिता में टीम खरीदा गया है, फ्रेंचाइजी बने हैं। धन्यवाद देना चाहता हूं जो मास्टर वर्काड़ी को और इसी तरह सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं। फिर एक बार उल्टा बल्ले में खेला गया, फील्डर तैनात है और दूसरी कैच, यानी कि मोहन चक पोस्ट ने जो बहुत बड़े अनुभवी खिलाड़ी हैं, इन्होंने जानते हैं कि जगदीश जो उल्टा बल्ले में खेलने वाले हैं, इन्होंने बहुत खूबसूरती के साथ उस जगह में जाकर खड़े हुए हैं
2 बार कैच लिए, एक इंती की, एक जगदीश शेट्टी की। बहुत अच्छे स्कोर हुआ, जो नेट रन रेट में बहुत काफी अच्छी रन रेट है इनकी, स्ट्राइक रेट में क्षमा कीजिए, स्ट्राइक रेट बहुत बढ़िया है, 200 की स्ट्राइक रेट में इन्होंने खेला है, बहुत खूबसूरत खेल। परवेश स्ट्राइक पर है, प्रसाद के सामने परवेश, क्या कर पाएंगे देखना बाकी है। प्रसाद के सामने, ओ अच्छी गेंद, अच्छी शॉट, गेंद तो फाइन लेग पर फील्ड हुई, बाउंड्री लाइन के अंदर रोका गया है, सिर्फ 2 रन, तीसरे रन के लिए कोई मौका नहीं। बहुत अच्छी फील्डिंग, तारीफ करना चाहिए फील्डर को, बहुत खूबसूरत फील्डिंग। 2 रन की मदद से संख्या बढ़ते हुए हैं 46 ऑन द बोर्ड। बहुत अच्छी ओवर जा रही है इस ओवर, मेरे ख्याल में जो 2 गेंदे फेंक चुके हैं। ऑप्शन की बाहर, रोलिंग डिलीवरी, बहुत अच्छी गेंद, 3 गेंदे फेंक चुके हैं, स्कोर खाते पर 46 रन। बहुत खूबसूरत कला के इस्तेमाल परवेज ने, 1 रन तेजी के साथ, दूसरे के लिए कोई मौका नहीं, बहुत अच्छे फील्डिंग, अच्छे थ्रो, संख्या बढ़ते हुए 47। 5 ओवर आखिरी ओवर है, नहीं डेथ ओवर है क्रिकेट की, ये इस मैच की। अच्छी गेंद, विकेट कीपर ने रोकने के लिए कोशिश की, 1 रन तेजी के साथ, दूसरी के लिए दौड़ रही है रत्नाकर, यहाँ पर 2 रन आसानी के साथ मिल पाएंगे और 2 रन की मदद से संख्या बढ़ते हुए 49 ऑन शॉट 50। अब रत्नाकर के आखिरी गेंद, डेथ ओवर की, यानी कि आखिरी ओवर की आखिरी गेंद है इनिंग्स की। उठा के खेला है, वाह भाई वाह, शॉट, रत्नाकर गैप में चौका छक्का लगाए, बहुत खूबसूरत शॉट थे रत्नाकर की, और इसी के साथ इनिंग्स समाप्त हुए 55 रन, यानी कि 56 इज द विक्ट्री टारगेट। അടുത്ത മത്സരത്തിനുള്ള ടീമുകളായ MCC അതേപോലെ കിങ് കോബ്രാസ് MCC ഉൾപ്പെടെയുടെ 6 ആൾക്കാർ ഇനിയും സൈൻ ചെയ്യാൻ ബാക്കിയുണ്ട്. 2 ഓവർ മാത്രമാണ് സമയമുള്ളത്. അതുപോലെ ഫോട്ടോ സെഷനിലേക്ക് പോവേണ്ടതുണ്ട്. കോബ്രാസ് ഒന്ന് ഫോട്ടോ സെഷനിലേക്ക് പോകണമെന്ന് വളരെ വിനയത്തോടെ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. $55-56 is the victory target. കോബ്രാസിന്റെ 2 ആൾക്കാർ സൈൻ ചെയ്യാൻ ബാക്കിയുണ്ട്. छप्पन रन के लक्ष्य पर यहां पर बल्लेबाजी करने के लिए सुनील मंजेश्वर और चरण माडा और सुनील मंजेश्वर दोनों बल्लेबाज तैयार हैं मैदान के बीचों बीच में. 56 रन बनाना है मैच को जीतने के लिए जो 5 ओवर में.
അടുത്ത മത്സരത്തിന്റെ ഫോട്ടോ സെഷനിലേക്ക് കോബ്രാസിന്റെ എല്ലാവരും വന്ന് നിൽക്കണം. അതേപോലെ MCC ഉപ്പളുടെ ഫോട്ടോ ചോദിക്കുന്നത് നാളെ ഓണേഴ്സ് ട്രോഫി നൽകുമ്പോൾ അതിൽ പതിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. ഇന്ന് കട പൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് നാളെ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന ആ ട്രോഫിയിൽ വെറും ബ്ലാങ്ക് ആയിരിക്കും. ആ ട്രോഫി ആ മൊമെന്റോയിൽ ബ്ലാങ്ക് മൊമെന്റോ തരുന്നതായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്, നിങ്ങളുടെ ഫോട്ടോസ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് അത് ബന്ധപ്പെട്ടവരുടെ മുമ്പിൽ വന്ന് ഫോട്ടോ സെഷനിൽ ഇരിക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. Okay, thank you, Rahman BEKUR. Welcome back to the SACLA Trophy 2022 conducted by BSC BEKUR and Baba Brothers, playing above 40 years old in underarm cricket. So match playing here between BSC BEKUR versus Friends Urkadi. BEKUR scored 55 runs in the limited 5 overs. We've seen the beautiful innings of Ismail Baba, which consisted one maximum and 2 boundaries in innings, and Imtiaz that made team total 55 in the limited 5 overs. 56 was the target for the batting side like team Friends Urkadi. See, 1 over completed, 5 for the loss of 3 wicket. That's the present condition of the batting side. Really great piece of bowling done by Imtiaz. Second over in progress. Full toss delivery this time completely missed by the wicket keeper. One in the form of Bice. So second over in progress. Here comes the bowler again, and one bounce delivery. So dot ball considered there. Satish is the new bowler for side of BSC BEKUR. Rolling delivery lofted towards the long on region. One bounce into the ends of the field. So good start we've seen from the bowling department. Imtiaz in episode 1 of the top class underarm cricketer in the regular underarm matches, playing the 40 above games here in the Mannanguzi Stadium. Looks at the big shot, up and over this time, bouncing inside the ground, I think. Yes, that is a beautiful boundary from the player, much needed for the batting side. They have to get 56 runs. Second over in progress already. 3 top order batsmen departed. Sunil the big man, Charan, Mohan, 3 batsmen departed for side of Friends Urkadi. Now Sharif and Prasad Shetty, that is the batting combination. Here comes Satish. And look at the river shot, clearly done, finds a gap, it goes all the way into the boundary rope again. 2 in 2 for the batsman. 5 balls complete, the scorecard is jumping to 15 runs on the board. So the batsmen are very much aware that Imtiaz will bowl the 2 overs in the 5 over matches. So they have to use all other bowlers. They have to get the good score here. So Satish gets the punishment again. Here comes the ball again. And nicely played this time. Ball moving into the ends of the field. And wide. Signal from the umpire. There was no connection. Ball was going far away. Ismail Baba was not able to get it. Wide +1, 2 runs. The scorecard is moving to 19. Second over in progress. See the comeback from the batting side. 3 batsmen depart in the very first over. Full toss. So this time wide plus, and appeals are going on wide, and batsman was safe.
So extras making the problem for the bowling side. They had a good start in the very first over. Imtiaz bowled perfectly, got 3 wickets. Now second over in progress. Satish scorecard is moving. And looking at the reverse shot, nicely played to the offside region, and little fumble, and batsman was not interested for the second run. Over number 2 comes to an end. Scorecard remains 20 runs for the loss of 3 wicket. So third over in progress, 20 runs on the board. Ismail Baba in the bowling mark. They have to do a comeback here. Expensive over we've seen from the second bowler, Satish. 5 runs came from the very first over. 15 runs considered by Satish. Here comes Ismail Baba. And nicely lofted. This time nicely played into the ends of the field. Just satisfied with single. Nicely playing Sharif. 10 runs so far in the innings of the batsman who came at number 4 for side. Here comes Ismail Baba. And look for the big shot. Miles up in the fielder, calmly waiting underneath and gets it. Prasad Shetty departed. Wicket number 4 down for Fencer Kadi. So Ismail Baba breaks here, makes the problem by picking the wicket. They have to put the pressure for the batsman. Already 21 runs on the board. 56 is the wicket target. Three balls completed here. 22 runs on the board. Sadananda is the new batsman, batting at number 6 for the side. Here comes Ismail. Nicely played. This time finds the gap. It goes like a tracer. Ball it into the boundary rope. Beauty from Sharif here. Again, scorecard is jumping for the batting side. It moves to 26 runs on the board. 4 balls completed. Third over in progress. See the comeback from the batting side. They lose 3 wickets in the very first over. And Imtiaz just conceded 5 runs. So great comeback done by the batting side. Excellent innings from Mr. Sharif. 4 balls completed. Here comes Ismail with the ball number 5. Full toss delivery this time. Just from the bat. One more single taken there. 5 balls completed. Here comes Ismail Baba. And bouncing delivery completely missed by the wicket keeper. One of the well-known UNDERARM wicket keeper. Imtiaz makes a mistake. Over number 3 comes to an end. Scorecard remains 28 runs on the board. 28. Three overs completed. 28 runs on the board. 28 runs needed. 28 വേണം. 12 to go and 28 runs to get. Still we can see the Sharif who is really in good touch with the bat at the non-strike region. Sada at the strike region in the bowling mark. Imtiaz comes to bowl the over number 4. Is ready to deliver the fourth over. 12 to go, 28 to get. The big shots, the big over will make the big change in this match. Here comes Imtiaz. Nicely played. This time ball moving into the boundary region and it goes all the way.
Fielder was a little lazy for that run. Took the late run. He was standing in the long on region. Ball was going wideish long on region, and it gone all the way into the boundary. It's a good start for the batting side here. Here comes Imtiaz, second time over the wicket. And this time into the pads, just a single. I would like to call the captain from side of MCC Uppala, King Cobras. Please report here for the tossing ceremony. 2 was completed here. 5 runs considered from the new bowler, Imtiaz. So Imtiaz is ready to deliver the third one over the wicket to Sharif. A slight change in the field position. Square leg fielder moves into the 30-yard circle, inside the 30-yard circle. Good start for the batting side in the over number 4. Started with the boundary single. Full toss. This time completely missed by the batsman. That was a really advantage ball, but Sharif was not able to get it with the bat. Dot ball considered there. So Imtiaz, 4th time over the wicket to Sharif. Rolling one, strikes very hard. This time into the answer of the field. Nicely collected, and finally the big man Sharif walks back to the pavilion in the form of catch out. Good recovery done by the bowler Imtiaz. They were struggling in front of the batsman like Sharif. We've seen Ismail Baba bowl the 3rd over. Satish bowled the 2nd over. That was expensive for the bowling side. Imtiaz comes again into the attack and started with the boundary anyway, doing the great comeback for his side. 4 balls completed. 5 runs considered by the bowler. That means 33 runs on the board. 23 runs needed from remaining 8 balls here. One big shot will make the big change in the equation. Here comes Imtiaz. Pitching delivery. This time again keeper was not able to get it. One in the form of Bice. 6 runs conceded by the bowler Imtiaz from 5 balls. So in the previous innings we've seen excellent batting performance from Ismail Baba. Scored 18 runs for his team, standing as a wicket keeper, doing the job as a wicket keeper. Here comes Imtiaz. And this time that was a legal delivery. So Imtiaz completes over number 4. Scorecard remains 34 runs on the board. 6 to go and 22 runs to get up. 6 പന്തിൽ നിന്ന് 22 റൺസിന്റെ ആവശ്യം. ധൻരാജ് ഒസങ്കാടി എവിടെയുണ്ടെങ്കിലും മൈക്ക് പോയിന്റിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുക. ധൻരാജ് ഒസങ്കാടി. So final over in progress here. 6 to go, 22 runs to get out. Very first ball. Strikes very hard. Up and over this time and bouncing inside the ground. That is the boundary to start the over number 5. Still the game is on here. 18 from 5 balls. Who's the new bowler? Ratnagar started with the boundary here. 18 from 5 balls, 2nd time. Slower delivery. This time connection was not perfect. Running for the single and what's going on there? The striker was not interested. He had to get the couple to move into the strike region. That was the thinking from the partner, but striker was not interested. He satisfied with single and standing in the non-strike region. Now 17 from 4 balls. Ratnagara over the wicket. And Lucy cheeky. This time nicely played. There is the fielder. The short 3rd man position. Meanwhile batsman complete the single. 6 runs considered from the bowler in the first 3 balls. Now 16 runs needed from 3 deliveries. And slower delivery. Looks at the big shot. Up in the field underneath it. And gets it. The power was not enough from the player. He departed. So that makes BSC BEKUR easy to get the victory here. 2 balls remaining. Lot more to get. At least 17 runs I think they need.
from the final 2 balls. Match is gone completely away from the batting side. So after the big collapse in the very first over, 3 wickets down, Sunil Charan Mohan departed in the very first over in front of Imtiaz. Good comeback done by Sharif by scoring 2-3 boundaries, but in the end of the innings, Imtiaz came again and bowled perfectly the 4th over, made the big damage for the side and brought the match into their side. 5 balls completed here. Finally, we can find the boundary. Scorecard is moving to 43. 13 runs needed from final delivery. So BSC BEKUR is very much near for the victory against Friends Urkadi. So Ismail Baba's beautiful innings made them to bring the decent total on the board. Imtiaz in episodes, brilliant 2 over, made the things easier. White call, 12 from 1. And this time there was something sound. Over number 5 completed. Match completed here. That's another victory for BSC BEKUR and really disappointing for Friends Urkadi in this match. The upcoming match, MCC Uppala takes on King Cobras. Cobra MCC. Dhanraj Singh Mike Hall.
Okay, welcome back and thank you so much to Naushad Burak. So now match will be starting for the first innings. So after the completion of first over, showing on only 2 runs in the first over. So now matches between MCC Uppala and the King Cobras Kumbala. The new batsman Ashok, they are having in the non-striking area after the completion of a first over. The only 2 runs and very good comeback for the first over. Muzammil from MCC Uppala. One of the all-rounder player, one of the best all-rounder player of MCC Uppala. In the first match of this particular day one, SACLA Trophy 2022, we got a man of the match award, and Ashok is a new batsman. Ashok is a new batsman, and Roy is a striker, and new bowler, Khalid. This time the pull toss ball and upper calling, that's a wide runs. An extra run, the ball completely in the off stump area. The one more extra run added to the scoreboard, and scoreboard directly jumping to 3 on the board in the first over only completed. Now the first delivery of the second over. I'm requesting to the players, please continue the match. Now Roy is a batsman, the very good right hand batsman, Mr. Roy. This time the very good tip the ball and slowly running between the wicket, the completed single and a couple of runs. The 2 runs completed here. The scoreboard directly jumping to the 5 on the board after the completion of first delivery of the second over. And they're requesting to the next matches between Abdurrahman BEKUR. This time the lovely one, wonderful shot, the ball in the deep extra cover, and finally they caught it. Another wicket, wicket number 2 from the side of King Cobras. Abdurrahman BEKUR, അദ്ദേഹം എവിടെ ഉണ്ടെങ്കിലും മൈക്ക് പോയിന്റുമായി ബന്ധപ്പെടേണ്ടതാണ്. So after the completion of first 2 balls, Tejabu Kashragud and friends of Baikate for the next match are requesting to the sign up to both team players. Please come here. This time just tip the ball in the deep mid wicket side, just for single runs. And after the completion of first 3 balls, 6 is the total in 3 balls. So 3 balls completed and 3 balls remaining here. Now the bowler Khalid. This is Khalid to the new batsman. I think that is Ali. Ali is a very good right-hand batsman from the side of King Cobras Kumbala. Look at that ball. Very good bowling piece of Khalid. Not connected with bat and ball too perfectly. So after the completion of first 4 balls, 2 wicket, 1-0 in this over. So 5th delivery of the over. Look at that, very good shot. The ball directly in the deep mid wicket side. They're trying to the couple of runs, but this was single runs added to the scoreboard after the completion of 1.5 balls, and score showing on just for 7 runs. And next match is between friends Baikate as well as Tejabu Kashragud. Both team players, please report here for the sign up. Was not connected with bat and ball again, and over number 2 completed. And score showing on just for 7 runs and 3.5. 3.5 is the current run rate. 3.5 for current run rate and 7 for 2.
ആദ്യത്തെ 2 ഓവർ അവസാനിക്കുമ്പോൾ സ്കോർ നിലയിൽ 7 കാണപ്പെടുകയാണ്. 3.5 എന്ന നിലക്കാണ് റൺ റേറ്റ് കാണപ്പെടുന്നതും. ഒരു വശത്ത് കിങ് കോബ്ര കുമ്പളയാണെങ്കിൽ മറുവശത്ത് MCC ഉപ്പല. So after the completion of first ball, now second spell of the over. Look at that brilliant one. Oh, third is the wicket. The brilliant wicket of King Cobra Kumbala. Another wicket left in the crease. Now already 3 wickets left in the crease. The now 2.2 balls completed and the score showing on desperate runs. Very little runs and 2.82 is the current run rate and lots of big 3 wickets. King Cobras, a big losing of this innings. That's a big loss of to King Cobras. Only 8 runs in this innings. Now matches between King Cobras, Kumbala as well as MCC Uppala. About 40 SACLA Trophy 2022. Now 2 balls only completed in the third over. Now batsman, they're waiting for the ball. And the bowling section, that is Muzammil is individual second over progressing and innings third over progressing here. Look at that wonderful shot and hey Balwan, that is a maximum. What a magnificent shot here. And 6 runs added to the scoreboard. Scoreboard directly jumping to 14 on the board. 14 is a total in 3 balls of the third over. The completely 10 overing the run rate. So now once again the batsman waiting for the ball. The very good new batsman Appu. This is the lovely one for the long off religion and single runs. Slowly running between the wicket. The partnership will be completely continuing here on side of Mr. Appu and the striking area Ali. Now Muzammil to Ali. The 5th spell of the tide over. Wait and see. The slowly bowling for here Muzammil for 90 kp at speed limit of his ball and the ball in the deep mid wicket side. And 1 runs completed. They're trying to the couple of runs and finally they're not. Yes, they completed. They completed 2 runs and they appeal to the leg umpire but not any positive results. So they completed couple of runs. Good running between the wicket for that partners Appu and Ali. Both are the partners of King Cobras. After the completion of 3 wickets. After the loss of 3 wickets from King Cobras. Now finally only 1 delivery remaining here. Muzammil to Ali. So really good one. I'm requesting to all the players, please do not take an extra time because every seconds are very important. So this time the lovely one, wonderful bowling piece of Muzammil. They appeal to the umpire, but still decision, and I think that's a not out. I think. That finally they're discussing about both umpires, Shakir Uppala and another umpire in the official panel, most experienced umpires in cricket. So anyway, over number 3 completed here. This was 17 runs, like a 6.64 is a current run rate per over. So the 5.64 is a current run rate, and lots of big 3 wickets. So now while starting again, umpire calling, that's a wide run. The wide calling for the umpire. So after the completion of first 3 overs and 2 extra runs in this particular innings, this time the lovely one, wonderful shot. The ball on the long on religion. And after the completion of 3.1 balls, now 4 wickets left on the crease and 18 is a total. 18 is a total scoreboard.
The new batsman also walking back to the pavilion to covering to his place. The new batsman also jersey number 09 from the side of King Cobra Kumbala with the partner of Ali. Mr. Murali is the partner of Ali. The new batsman, batsman number 6 from King Cobra Kumbala. So anyway, here one ball completed. Now second spell of the over. Requesting to all the players of MCC Uppala, please continue the match. Requesting to the captain of MCC Uppala, please cooperate with us. And after that, 2 matches are pending. So now time exact 4 o'clock and 54 minutes. So please cooperate with us. Now second spell of the over. Wait and see the batsman batsman waiting for the ball in striking area. Look at that, very good bowling, and the ball in the long condolation, and one run completed. They're trying to get a couple of runs, but the chances give only for 1 run. And after the completion of first 2 balls of the 4th over, a score motion to 19 on the board. Just 19 is the total. The 2 deliveries only completed. The new bowler, that is Sadiq. This time again, after calling for the wide runs. This is the 3rd time in the wide of this innings. So this time the lovely one, and wonderful comeback with that. So lovely one for the leadership and gully side. No connected with bat and ball to the perfect lane. Bice calling for the umpire. So anyway, so after the completion of first 3 balls, I think 21 is a total. 21 is a total. Now 4th spell of the over. Look at that ball for Sadiq. The very good bowling for the rolling delivery. That's a magical bowler. Now 4 deliveries already completed. Now 5th spell of the over. Look at that big shot on the deep back shot cover side. And finally the ball in that fielder's hand. So another wicket of King Cobra's Ali back to the pavilion. And last 1 more delivery to go. The very little run for 21 is a total. To covering to his place, Munaba Paitoti is a new batsman. Munaba Paitoti is a new batsman in King Sport in live telecasting, and cameraman Sawad. And another one is cameraman Madan. Both are the cameramans. The main part of this cricket tournament, the live telecasting for King Sports, one of the most popular media in Dakshina Karnataka and all over the Karnataka in Kasaragod district also. King Sports live telecasting in YouTube channel, one of the most famous and most popular live telecasting King Sports in 2 days also in the SACLA Trophy 2022, and also operating in King Sports Ijaz, and the Rizwan is maintaining to all over the King Sports Ijaz. So anyway, this time the brilliant one for the long off release, and one boundary calling for the umpire, and scoreboard directly jumping to 26 on the board. 26 is the total after the completion of 4.1 ball. So after the completion of first ball of the last over, Pavi, now second spell of the over. Look at that, really good one. It's not connected with bat and ball. Munna Papaitoti is a non-striker, and the striker batsman, that is Murali and Munna Papaitoti, the partnership will be progressing here. This is the lovely one, very good bowling piece, and upper calling, another wicket here. Murali, the walking back to the pavilion, the biggest wicket of King Cobras. So after the completion of first 3 balls in 4-0 wicket, the 3 deliveries already completed and 3 deliveries remaining. The covering to his place, jersey number 03, Sulaiman from King Cobra.
8th number batsman of King Cobra, Kumbala. So this time the lovely one of the most interesting cricket tournament for SACLA Trophy 2022. Day 1 and finishing soon, and tomorrow the crucial matches, including semi-final, including grand finale. Everyone is tomorrow. SACLA Trophy 2022. The last 3 deliveries remaining. Baba Brothers BEKUR and BSC BEKUR proudly presenting the historical cricket festival of UNDERARM cricket. SACLA Trophy 2022 above 40 cricket tournament at Mananguzi Mini Stadium. So this time the lovely one, very good shot in the long controlation and the single run added to the score, but very good running between the wicket. Now Munna Bapai Toti on the strike. Munna Bapai Toti is also one of the very good player in UNDERARM cricket. A very good right hand batsman Munna. More than 134 is the striker rate for Munna Bapai Toti. They're waiting for the ball. So after the completion of first 4 balls, now 5th spell of the over. Look at that lollipop delivery, not connected here. There is Munna Bapai Toti walking back to the pavilion. What a good wicket, what a good keeping. Like a Dinesh Karthik, that kind of the keeper. The absolutely brilliant one performance for MCC Uppala. So 5 deliveries completed here, and the last 1 more delivery to go. So Munna Bapai Toti, they're walking back to the pavilion to covering to his place. The new batsman, jersey number 10, the same jersey number of Master Blaster Tendulkar, Mr. Naveen. So Naveen arriving for the striking area, and the last only 1 more delivery to go to full stopping of this particular innings. So anyway, now time already 5 o'clock, exact 5 o'clock for the evening. So now first innings only progressing here, MCC Uppala as well as King Cobra's Kumbala. So final delivery of the over. Look at that brilliant one, and wide calling for the umpire. That's a brilliant tournament, SACLA Trophy 2022. Now final delivery of the over. Wait and see. One of the hardy front drop kick. They're waiting for the ball. This time the lovely one. What a good bowling. And there is a little mistakes, and finally here they appeal to the umpire, and out calling for the umpire for another wicket in run out. So now already 8 wickets left in the crease from King Cobra Kumbala, and total scores have begun 20, 28 and 29 is a victory target. 29 is a victory target in 30 balls. So anyway, heartily inviting to the next commentary box to Mr. Abdurrahman Ji for the next commentary box for sweet and the national language Hindi. Adrancha. Play. Hal. Now second innings, 29 is a victory target. Requesting to the batsman, please start the match. And requesting to Abdur Rahman Bekur for the next commentary box. And thank you so much.
हॉल दिल्ली बॉल नासिर कन्यानो पहली गेंद बहुत खूबसूरती के साथ ड्राइव की है, गेंद लॉन्ग ऑफ की तरफ जा रही है, फील्डर तैनात है और गेंद सिरा गए इसी मालिके के बाद चौका। पहली गेंदें जो चौका लगाकर शुरुआत ही की है बैट्समैन जावेद, मुजम्मिल कप्तान और टीम ओनर दोनों तैयार हैं मैदान पर। गेंदबाज अशोक होता करनी അടുത്ത മത്സരത്തിന്റെ ടോസിംഗിന് വേണ്ടി വരിക ദജാവ കാസർഗോഡ് ക്യാപ്റ്റൻ പ്ലീസ് കം. അത് കഴിഞ്ഞുള്ള മത്സരം 13ാമത്തെ മത്സരവും നടക്കും, ആരും പോവരുത്. ദജാവ ക്യാപ്റ്റൻ और इस गेंद को खेला गया है, जावेद ने मिड विकेट की तरफ, मुन्ना ने आकर गेंद को लपट लिया, तब तक 1 रन और इस 1 रन की मदद से संख्या बढ़ते हुए 5 रन 3 गेंदों में से. फिर एक बार मुजम्मिल के लिए. मुजम्मिल बहुत खूबसूरत बल्लेबाज है, सालों से अंडराम क्रिकेट में मौजूद है CSC के, और अच्छी गेंद खेलना चाहते थे शिप के द्वारा, लेकिन सही सलामत बल्ले की मेयर कामयाब नहीं हुई. अंपायर कह रहे कि लगबाई. अरे और इस गेंद को रक्षात्मक तरीके के साथ खेला है, दखल करे तेजी के साथ दौड़कर पूरा किया. दूसरे के लिए दौड़ा जा रही है, बहुत अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट. जावेद और मुजम्मिल के बीच में बहुत अच्छी तालमेल, 2 रन की मदद से संख्या बढ़ते हुए 8 रन. आखिरी गेंद 20 लोवेस्ट टोटल ऑफ इन दिस टूर्नामेंट दिस डे. बहुत खूबसूरत गेंद थे जो विकेट कीपर छोड़ते हुए गेंद को अंपायर के इशारा जो बल्ले के बारी हिस्सा लगे हैं, इस वजह से बल्लेबाज के खाते पर जोड़ा जाएंगे. इसको संख्या बढ़ते हुए 9 रन 10 ऑन द बोर्ड. क्षमा कीजिए 9 रन 9 ऑन द बोर्ड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट ओवर. दूसरी ओवर के रूप में अली मंजेश्वर, एक जमाने थे इनके जो तगड़े बल्लेबाज जाना जाते हैं इनको. अच्छी गेंद कट कर दिया गया है, स्लिप के फील्डर की तरफ गेंद जाते हुए 1 रन और इस 1 रन की मदद से डबल अंक पर आने की 10 रन जो विकेट कीपर के गलती में 1 रन मिले हैं. फिर एक बार अली ओवर द विकेट. अच्छी गेंद शॉट भी डिलीवरी यानी कि टप्पे खाने के बाद जो विकेट कीपर की तरफ गेंद सीधे गए, बाउंस होने के बाद गए, कोई रन नहीं, कोई खतरा नहीं. मुजम्मिल रक्षात्मक तरीके के साथ खेलने की कोशिश कर रही है. ओहो बढ़िया गेंद, बहुत खूबसूरत गेंद अली. अरे शाम के वक्त में बहुत कुछ दर्शक आए हैं यहाँ पर, सबको स्वागत करना चाहता हूं. अली फिर एक बार इस सकला ट्रॉफी 2022 के लिए. फुटवर्क बिल्कुल कामयाब नहीं हुए हैं, यानी कि कदमों के इस्तेमाल नहीं कर रही है. मुजम्मिल खड़े खड़े कट करना चाहते थे, बारी बारी में कोशिश कर रही है लेकिन पराजित होती जा रही है. अली बहुत खूबसूरत गेंदबाजी के मतारा करते. फिर एक बार अच्छी गेंद, इस बार कामयाब हुई. गेंद सीधा गली पर शोर कॉपी राइट शॉट, बहुत खूबसूरत शॉट थे. 2 रन आसानी के साथ और इस 2 रन की मदद से संख्या बढ़ते हुए 12 ऑन द बोर्ड यानी कि 12 रन. फिर एक बार अली आखिरी गेंद, बहुत खूबसूरत गेंदबाजी के मजारा करते हुए कि सिर्फ 3 रन कर चुकी है अली. फिर एक बार अच्छी गेंद फील्डर के सर के ऊपर से गेंद गई, फील्डर पीछे है, फील्डर थे लॉन्ग ऑफ में, उन्होंने आकर गेंद उठाई. तब तक ओवर की समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति पर संख्या बढ़ते हुए 13 रन यानी कि 4 रन की बहुत महत्वपूर्ण ओवर इस ओवर के रूप में अली के रूप में यहाँ पर फेंका गया है. बहुत अच्छी गेंदबाजी की किंग कोबरा के लिए अली दूसरे ओवर के रूप में शुरुआती की पहली ओवर हल्के महंगी थे, 9 रन कामयाब हुए थे. और इससे प्रतियोगिता की बात कर रही थी BSC बेकुर और बाबा ब्रदर्स के रूप में यहां पर पेश किया है इस प्रतियोगिता.
इस टूर्नामेंट खड़े किए, जो कल के दिन आखिरी दिन होगा। शिवराम कलतूर बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, जो विकास कलतूर के जाने मान खिलाड़ी एक जमाने की, अभी भी खेल रही हैं। हमारी गांव में जो सरकारी काम कर रही थी, जो सेवा कर रही थी, कई बार तालुका ऑफिस में तहसीलदार बनकर, विलेज ऑफिसर बनकर हमारे साथ सेवा कर रही थी। हमारे साथ जो है वो फुटे खेलने के लिए यहाँ पर आए हैं। बहुत खूबसूरत शॉट, उल्टा बल्ले में गेंद सिरा जाकर गिरफ्त से मारे के बाहर चौका। व्हाट अ शॉट, बहुत खूबसूरत शॉट। चौके के मदद से स्कोर संख्या बढ़ते हुए 18। इसमें जो गेंदबाज की कोई कसूर नहीं दिख रही, क्योंकि जो बल्लेबाज की छलाक के साथ इस शॉट मिले हैं, इस चौके मिले हैं। फिर एक बार, इस बार भी उल्टा बल्ले में फिर एक बार खेला है, गेंद पैर में आंखें पर सीधा लंबे चाहते हुए सीमारेखा के बाहर चौका। लगातार दूसरी चौका। उल्टा बल्ले में पहली बार कोशिश किए तो कामयाब हुई, दूसरी बार फील्डर नहीं रखे थे उस वजह उसी इलाके पर थोड़ी सी हटकर यहाँ पर टैडमैन पर गए। पहली स्लिप पर फील्डर नहीं थी, उस इलाके पर गए थे। 2 बार चौका मिले हैं, संख्या बढ़ते हुए 22 ऑन द बोर्ड। फिर एक बार अच्छी गेंद, इस बार पराजित हुए हैं जावेद। हैट्रिक के लिए कोशिश किए, उल्टा बल्ले में कोशिश किए तो पराजित हुए। फिर एक बार शिवराम कलतू और विकेट अंपायर को क्रॉस करते हुए अच्छी गेंद, विकेट कीपर छोड़ते हुए गेंद सीधा जा रही है। इस बार फील्डर ने गेंद को रोका गया है, तब तक 1 रन, और इस 1 रन की मदद से लगबाई के इशारा किए। और इस मैच के अंपायरिंग के काम निभा रहे हमारे साथ सकीर उपला और 1 मोर बॉल टू लेफ्ट अजीज बीएससी बेकुर। फिर एक बार और गेंद को हवा पर खेला गया है, गेंद सीधा जाते हुए सीमारेखा के बाहर 6 रन के लिए, और इसी के साथ मैच को समाप्त किए एमसीसी उपला वन द मैच। और अगले मैच के लिए जल्दी से जल्द मैदान पर आ जाइए। और उस मैच के बाद 13वां मैच यहां पर खेला जाएंगे, जो ब्रदर्स अडका और ഇസ്മായിൽ ബാബ ഒരു കുപ്പി വെള്ളം കൊടുത്ത് ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക്. अगले मैच के लिए यहाँ पर आए हुए हैं फ्रेंड्स बाई कटा और देजावा कासरगोड. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഈ ടൂർണമെന്റ് മുന്നേറ്റം നടത്തുകയാണ് BSC ബെക്കൂർ അതേപോലെ ബാബ ബ്രദേഴ്സ് സംയുക്തമായി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന അബു 40 അണ്ടർആം ക്രിക്കറ്റ് ടൂർണമെന്റിന്റെ സീസണിലെ ആദ്യത്തെ ടൂർണമെന്റ് പുരോഗമിക്കുമ്പോൾ ഈ ടൂർണമെന്റിൽ അബു 40 അണ്ടർആം ക്രിക്കറ്റിലെ വാട്സ്ആപ്പ് കൂട്ടായ്മയിലാവട്ടെ മറ്റുള്ളവരിലാവട്ടെ ആ കൂട്ടായ്മയിൽ ഇല്ലാത്തവരാവട്ടെ എല്ലാവരും വലിയ രീതിയിലുള്ള സഹകരണമാണ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. വിദേശത്തുള്ളവർ പോലും അകമഴിഞ്ഞ് സഹായിച്ച ഈ ടൂർണമെന്റിന് നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ ഈ ടൂർണമെന്റിൽ പേര് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ട് അടിയന്തര കാരണമില്ലാതെ ഈ ടൂർണമെന്റിൽ മത്സരിക്കാത്ത മത്സരാർത്ഥികൾക്കെതിരെ ഈ ടൂർണമെന്റ് തീരുന്നതോടുകൂടി കടുത്ത നടപടി ഉണ്ടാകുമെന്ന് അബു 40 നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർ അറിയിപ്പ് നൽകിക്കഴിഞ്ഞു. ഏതായാലും നാളെ വൈകുന്നേരത്തോടുകൂടി ഔദ്യോഗിക അറിയിപ്പ് ഇവിടെ വന്നെത്തും. ഏകദേശം 2 പ്രഗത്ഭ മത്സരാർത്ഥികൾ ഈ ടൂർണമെന്റിൽ പേര് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ട് മത്സരിച്ചിട്ടില്ല എന്നറിയുന്നു. അത് ദുഃഖകരമായ വാർത്ത തന്നെയാണ് അബു 40യെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം. ഈ ടൂർണമെന്റിന് സഹകരിച്ച് സഹായിച്ച, ശാരീരികമായി മാനസികമായി സാമ്പത്തികമായി സഹകരിച്ച എല്ലാവർക്കും നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ മത്സരം തുടങ്ങട്ടെ. അമ്പയർ ബ്രദേഴ്സ് അഡ്ക ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് അശോക് ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് കാസർഗോഡ്.
അടുത്ത മത്സരത്തിന്റെ സൈനപ്പിന് വേണ്ടി എത്തിച്ചേരണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് കാസർഗോഡ് അതേപോലെ ബ്രദേഴ്സ് എടുക്ക എത്രയും പെട്ടെന്ന് साजिद कासरगोड सदाशिवा 2 बल्लेबाज आए हैं अरबिक बल्लेबाज के रूप में. यहाँ पर गेंदबाज के रूप में उमर तैयार है, उमर सितांगोली. കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിലെ മാൻ ഓഫ് ദ മാച്ച് നൽകുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ ടൂർണമെന്റിന് വേണ്ടി അഹോരാത്രം ദിവസങ്ങളായി നമ്മോടൊപ്പം സഹകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന, അതിന് ഫുഡിനാവട്ടെ മറ്റുള്ള യൂട്യൂബ് ലൈവിനാവട്ടെ വലിയ രീതിയിലുള്ള സംഭാവന നൽകിയ സിദ്ദീഖ് ലോഗി എന്ന പ്രതിഭാശാലിയെ ഈ മാൻ ഓഫ് ദ മാച്ച് പുരസ്കാരം നൽകുന്നതിന് വേണ്ടി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്ന ആൾ. അതേപോലെ മുസമ്മിലാണ് ഈ മാൻ ഓഫ് ദ മാച്ച്. Man of the match goes to Muzammil. उमर फिर एक बार सदा के लिए गेंदबाजी करने के लिए तैयार है. ओहो अच्छी गेंदी उठाकर खेलने के प्रयास में पूरी तरह पराजित होते हैं. 1 रन दौड़कर पूरा किया और इस 1 रन की मदद से संख्या बढ़ते हुए 4 रन. 4 गेंद में 4 रन. अरविंद शेट्टी प्लीज कम टू द माइक पॉइंट. अरविंद शेट्टी അതുപോലെ യൂട്യൂബ് ലൈവിന് വേണ്ടി സഹകരിച്ച വാഗ്ദാനം ചെയ്തവർ, ഇവിടെ ഗൂഗിൾ പേയിലല്ലാതെ ഓൺലൈനിലല്ലാതെ ക്യാഷ് പേയ്മെന്റ് ചെയ്യുന്നവർ, ഇവിടെ കമ്മിറ്റി മെമ്പർമാരുടെ കയ്യിലോ അല്ലെങ്കിൽ കരീം നീർച്ചാലിന്റെ കയ്യിലോ ഏൽപ്പിക്കണമെന്ന് വളരെ സ്നേഹത്തോടെ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. നാളത്തെ മത്സരം 8:15 തന്നെ മത്സരം ആരംഭിക്കും എന്നറിയിക്കുന്നു. 14ാമത്തെ മത്സരം ദയവ് ചെയ്ത് 8:15 തന്നെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. ടൂർണമെന്റ് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ തീരേണ്ടത് ഏവരുടെയും ഉത്തരവാദിത്യമാണ്, തീർക്കേണ്ടത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ ടീം അംഗങ്ങളോടും പ്രത്യേകം ഈ വോയിസിൽ കൂടി അറിയിക്കുകയാണ്, നാളെ 8:15 തയ്യാറെടുപ്പ് നടത്തുക. उमर इस गेंद को बहुत खूबसूरती के साथ खेले हैं. गली पर गेंद गई तब तक फील्डर ने आकर मनोज ने गेंद उठाए तो रोके, तब तक 1 रन और इस 1 रन के सहारे के साथ ओवर की समाप्ति. पहली ओवर की समाप्ति पर 6 रन. दूसरी ओवर के लिए जल्दी तैयारी हो जाइए दोस्तों. विनती कर रहा हूं कि देरी मत कीजिए. कादर उले तड़का काफी अनुभवी खिलाड़ी हैं. उले तड़का के बहुत अच्छी खिलाड़ी भी हैं. सभी समझदार खिलाड़ी हैं जो अबो 40 हैं, जानते हैं. और इस प्रतियोगिता में इस सीजन में पहली बार ज्वाइन हुए हैं. कहीं खिलाड़ियों ने ज्वाइन हुए हैं अबो 40 में. सबको स्वागत करना चाहता हूं. अच्छी गेंद उठाकर खिलाड़ी भी मोइदीनारी कारी रिटर्न टू द पवेलियन.
उमर अली उमर बल्लेबाज के रूप में आए हैं, स्ट्राइक पर मौजूद हैं कादर के सामने, कादर उलिया तड़का। और इसी के साथ बहुत अच्छी गेंद खेलने के प्रयास में पूरी तरह पराजित होते हुए ब्लास्टर्स आदि बोले ब्रदर्स अड्का, अशोक ब्लास्टर्स ब्रदर्स अड्का सैन पत्री पटन चाहिएगा। ओ उल्टा बल्ले में खेला गया है, बहुत खूबसूरत शॉट, फील्डर तैनात है, इन्होंने गेंद को तेजी के साथ लपट ली है। मनोज फिर एक बार बहुत अच्छी फील्डिंग, अच्छी थ्रो, एकमात्र रन और इस एक रन के मदद से संख्या बढ़ते हुए 7 रन 7 ऑन द बोर्ड। तेजाबा की गेंदबाजों ने बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रही है। दस रन कादर उलिया तड़का की 4 गेंदें फेंक चुके हैं और कादर ने 5वें गेंद फेंकने के लिए तैयार है और अंत विकेट पर को क्रॉस करते हुए सदा इस गेंद को बहुत खूबसूरती के साथ खेला गया है। फील्डर ने गेंद को तेजी के साथ लपट लिया उमर ने और इसे 1 रन की मदद से संख्या बढ़ते हुए 11 रन 11 ऑन द बोर्ड। कादर शमीर बाबा प्लीज कम हियर, शमीर बाबा लॉलीपॉप डिलीवरी थी यहां पर पूरी तरह पराजित होते हैं और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। शकीर अजीज प्लीज जरा स्पीड अप कीजिए मैच को और एक मैच खेलना बाकी है। गेंदबाज हैं और गेंद को बहुत अच्छी मौका थे लेकिन इस मौके को गवा दिया गया है। सुरेश राजू क्षमा कीजिए राजू राजेश मधु जी हाँ कुलंगाना और उठाकर खेला है, हवा पर गेंद है। एक बॉल्स के बाद उमर की तरफ गेंद आए, उन्होंने गेंद को तेजी के साथ लपट लिया, तब तक 1 रन और इस 1 रन के मदद से संख्या बढ़ते हुए 13 ऑन द बोर्ड। राजेश तेलंगाना फिर एक बार सदा के लिए, ओहो गेंद किस इलाके पर आते हैं उस इलाके पर सही सलामत खेलते हैं सदा ने, बहुत अच्छी बल्लेबाजी करने वाली बल्लेबाज। फिर एक बार राजेश 12 उमर, ओ अच्छी गेंद, अपील की है लेकिन अंपायर ने कोई इशारा नहीं किए, नोट आउट के इशारा दिए, इंकार किया इन्होंने अपील को और इसी के साथ बहुत अच्छी डॉट बॉल राजेश की, तेज और घुमावट बेहतरीन है इनकी, अच्छी खेलते हैं। जो मियां पदाऊ मैदान में इनके कहीं खेल देखे हैं, बहुत अच्छी गेंद, शॉट भी डिलीवरी थी, पूरी तरह पराजित हुए हैं। तीसरी ओवर जारी है, आखिरी गेंद बचे हैं, स्कोर अभी भी 14 क्षमा कीजिए 14 और इस गेंद को खेला गया है, मिड विकेट पर फील्डर तैनात है, बहुत अच्छी फील्डिंग 15 आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 3 ओवर, 2 more over to left in this innings। 2 ओवर में कितना रन बटोर पाएंगे ये देखना बाकी है। आज के दिन जो शुरुआत ही अगर 8-15 को हुआ जाते हैं तो यहां पर जो सही सलामत हराम से 13 मैच यहां पर खेलने के लिए मौका मिलते थे। जो क्षमा चाहता हूं कि ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ने कुछ देर हुए हैं क्योंकि जो यूट्यूब लाइव और काफी बंदोबस्त करने में शुरुआत होने में कुछ देर हुए, माफी चाहता हूं सभी अंडरआर्म दुनिया के साथ। और इन्हीं के साथ अली उमर रिटर्न टू द पवेलियन, सिद्दीक लोगी नए बल्लेबाज के रूप में। चौथी ओवर के पहली गेंद पर विकेट झटका लिया गया है
कादरुलिया तड़का अपने खोटे की दूसरी ओवर फेंकने के लिए इनको मौका दिया, क्योंकि अच्छी गेंदबाजों के लिए मौका ज्यादा से ज्यादा जो नायक कप्तान दिया जाती है। यहाँ पर तो पहली ओवर इन्होंने सही सलामत गेंदबाजी किए थे, उस वजह से इनको दूसरी ओवर खोटे की दूसरी ओवर के लिए मौका दिया गया थे। बहुत खूबसूरत था जो गेंदबाज है कादर। फिर एक बार अराउंड द विकेट, ओ लेग के काफी बाहर थे, खराब गेंद, अंपायर ने फूल के जैसे इनके हाथ खुल गई सक्की रुपला की, तब वो वाइड के इशारा है और इस वाइड की मदद से संख्या बढ़ते हुए 16 यानी कि 16 रन, बिल्कुल लोवेस्ट टोटल थे 28 पिछले मैच। इस मैच जो मेरे ख्याल में बिल्कुल धीमी गति के साथ जा रही है और इसे 1 रन और सिद्दीक लोगी के खाते पर, और इसे 1 रन की मदद से संख्या बढ़ते हुए 17। चौथी ओवर की मुकम्मल जा रही है कादरुलिया तड़का। फिर एक बार सदा हो बड़े शॉट के लिए कोशिश तो कर रही है लेकिन कामयाब नहीं हो रही है, बल्ले पर कामयाब नहीं हुई, सिर्फ 1 रन लेग बाई के रूप में, और इस लेग बाई की मदद से संख्या बढ़ते हुए 18 रन। देखिए दोस्तों, ये 12वां मैच, आज के दिन के 12वां मैच है, 5 ओवर के हर मैच है। सदैव उठा करके ला है, जबरदस्त शॉट, लेकिन फील्डर फील्डर ने कोई गलती नहीं की है। सिद्दीक लोगी की शॉट तो बेहतरीन थे, जो हार्दिक पांड्या की तरह इन्होंने लॉन्ग ऑफ के ऊपर छक्का लगाने चाहते थे, छक्के लगाने के चक्कर में इन्होंने उड़े हैं और उनके जगह पर नए बल्लेबाज सिद्दीक कुलवार, ओह बहुत अच्छी गेंद, और इसी के साथ सिद्दीक कुलवार आए और गए। कादर तो विकेट चटका लिए, ओवर की समाप्ति। 1 more ball to left, कादर 1 more ball to left, और वाइड उंड ओके। नए बल्लेबाज है रत्नाकरा, लेफ्ट आर्म बैट्समैन सदा अभी भी मौजूद है जो आरंभिक बल्लेबाज। फिर एक बार किरण गेंद फेंक रही है, पहली गेंद लेग स्टंप पर। मैक्वेचन, वेलकम मिस्टर मैक्वेचन, इस टूर्नामेंट के लिए आए हैं एचएन फ्रेंड्स हिदायत नगर के, जो बहुत अच्छी गेंद, बहुत खूबसूरत गेंद, जो एचएन फ्रेंड्स हिदायत नगर के जो कहानी कहना चाहता हूं कि जो इस इलाके के बहुत बड़े अच्छे स्पोर्ट्स क्लब, आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स क्लब है हिदायत नगर फ्रेंड्स क्लब, और इसे उठा करके ला है, कोई फिलहाल मौजूद नहीं, गेंद सिरा जा करके सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए किरण के सामने हावी हुए हैं पूरी तरह सदा। स्कोर 24 ऑन द बोर्ड। फिर एक बार किरण तो सदा, अच्छी गेंद, हवा पर गेंद है, फिले तैनात है, उन्होंने जो कैच को छोड़ दिया गया मेरे ख्याल में। रत्नाकर ने दूसरी रोड दौड़ना नहीं चाहते हैं, एकमात्र रन, और इस 1 रन की मदद से संख्या बढ़ते हुए 25 ऑन द बोर्ड। गेंद को खेला गया है रत्नाकर ने 1 रन तेजी के साथ, और इस 1 रन की मदद से संख्या बढ़ते हुए 26 ऑन द बोर्ड। लास्ट ओवर, लास्ट बॉल 28 जो पिछले मैच में थे लोवेस्ट टोटल, और इस मैच में कितना रन बना पाते हैं ये देखना बाकी। अच्छी फील्डिंग की बता रखी है, और इसे के साथ इनिंग समाप्त, इनिंग समाप्त। 27 is the victory target. മറുപടി ബാറ്റിംഗിന് ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇറങ്ങുക കിരൺ. കിരൺ നേതൃത്വം നൽകുന്ന ടീം
മികച്ച ബോളിംഗ് പ്രകടനത്തോടുകൂടി എതിരാളികളെ 27 റൺസിനാണ് പിടിച്ചു കിട്ടിയത്. 28 വേണം മത്സരം വിജയിക്കുവാൻ. കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിലേതുപോലെ തന്നെ ഈ മത്സരവും ലോവസ്റ്റ് ടോട്ടൽ ഏകദേശം സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുവാൻ നിമിഷങ്ങൾ ബാക്കി നിൽക്കെ ഇവിടെ സ്കോറിംഗിലും അത് നിഴലിച്ചു നിൽക്കുകയാണ്. ബ്രദേഴ്സ് എടുക്കാം. സൈനപ്പ് ചെയ്യാൻ ബാക്കിയുള്ളവർ എത്രയും പെട്ടെന്ന് സൈനപ്പ് ചെയ്യും. ബ്രദേഴ്സിന്റെ 4 ആള് ബാക്കിയുണ്ട് സൈൻ ഇടാൻ. അതിന് നോക്കിയോ ക്യാപ്റ്റൻ, ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കും. ക്യാപ്റ്റൻ ഒന്ന് വെരിഫൈ ചെയ്യൂ. അവസാന മത്സരമാണ്, വിട്ടുപോകല്ലേ. स्पीड अप कीजिए। मोहिदीन है गेंदबाज, स्ट्राइक पर कादर, नॉट टेकन पर मनोज। कादर और मनोज के बीच में इस जोड़ी मैदान पर आए हैं। 28 इज द विकेट टारगेट। पिछले मैच में देखे हैं 28 तो 3 ओवर में बनाए गए थे, लाभ हुए थे 2 ओवर जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के लिए। पहली गेंद पर उठा कर खेला है, गेंद सीधा गए सीमारे के बाहर, चौका। बिल्कुल लॉलीपॉप गेंद थे मोहिदीन की, और इस गेंद में पूरी तरह झुके और जो गेंद की गति देखते उठकर इन्होंने जो फाइन लेग पर चौके लगाए। कादर बहुत अच्छे बल्लेबाज है। ये किरण इस मैच में पीछे हटे हैं, आरंभिक बल्लेबाज है मामूली, और चमके बिल्कुल बाहर थे, उल्टा बल्ले में कोशिश किए, इस वजह से कामयाब नहीं हुए। कोई रन नहीं, कोई खतरा नहीं, 2 गेंद बेच चुके हैं मोहिदीन, और इस गेंद को उल्टा बल्ले में खेला है, सीधा फील्डर के हाथ पर गेंद जाकर रुके है। तब तक 1 रन, और इस 1 रन के वजह से संख्या बढ़ते हुए 5 रन। मनोज खतरनाक बल्लेबाज है, बीएससी बेकुर के सामने नॉट आउट रहा था, बहुत खूबसूरत बल्लेबाजी किया थे मनोज ने। ऑप्शन के बाहर और इस गेंद को खेला गया है, बहुत खूबसूरत शॉट, लॉन्ग ऑन इलाके पर गेंद जाते हुए सीमा रेखा के बाहर, चौका। स्कोर संख्या बढ़ते हुए 10 रन, 18 मोर रन रिक्वायर्ड। ब्रदर सडका कैप्टन अदेपोले कासरगोड अशोक प्लास्टिक्स कासरगोड कैप्टन। फिर एक बार मोहिदीन अपने ओवर के आखिरी गेंद, लास्ट बॉल को कादर के लिए गेंदबाजी करना चाहते हैं। कादर उल्टा बल्ले में खेला गया, गेंद सीधा 47 से निकलता हुआ गोली की तरह गेंद सीमारे के पार किए। पहली गेंद में चौका, आखिरी गेंद में चौका, वो भी कादर तड़का ने लगाई है। ओवर समाप्ति, पहली ओवर की समाप्ति पर 15 रन, अब सिर्फ 13 रन की जरूरत है इस मैच को जीतने के लिए। नो बॉल, और गेंद सीधा गए सीमारेखा के बाहर, चौका। 5 रन यहां पर तोहफा दिए बिना किसी गेंद पर। स्कोर संख्या बढ़ते हुए 20 रन, 20 ऑन द बोर्ड।
സാലി ശ്രദ്ധിക്കുക, 3 ഓവർ വരെ പോവില്ല ഈ മത്സരം. और इसी के साथ फ्री हिट में आउट हुए हैं, लेकिन आउट नहीं हुए हैं, भाग्यशाली है, कैच हासिल किए लेकिन यहां पर मौका नहीं क्योंकि फ्री हिट थे. ओ अच्छी गेंद, बहुत खूबसूरत गेंद. सिद्दीक लोगी ने विकेट कीपर के रूप में अपनी जवाबदारी तो बहुत अच्छी तरह निभा रही है. रत्नाकर गेंदबाज के रूप में. ओ बहुत खूबसूरत शॉट, लॉन्ग इलाके पर फिर एक बार गेंद जाते हुए, लेकिन इस बार साजिद कासरगोड ने अच्छी तरह गेंद को उठाए, थ्रो किए. तब तक एकमात्र रन और इस एक रन के मदद से संख्या बढ़ते हुए 22 ऑन द बोर्ड. 6 more run required. അടുത്ത മത്സരത്തിൽ ടോസിംഗ് നടത്തും പ്ലീസ്. और इस गेंद को हवा पर खेला गया है, सदा इसके कैच को छोड़ दिया गया है और गेंद तो मैदान के अंदर ही है. 2 रन दौड़कर पूरा किए और 2 रन की मदद से संख्या बढ़ते हुए 24 रन. 4 more run required. कैप्टन प्लीज कम. और इसी के साथ मैच जीत लिया गया है. अगले मैच के लिए प्लीज कम यार. टॉस साली. Ashok Blasters on the toss selected to field first. Thank you, sir. Arvind Shetty. Photo madam, photo. Arvind Shetty. दोस्तों आज के दिन के आखिरी मैच है. कल के दिन जो 8/15 को शुरुआत होगी 14वां मैच. सभी की सेवा मांग रहा हूं. इस सकला ट्रॉफी 2022 के लिए बहुत बड़े
बैटिंग पो बे साली आखिरी मैच के पहली इनिंग्स यानी कि आरंभिक बल्लेबाज के रूप में यूसुफ मूसोली और साली अडका दो मशहूर खिलाड़ी मैदान के बीचों बीच में जाते हुए पहली ओवर के रूप में गेंदबाज हैं सतीश पहली ओवर के रूप में गेंदबाजी के लिए तैयार हुए हैं। उनके सामने यूसुफ मूसोली पहली ओवर की पहली गेंद लॉलीपॉप गेंद उठा कर खेला है मिड विकेट पर फील्डर तैनात है। इन्होंने गेंद को तेजी के साथ उठाए तो रोकिए तब तक 1 रन और इस 1 रन की मदद से फिर एक बार सुरेश तो बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए जो फील्डिंग में परिवर्तन लाना चाहते हैं, जो अरविंद शेट्टी कप्तान जो फील्डिंग में बहुत कुछ परिवर्तन लाए, जो फाइनल के इलाके पर साली को एक फील्डर को रखा गया। मिड विकेट है, वाइडिश मिड विकेट है, लॉन्ग ऑन है और लॉन्ग ऑफ बिल्कुल खाली मैदान पड़े हैं। जो टैडमैन 30 दायरे के अंदर है, पहली स्लिप जो गली में फील्डर है 30 दायरे के अंदर और इस गेंद को खेला गया है सीधे जो गेंदबाज की तरफ। कोई रन नहीं, कोई खतरा नहीं, 2 गेंदों में सिर्फ 1 रन। फिर एक बार अब तो विकेट अंपायर को क्रॉस करते हुए तैयार है। बीएससी बेकुर और बाबा ब्रदर्स के बीच में इस मैच बहुत खूबसूरत गेंद, वाह भाई वाह, व्हाट ए डिलीवरी फ्रॉम सुरेश। बहुत खूबसूरत गेंद थे, उठाकर खेलने के प्रयास में पूरी तरह बल्ला के नीचे की तरफ से गुजर गए जो विकेट कीपर के ग्लव्स पर दिखाई। फिर एक बार सुरेश अराउंड विकेट, अच्छी गेंद सीधा फील्डर की तरफ, गेंदबाज की तरफ तीसरी बार है। एक पूरी तरह डॉट हुए थे, 2 बार तो सुरेश के हाथ पर गेंद सीधा ही खेले थे। साली सतीश है गेंदबाज, क्षमा कीजिए। सतीश अपने ओवर की पहली ओवर के रूप में गेंदबाजी कर रही है। और इस गेंद को खेला गया है लॉन्ग ऑफ में, बहुत खूबसूरत शॉट, एकमात्र रन और इस 1 रन की मदद से संख्या बढ़ते हुए 3 रन। पहली ओवर की समाप्ति पर 3 रन। കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിലെ മാൻ ഓഫ് ദ മാച്ച് പുരസ്കാര വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് ഖാദർ ഉളിയത്തടുക്ക. അദ്ദേഹത്തിന് മാൻ ഓഫ് ദ മാച്ച് പുരസ്കാരം നൽകുന്നതിന് വേണ്ടി അണ്ടർആം ക്രിക്കറ്റിന്റെ സന്തത സഹചാരി അണ്ടർആം ക്രിക്കറ്റ് അനാലിസ്റ്റ് ദിനേശ് ചക്രവർത്തി മഞ്ചേശ്വരം അദ്ദേഹത്തെ സ്നേഹത്തോടെ ക്ഷണിക്കുകയാണ്. ദിനേശ് ഈ മാൻ ഓഫ് ദ മാച്ച് നൽകണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. अच्छी गेंद, भले की बारी हिस्सा लगकर फील्डर की तरफ गेंद गई। प्रसाद कासरगोड वहां पर फील्डर के रूप में जिन्होंने गेंद को तेजी के साथ उठाया, तब तक 1 रन और इस 1 रन की मदद से संख्या बढ़ते हुए 4 रन। दूसरी ओवर की पहली गेंद पे हैं शशिधरा, अपने गांव के मेहमान हैं। फिर एक बार शशिधरा और विकेट शशिधरा जो साली खेला गया है, फील्डर मौजूद है, इनके हाथ पर गेंद जाकर रुके हैं फाइन लेग में। फील्डर 3 ने गेंद को तेजी के साथ उठाया, तब तक 1 रन और इस 1 रन की मदद से संख्या बढ़ते हुए 5 ऑन द बोर्ड।
फिर एक बार रिटर्न ऑन द विकेट शशिधरा, दूसरी ओवर है इनिंग्स की। इस ऑफ जगह बनाकर खेला है, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ के बीचों बीच में फील्डर तैनात, इन्होंने गेंद को तेजी के साथ उठाया, तब तक 1 रन और इस 1 रन की मदद से संख्या बढ़ते हुए 6 रन, 6 ऑन द बोर्ड। हमारे साथ जो स्कोर बोर्ड संभाल रही है मक्कू एचएन, मशकूर नाम के मक्कू एचएन फंड हिदायत नगर के सदस्य हैं, इनको अभिनंदन देना चाहता हूं। फिर एक बार ओवर द विकेट साली उठाकर खेलना, जहां पूरी तरह पराजित हुए हैं। मेरे ख्याल में जो पैड पर टकराए अंपायर ने कह रहे कि लगबाई के इशारा दिए, एकमात्र रन और इस 1 रन की मदद से संख्या बढ़ते हुए 7 ऑन द बोर्ड, यानी कि 7 रन। शशिधरा अपनी ओवर के 5वें गेंद लेकर तैयार है। शशिधरा भी अच्छी गेंदबाजी कर रही है, पहली सतीश तो अच्छी कामयाब गेंदबाजी किए थे, 3 रन खर्च किए थे। फिर एक बार ओवर द विकेट यूसुफ जगह बनाकर खेला है, फील्डर अरविंद शेट्टी कप्तान मौजूद, इन्होंने गेंद को रोका गया पहली बार और उसके बाद गेंद को उठाया, तब तक एकमात्र रन और इस 1 रन की मदद से संख्या बढ़ते हुए 8 रन, 8 ऑन द बोर्ड। शशिधरा की आखिरी गेंद, दूसरी ओवर जा रही है। आखिरी 3 मैच देखिए दोस्तों, पहली जो एमसीसी जीते थे 28 रन, जो दूसरी मैच जो पिछले मैच थे जो तेजाबा का सरगोड़ 28 रन जो चेस किया गए थे 27 को। ओ अच्छी गेंद, बहुत खूबसूरत गेंद, लेकिन अंपायर ने कह रहे कि वाइड है और इस वाइड की मदद से संख्या बढ़ते हुए 9 ऑन द बोर्ड। दूसरी ओवर की चालती पर है शशिधरा की आखिरी गेंद, साली अडका के लिए काफी दूर रखना चाहते थे, ऑफ स्टंप के दूर रखना चाहते थे, तब लाइन बिगड़ गई, गेंद जाकर विकेट कीपर के हाथ में, लेकिन वाइड के ओवरों में उठा करके ला है, बहुत खूबसूरत कैच हासिल की और इसी के साथ खतरनाक बल्लेबाज साली अडका डिपार्ट। बॉलर प्लीज शो यूर जेसी नंबर। अशोक ने कैच लिए थे, अशोक का बेहतरीन कैच थे, इस टूर्नामेंट के पहले दिन के सबसे अच्छे कैच में से एक है, बहुत अच्छी कैच जो खतरनाक बल्लेबाज को वापस भेजा गया। अब करीम के योगदान, करीम बहुत अच्छे ऑलराउंडर है, आईसीसी निर्चाल के लंबे सफर किए इन्होंने, आईसीसी निर्चाल के लिए इन्होंने, बहुत खूबसूरत खिलाड़ी ऑलराउंडर। इनके सामने अशोक ओवर द विकेट, पहली गेंद अच्छी गेंद उठा कर खेला है, हवा पर गेंद है और इसी के साथ करीम भी आउट। स्कोर अभी भी 9 रन। तीसरी ओवर के पहली गेंद में विकेट चटका लिया गया है। करीम खतरनाक बल्लेबाज और एक आउट हुए। यूसुफ मुसोड़ी एक तरफ बचे हैं, नए खिलाड़ी अजीज पल्लम, उनको योगदान मिले हैं। अजीज पल्लम प्लीज हरी अप। फिर एक बार अशोक टू यूसुफ तालमेल के साथ खेल रही है, बहुत अच्छे तालमेल के साथ, कदमों के इस्तेमाल बेहतरीन है, कलाओं के इस्तेमाल बेहतरीन है इनकी। 1 रन और इस 1 रन की मदद से संख्या बढ़ते हुए डबल अंक पर आने के 10 रन। फिर एक बार ओवर द विकेट अंपायर को क्रॉस करते हुए अशोक ब्लास्टर्स के लिए तीसरे ओवर के रूप में बहुत अच्छी गेंदबाज। ओहो बढ़िया गेंद, बहुत खूबसूरत गेंद। उपेंद्रा यानी कि उपू बहुत अच्छे विकेट कीपिंग की मुजाहरा कर रही है, बहुत अच्छे खिलाड़ी भी हैं, जमाने से अंडरआर्म क्रिकेट में मौजूद है, अभी भी बहुत अच्छे तालमेल के साथ टीम के साथ जोड़ा गया है। अच्छी गेंद सीधा खेला है मिड विकेट पर शमीर बाबा, फील्डर के रूप में इन्होंने गेंद को तेजी के साथ उठाया, तब तक एकमात्र रन और इस 1 रन की मदद से संख्या बढ़ते हुए 11 ऑन द बोर्ड। फिर एक बार अशोक, 2 more बॉल टू लेफ्ट। यूसुफ, तारीफ करना होगा यूसुफ को, एक तरफ जो विकेट पड़ते जा रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ से यूसुफ ने कोई संकोच नहीं कर रही है, उनके खेल तो बहुत साफ खेलते हुए जा रही हैं, बेहतरीन खेल।
7 गेंदे सामना किया, 7 रन बनाकर खेल रही है यूसुफ मुसोडी ने। अशोक की आखिरी गेंद, तीसरे ओवर की आखिरी गेंद, ओवर द विकेट अंपायर को क्रॉस करते हुए तैयार है और इस गेंद को खेलना चाहा, पूरी तरह बीट हुए। बहुत अच्छी ओवर, बहुत खूबसूरत ओवर। स्कोर अभी भी 3 ओवर की समाप्ति पर 12 रन, 12 लॉस ऑफ 2 विकेट। 12 रन 2 विकेट के नुकसान पर बदेस अड्का ने काफी परितापी स्थिति को सामना करते हुए, बहुत अच्छी टीम है दोनों टीम के बीच में, बहुत बढ़िया टीम के बीच में मुकाबला हो रही है। इस टीम के बीच में मुकाबला होते हुए पहली जो टॉस हारकर पहली बल्लेबाजी करने के लिए योगदान मिले हैं साली अड्का के टीम बदेस अड्का को, लेकिन जो साली अड्का ने जो पूरी तरह प्लानिंग किए थे उस प्लानिंग जो अंत तक जो उम्मीद रख नहीं पाए और इस गेंद को खेलना चाहा, विकेट को छोड़ते हुए जोखिम उठाकर इन्होंने खेलना चाहा। बहुत अच्छी गेंद थे। यूसुफ ने पहली बार पराजित हुए तो अंपायर की तरफ मुड़कर देख रहे कह रहे कि वाइड के लिए अपील कुछ किए, इन्होंने आंखों से इशारा किए लेकिन अंपायर ने इनकार किया। फिर एक बार ओवर द विकेट अंपायर को क्रॉस करते हुए तैयार है। ओवर द विकेट यूसुफ मुसोडी के लिए अच्छी गेंद, ओ बहुत खूबसूरत फील्डिंग रवि शेट्टी से। यूसुफ तो अपने खाते पर एक रन जोड़ाती जा रही है, बहुत अच्छे जो बल्लेबाजी करते हुए। जो स्ट्राइक रेट 90% इन्होंने जो बल्लेबाजी कर रही है, ऑप्शन के बाहर खराब गेंद, अंपायर ने कह रहे कि वाइड। शशिधरा अपने खोटे की दूसरी ओवर है, शशिधरा ने गेंदबाजी कर रही है। स्ट्राइक पर अजीज पल्लव उठा करके ला है, अजीज पल्लव ने मिड विकेट पर कोई फील्डर मौजूद नहीं, एक टप्पे के बाद सीमारे के बाहर चौका। अवश्य समय पर इस चौके लगाए इन्होंने, बेहतरीन शॉट है। बिल्कुल 2 फील्डरों के बीचों बीच में बहुत बढ़िया गैप थे, इस गैप को देखते उन्होंने जानबूझकर उस इलाके पर शॉट लगाए। चौका लगाने के बाद स्कोर संख्या आगे बढ़ते हुए 18 ऑन द बोर्ड यानी कि 18 रन। फिर एक बार शशिधरा टू अजीज पल्लव, रेड ऑन द विकेट और इस गेंद को बहुत अच्छी फील्डिंग अरविंद शेट्टी। इनके खेल देखकर बहुत कुछ सीखने के लिए है, सीखना चाहिए। जो अंडरआर्म क्रिकेट में बहुत कुछ है, क्योंकि इतने उम्र में भी इन्होंने जो ऐसी प्रदर्शन कर रही है बल्लेबाजी में, जो फील्डिंग में, गेंदबाजी भी अच्छे कर लेते हैं इन्होंने। बहुत अच्छी गेंदबाजी किए थे जो मियां पदाओ मैदान पर, जो मोरतना प्रीमियर लीग पर बहुत अच्छे खास जो बल्लेबाजी किए थे, गेंदबाजी किए थे। इस गेंद को खेला लेकिन सही सलामत तो बल्ले पर नहीं आए मेरे ख्याल में। अंपायर ने कह रहे कि लग भाई, और इसे लग भाई के मदद से ओवर, एक गेंदे बचे हैं। आखिरी गेंद शशिधरा की, यूसुफ अभी भी मौजूद है। अजीज पल्लम और यूसुफ के बीच में इस साझेदारी उम्मीद रख सकते हैं ब्रदर्स के लिए। फिर एक बार ओवर द विकेट अंपायर को क्रॉस करते हुए तैयार है यूसुफ के लिए। अच्छी गेंद, आगे बढ़कर पहले 2-3 कदम आगे बढ़े और गेंद को बहुत अच्छी तरह इन्होंने खेले हैं। दूसरे रन के लिए दौड़ा जा रही है, यहां पर 2 रन भी पूरा किए। थ्रो अच्छी तरह आए थे लेकिन जो हाथ पर गेंद नहीं रुके हैं, तब तक ओवर थ्रो के रूप में 1 रन और मिले हैं। संख्या बढ़ते हुए 20 रन 4 ओवर की समाप्ति पर 22। 1 शॉट, क्षमा कीजिए 1 शॉट, अंपायर कह रहे हैं कि 1 शॉट, 1 रन कम भागे हैं, दौड़े हैं, इस वजह से 21 यहां पर जो दिखाई दे रही है जो स्कोर बोर्ड पर 21 लॉस ऑफ 2 विकेट। अजीज पल्लम और यूसुफ आखिरी ओवर में अगर धुआंधारी बल्लेबाजी करें तो यहां पर मैच में वापस आने के लिए मौका है। 5 ओवर के मैच में जो सामने वाली टीम भी बहुत अच्छी चकाचक बैटिंग लाइनअप है, जो प्रसाद और अरविंद, जो शमीर बाबा, अरविंद शेट्टी कप्तान खुद गेंदबाजी कर रही है, बहुत अच्छी लेग स्पिनर के रूप में जाना जाती है। ओ बढ़िया गेंद, बहुत अच्छी शुरुआत। इनके बारे में कह रहे थे कि जो मोरतना प्रीमियर लीग मियां पदाओ मैदान में खास इन्होंने योगदान दिए गए थे, और उससे पहले उसी मैदान में शेट्टियों के जो प्रीमियर लीग थे उसमें जो विनर्स बन गए थे, उस टीम जो अरविंद शेट्टी के और मोहन शेट्टी मजार के टीम वो विनर्स बन गए थे। मोहन शेट्टी मजार, इस प्रतियोगिता के लिए जो रनर्स के लिए कैच दिया जा रहा है, यहां पर कैच, बहुत अच्छी विकेट हासिल किया रवि शेट्टी ने, विकेट हासिल किया। अजीज पल्लम को आउट किया गया कैच आउट के रूप में,
उनकी कहानी कह रहे थे कि जो शेट्टी प्रीमियर लीग जो मियां पताओ मैदान पर खेला गया थे, उस मैदान में जो विनर्स के रूप में उनके टीम विनर्स बन गए थे जो मोहन शेट्टी मजार। और इस यूट्यूब लाइव टेलीकास्ट में उन्होंने जो मुंबई में बैठकर जो मैच को देख रहा होगा, उनको धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि इस प्रतियोगिता के लिए सकला ट्रॉफी के लिए जो रनर्स अप कैश अवार्ड जो 8,888 रुपया जो मोहन शेट्टी मजार ने दिया गया है इस प्रतियोगिता के लिए। फिर एक बार और यूसुफ के लिए यहां पर मौका मिले हैं, 2 छक्के लगाओ 500 रुपया इनाम हासिल करो। तो इनती पुसुर कह रहे हैं कि यूसुफ के लिए मौका है, 2 छक्के के लिए 1000 रुपया, 2000 रुपया दिनेश भी दिया जाएंगे, 3000 रुपया मिल जाएंगे। 2 छक्के लगाओ, 3000 रुपये कमाओ, घर पर लेकर जाओ, एंजॉय करो। ओहो, लेकिन यहां पर मौका नहीं मिलने वाले हैं मेरे ख्याल में। 2 छक्के लगाना चाहिए सबको। गेंद कितना बचे हैं? 2 बचे हैं। अब तो मौका मिलने के लिए तो अरविंद शेट्टी तो मौका देना होगा। हाँ, तो अरविंद शेट्टी मौका नहीं दिया, यहां पर विकेट सेट कर लिया गया है। रोलिंग डिलीवरी थी, लेग स्पिन बॉल थे। 3000 रुपया यहां पर बच गए दिनेश और इंती की, क्योंकि अगर मौका मिलते तो कोशिश कर सकते थे यूसुफ को। अंसारी पई बलिका, अरे संदीप चक्रवर्ती मंजेश्वर के खिलाड़ी, इन्होंने अभी भी आउट होकर पहली को पास गए हैं। अंसारी वो उठाकर खेलने के प्रयास में पूरी तरह बना के अंसारी भी आउट। अरविंद शेट्टी ने इस ओवर में 3 विकेट अपनी झोली में डाल दिए, बहुत अच्छे। अरविंद शेट्टी बेगा बल्ले, बैटिंग शुरुमाल प्ले, स्कोर 22-23 इज द विक्ट्री टारगेट। आखिरी 3 मैच, पहले मैच 27-28 इज द विक्ट्री टारगेट, और उसके बाद 27-28 इज द विक्ट्री टारगेट। इस मैच 21-22-23 इज द विक्ट्री टारगेट। आखिरी 3 मैच में बहुत बढ़िया स्पीड अप हुए हैं। और इस टूर्नामेंट के आखिरी मैच आज के दिन के, कल के दिन में ध्यान दीजिए, कल के दिन पहले मैच खेलने वाली टीम है केएफसी कुंबला मास्टर्स वर्काडी के बीच में कल के दिन पहली मैच होगा। ശ്രദ്ധിക്കുക, നാളെ രാവിലെ 8 മണിക്ക് സൈനപ്പ് തുടങ്ങും। 8:15 വരെയാണ് സൈനപ്പിനുള്ള സമയം. 8:15 മത്സരം തുടങ്ങും. KFC കുമ്പളയും മാസ്റ്റേഴ്സ് വർക്കാടിയും തമ്മിലുള്ള മത്സരമാണ്. ഈ മത്സരത്തിന് കൃത്യസമയത്ത് എത്തിച്ചേരണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. യാതൊരു കാരണവശാലും 8:15 കഴിഞ്ഞ് സൈനപ്പ് പുസ്തകം തുറന്നു വെക്കപ്പെടില്ല എന്നുകൂടി അറിയിക്കുകയാണ്. ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിലുപരി നാളെ കുറച്ചുകൂടി കർക്കശമാക്കാൻ കമ്മിറ്റി ഉദ്ദേശിക്കുകയാണ്. അടുത്ത ഇന്നിംഗ്സിലേക്ക് ഗിരീഷ്, വെൽക്കം ഗിരീഷ്. അടുത്ത ഇന്നിംഗ്സിൽ കമന്ററി പറയുന്നതിന് വേണ്ടി ഗിരീഷിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. This match is going for at 23 on the board. Victory target. Arvind Shetty and Baba is still in the middle. Riyan Sali is the man as a very defensive shot as a fielder is taken the ball. Once again he is taken and returned to the bowler. One more score moves on to 1 without loss. Ashok Das Kasargod. ഈ മത്സരം വിജയിക്കണമെങ്കിൽ 23 റൺസ് നേടണം. 30 പന്തിൽ നിന്ന് Sali left hand bowler right and left hand round the wicket. Baba is a man is still the hard hitter of a defensive shot not connect up the bat and ball. Wicket keeper is not missed it. Gathered the ball, written to the bowler. One more dot ball. The score moves on to still on 1 without loss. Arvind Shetty is up on the count. Baba is not up on the count. Once again Sali left hand round the wicket. Hard hitting shot well connect up the bat and long on fielder is did not take the
And the poor taken the ball and return to the bowler. One more score moves on the 2 on the board. 2 without loss. Ashok Blasters Castle good. Once again is Aravind Shetty is a hard hitter still in the middle second time. Once again differential shot loud appeal board. Yes, it is gone. Aravind Shetty as umpire, main umpire is declare out. Once again is Aravind Shetty is returned to the pavilion. Score is still on 2 on the board. 2 loss of the 1 wicket. Available wicket return to the pavilion. Aravind Shetty ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಒಂದು ಹುದ್ದರಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಲಿ ಅವರು ಇದರೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ ಅಶೋಕ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ಸ್ 2 ಹುದ್ದರಿಗಳನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ. ಮತ್ತೊಬ್ಬ ದಾಂಡಿಗ ಅಶೋಕ್ ಜೆರ್ಸಿ ನಂಬರ್ 21 jersey number Ashok has come to the crease. Sali is taken the wicket. Score is still on 2 on the board. Loss of the valuable wicket. Aravind Shetty. Once again, Sali right arm, left arm round the wicket. Ashok is the first time striking and senior partner Baba is not hitting shot. Well connected to the bat and ball. Fielder is taken the ball and returned to the bowler. One more score. Score was on the 3 on the board. 3 ಓಟುಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವಸಾನದ ಓಡಿಕೊಂಡು ಮಾತ್ರಮೇ ಬಾಕಿಯುಳ್ಳ ಆದ್ಯ ಓವರ್ಲೆ ಈ ಓವರ್ 3 ರನ್ಸ್ ಮಾತ್ರಮೇ ನೀಡಿದ್ದು. ഒരു വിക്കറ്റ് നേടിയിട്ടുണ്ട് സാലി. Once again is the ball by the hard hitting shot not contact the bat and ball just inside the bat. Very good running between the wicket. One more score. Score moves on to 4 on the board. End of the first over. Sali's over figures 1 over 9 and 4 runs. 1 wicket, very valuable wicket taken. Sali is Aravind Shetty is clean bowled. Sali individual score on 2. Return to the pavilion. A new man bowler come to the bowling mark. Yusuf is a new man come to the crease. രണ്ടാമത്തെ ഓവർ എറിയാൻ തയ്യാറായി നിൽക്കുകയാണ് യൂസഫ്. പന്ത് നേരിടുന്നത് ഹൗഡ് ഹിറ്റർ ബാബയാണ്. ബാബയെ യൂസഫിനെ എങ്ങനെ നേരിടുന്നു നമുക്ക് കാത്തിരുന്ന് കാണാം. യൂസഫാണ് പന്തെറിയാൻ തയ്യാറായി നിൽക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ ಓವರ್ ಆದ್ಯ ಪಂದ್. 2ನೇ ಓವರ್ನ ಮೊದಲ ಎಸೆತವನ್ನು ಎಸೆಯಲು ತಯಾರಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಯೂಸಫ್ ಅವರು ಬಾಬಾ ಅವರಿಗೆ. ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಒಂದು ಎಸೆತ. ಅದರ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಅವರು ಯಾವುದೇ 1 ಓಟವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 5 ಹುದ್ದರಿಗಳನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 5 റൺസ് നേടിയിരിക്കുകയാണ് ഒരു വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ. യൂസഫാണ് പന്തെറിയാൻ തയ്യാറായി നിൽക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ ഓവറിന്റെ രണ്ടാമത്തെ പന്താണ് എറിയാൻ തയ്യാറായി നിൽക്കുന്ന അശോക്. ജസ്റ്റ് ബോൾ ഔട്ട്സൈഡ് ദ ലെഗ് സ്റ്റംപ്. ബട്ട് നോട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്. Once again is a dot ball. Shali is taken the ball and returned to the bowler. One more dot ball. The struggle of Ashok Blasters. End of the 1 over 2 second over 2 delivery. Once again he is the man. He is the bowler. He is a hard hitting shot. Fielder is not mistake. Taken the catch. Ashok is returned to the pavilion. Lose the second wicket. Ashok Blasters Kasaragod lose the second wicket. The score is still on 5 on the board. Loss of the 2 wicket. Very fighting match. Ashok Blasters and another team. Brothers Natka, very fighting. Batsman Prasad is a new man come to the crease. Jersey number 12. Baba is at middle as a senior partner. Baba is still on the middle. Yusuf is the man bowling mark. Yusuf പന്തെറിയാൻ തയ്യാറായി നിൽക്കുകയാണ്. ഈ ഓവറിൽ ഒരു വിക്കറ്റ് നേടിയിരിക്കുകയാണ് യൂസഫ്. നാലാമത്തെ പന്തെറിയാൻ തയ്യാറായി നിൽക്കുകയാണ് ബാബയ്ക്ക്. Yusuf once again is a hard hitting shot. Fielder is taken the catch. Yes, it's gone. Baba is returned to the pavilion. 1 more wicket loss. Loss of the wicket number
third wicket loss. മൂന്നാമത്തെ വിക്കറ്റ് കൂടി നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് അശോക് ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ ബാബയുടെ രൂപത്തിൽ. ഇതോടുകൂടി സ്ട്രഗിൾ ആയിരിക്കുകയാണ് അശോക് ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ്. Batsman name please. Sabir is a man. Sabir is a man as a tall man, double 7 jersey number. And now striking and Prasad is a classical player, is still on the middle. At the chance of the hat-trick, Yusuf once again. Yusuf is a man, is a bowling mark on the Rio Tayara. മൂന്നാമത്തെ വിക്കറ്റ് നേടാനുള്ള ശ്രമം. Classical player Prasad is taken a single, one more score moves on to 6 on the board. And the winning target is 23. And the Indian scoreboard is 6 on the board. Once again is Yusuf. An excellent bowling by Yusuf. Once again is Shiv. A differential shot has a chance of the catch. Chance of the single, good run between the wicket, the two batsmen. Very, very good run between the wicket. A score moves on to 7 on the board. 7 loss of the 3 valuable wicket return to the pavilion. Ashok Blasters side. The 3 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 7 റൺസ് നേടിയിരിക്കുകയാണ് 2 ഓവർ അവസാനിക്കുമ്പോൾ. 3 ഹിറ്ററുകൾ നഷ്ടത്തിൽ 7 വിക്കറ്റുಗಳನ್ನು കളിಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಶೋಕ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ಸ್. 2 ಓವರಿನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಅಶೋಕ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಅವರಿಗೆ ವಿಜಯ ಗಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. 2 ಆಟಗಾರರು ಈಗ ಅಂಕಣದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸಾದ್ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ഷബീറും 2 പേരാണ് ക്രീസിലുള്ളത്. ഷബീറും അതുപോലെ തന്നെ പ്രസാദ്. പന്തെറിയാൻ തയ്യാറായി നിൽക്കുകയാണ്. കണ്ടിന്റെ സെക്കൻഡ് ഓവർ ഇന്നിംഗ്സ് ഓഫ് ദ തേർഡ് ഓവർ. സാലി ഈസ് ദ മാൻ ബോളിംഗ് മാർക്ക്. സാലി ഈസ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ബോളർ. റൈറ്റ് ഹാൻഡ് റൗണ്ട് ദ വിക്കറ്റ് ഓൺസ് അഗൈൻ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ദ ബോളിംഗ് മാർക്ക്. തേർഡ് ഓവർ ഫസ്റ്റ് ഡെലിവറി. ആദ്യത്തെ പന്തെറിയാൻ സബീർ. ഡിഫറൻഷ്യൽ ഷോട്ട്, വെൽ ഷോട്ട്. And one more score moves on to 8 on the board. പതിനേഴിൽ 15 റൺസ് നേടുന്ന ഈ മത്സരം വിജയിക്കണമെങ്കിൽ once again is Sali is the man, Prasad is the man. A sweep shot, very technical player of Prasad who has taken the single. One more score moves on to 9 on the board. 16 പന്തിൽ നിന്ന് 14 റൺസ് നേടുന്ന ഈ മത്സരം വിജയിക്കണമെങ്കിൽ 16 ಎಸೆತಗಳನ್ನು 14 ವೋಟುಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೊಂದು ವೋಟುಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 10, 3 ಹುದ್ದರಿಗಳನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 10 റൺസ് നേടിയിരിക്കുകയാണ് 3 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ. Sali is the man, is the bowling mark once again. Sali, the bowling mark to Prasad is a classical player. Full toss delivery, umpire declare no ball. One more extra, score moves on to 11 on the board. Umpire free. No ball declaring. Yes. Once again is Prasad is a classical player, is still in the middle. Sali is a left-hand bowler, the technical bowler. Sali and a classical player. Hard hitting shot, not contact of the bat and ball. Once again, not contact of the bat and ball. Wicketkeeper gathered and returned to the bowler. One more dot ball. Score moves on to 11 on the board. Sali is the man. Once again, as a Prasad is sweep shot. What a beautiful play by the score is good delivery. Good shot of this Prasad. 4 more runs. Score moves on to 15 on the board. Jumping up to 15. Prasad is a classical played by the very well Scarlet side of cover point. Once again, as they take the 4 runs, a score moves on to 15 on the board. Sali once again. So full toss delivery, not contact of the bat and ball, just ball outside. And declare no ball, one more extra. Score moves on to 16 on the board. Poor over. This over is Sali is over. Once again, hard hitting shot, well connected the bat and ball.
Single taken the batsman. One more. Score goes on to 17 on the board. 17. 17 runs നേടിയിരിക്കുകയാണ്. Last one delivery left in this over. Once again, defensive shot as Sabir is taken the single. One more score. The score moves on to 18 on the board. 18 runs നേടിയിരിക്കുകയാണ്. 3 ഓവർ അവസാനിക്കുമ്പോൾ ഈ മത്സരം വിജയിക്കണമെങ്കിൽ 12 പന്തിൽ നിന്ന് 5 runs എടുക്കണം. ये मैच जीतने के लिए 12 गेंद पर 5 रन चाहिए अशोक ब्लास्टर्स का. ಈ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನ ವಿಜಯಗಳಿಸಲು ಅಶೋಕ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ಸ್ಗೆ 5 ಓಟಗಳನ್ನ ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. 12 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ ಮತ್ತೊಂದು ಉದ್ದನೆಯ ಎಸೆತ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 19. Once again, it is a very well delivery, slow delivery, dot ball. Basit is man not contacted that and ball. Wicket keeper gathered and returned to the bowler. Once again, is horrific shot. And a beautiful played by the Basit. 4 more runs. At the last time is a very well played. The score moves on to 23. Match is end of the match. Ashok Basit won the match. What a played by the 2 batsmen, Prasad and Basit. At the 3 valuable wicket. Quick return to the pavilion. The last time is a 2-man is a very well played. Thank you. ഈ മത്സരത്തിന്റെ മാൻ ഓഫ് ദ മാച്ചായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഈ മത്സരത്തിന്റെ മാൻ ഓഫ് ദ മാച്ചായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അരവിന്ദ് ഷെട്ടി. അശോക് ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ക്യാപ്റ്റൻ അരവിന്ദ് ഷെട്ടിയാണ് ഈ മത്സരത്തിന്റെ മാൻ ഓഫ് ദ മാച്ചായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ സമ്മാനം നൽകുന്നതിന് വേണ്ടി സത്താർ അദ്ദേഹത്തെ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുകയാണ്. ഈ മാൻ ഓഫ് ദ മാച്ച് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അരവിന്ദ് ഷെട്ടി, അശോക് ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ.